Now, short duration discussion. Sri Alamaran Karim to start. Thank you, sir. We are discussing a very important issue, which is confronting with the vast majority of the people of this country. There has been a constant price rise of essential commodities, ranging from vegetables to gas and other items in 8 years, 8-year rule of Modi government. In the past 5 years, prices of rice and wheat, the two most important cereals for Indians, have increased by 24%, wheat flour by 28%, and pulses by 20 to 30%, according to data put out by Department of Consumer Affairs. Pulses are an important source of protein in India, and their exorbitant prices have put them out of reach for most poor families. This has had a dire effect on nutrition levels. Cooking oil prices have zoomed up uncomfortably. Groundnut oil by 41%. Mustard oil by 71%. Vanaspati by 112%. Sunflower oil by 107%. And palm oil by 128%. Every Indian family uses cooking oil, and these hikes have led to a severe dent in family spending because it is impossible to skip using cooking oils. Price rise is not restricted to food grain and cooking oils alone. Prices of potatoes have increased by 65%, onions by 69%, and tomatoes by 155%. In the past 5 years. These are seasonal ups and downs in these other vegetables which only go to show a policy paralysis about vegetable supply. Various other essential items are also showing severe inflationary pressure. While milk prices have gone up by 25%, loose tea leaves have risen by 41%, and even iodized salt has increased by 28% in this period. According to the Agricultural Ministry data, Indian farmers have produced record food grain harvest for the past several years. Cereal production was 234.87 million ton in 2014 when NDA government took over, and since then it has increased to 285.28 million tons last year, an increase of nearly 22%. Pulses production was 17.15, which increased to 25.46 million ton last year, an increase of nearly 49%. It is tragic and a testimony to this government's policies that despite this abundance, farmers are fighting to get better prices and consumers are weighed down by high prices. What would the government have done to ease food grain prices? Instead of sitting on huge stockpiles of food grains, if the government had expanded the public distribution system to include more families that are currently excluded and to include their essential items of consumption like cooking oils, pulses, salt, milk, etc., then not only would needy families get these items cheap, but even open market prices would have reduced. You will have to finish on time because we have many speakers today. Yes. I am only started, sir. But this government is so committed to free market. Concept that refused to expand the PDS even when sufficient stock existed in the government warehouses. When the PDS is expanded, our Kerala experience is, when the government, the first Pranay government came to power in 2016, that government announced 16 items supplying through PDS should not be hiked the price. Even now, after 7 years, that pulses and other essential items are selling in the same prices. That's the only
instance in the country in Kerala. Only in Kerala. Not only that, in 2020 during the pandemic, this government tried to facilitate private traders by bringing in laws to dismantle the procurement system and allow free trade, stocking and pricing. A year-long struggle by brave farmers forced the government to retreat. This year, government again hurriedly started pushing wheat exports, luring farmers and traders with the idea of making profit from the high global price of wheat. That led to 55% drop in procurement. Finally, the government realized that it had made a mistake in pushing exports and announced a ban. However, the damage to procurement has done. It is likely that wheat prices will continue to remain high in the open market. Consumers may be deprived of wheat in their monthly ration quotas, forcing them to go and buy the high-priced wheat in the markets. Sir, another important thing I would like to mention is unprecedented rise in the price of petroleum products and cooking gas, etc. have already resulted in the price rise of all items in the market, and current decision to tax essential commodities will aggravate the people's misery. Independent India abandoned the policy of colonial British government's tax on food items. In these last 75 years, food items like rice, wheat, pulses, etc. and other daily essentials like curd, paneer, meat, fish, jaggery were never taxed. All these were exempted items have come inside the purview of GST now. Very bad. The range of items on which GST have been increased also includes crematorium charges, hospital rooms, writing ink, even to the withdraw on saving from their bank account, people to pay 18% GST on bank checks. Shame, shame. These decisions have been rolled out when there is a runaway price rise with the consumer price index ranging above 7% and the wholesale price index by 15%, soaring unemployment, a tumbling rupee, unprecedented trade deficit and stumbling GDP growth. These hikes will further ruin people's livelihood. To raise Please conclude revenue, now. the government must tax the super rich and not impose burden on the people. The government is giving them further tax concessions and loan waiver to the corporates. Many of the luxury goods that should have been taxed heavily are having a modest GST. Gold purchase are taxed only 3%, diamonds at 1.5%, but the rice and essential commodities at 5% GST. What is the justification, sir? Shame, shame. Sir, Thank you, Mr. Karim. Finance Minister, I am quoting the Finance Minister's tweet. It has been prescribed that GST on these goods shall apply when supplied in pre-packaged and labeled commodities, attracting the provision of Legal Metrology Act. Quotation close. The Legal Metrology Act defines pre-packaged commodity as a commodity which without the purchaser being present in place in a package so that the product contained therein is a predetermined quantity. This is the format that now these commodities are being sold in the market. They all would attract 5% tax. Also, through this move, government has removed the distinction between branded and unbranded. From July 18, 2022, all items would attract GST when pre-packed and labeled. There is no reference of branding in the new system. A high-value brand. Thank you, Mr. Karim. pre-packaged Thank you. I am labeled calling the next commodity speaker. One more. Thank you. would equally attract a tax. I am concluding, sir. When GST was originally drawn up, the GST Council decided to exempt food grains and number of necessities from tax. They would tax it only if they are being sold under registered brands. Thus, retail traders or small companies who were selling grains and other flour either loose, packaged or labeled were exempted from the tax. Their customers were mostly ordinary people who could not afford higher prices or branded products. Thus, the existing GST tax system exempted ordinary consumers and smaller companies from tax burden, while the
big brands were in tax. Thank you, Mr. Karim. We Once- cannot go on one reading and reading. Only one point I- more. no, you have already spoken your last point. Last point, Finance Minister tweeted that in the GST Council, the subcommittee unanimously recommended the 5% tax. It is not true, sir. Kerala Finance Ministers were one of the members. Rajasthan, Maharashtra, Karnataka government were also there. There was no unanimous decision to impose 5% GST on food grains and other essential items. Thank you. So Thank it is you. an arbitrary statement. She has to withdraw that statement. Our Chief Minister and Finance Minister have written specific letters to Finance Thank you. Minister. Thank you. So they have to react on that point. Sir, Thank you for that. Your last point is over. while the prices of petroleum products and essential commodities like rice, wheat and all other No, Mr. items, Karim, we cannot go People are on and coming on to and the on. There street. are other members. people are coming to the street and protesting. Sir, You said last only point, how through- many points only you are through bringing? Dividing the people on communal basis, religion basis. Thank you. Thank you. cannot I'm calling the next continue speaker. as it is. Please be People of seated. India Thank you. unitedly fight out these anti-people policies. Thank you, sir. The next speaker is Prakash Jabarekar. सच ही बोल रहा हूं। पहले तो उपसभापति महोदय जी, महंगाई एक ऐसी चीज है कि किसी को भी दुख ही होगा। महंगाई बढ़ी तो बहुत आनंद हुआ, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता। लेकिन दुनिया में ऐसा कौन सा देश है कि जहां महंगाई बढ़ती ही नहीं? बढ़ती है, लिमिट में बढ़ती है क्या? और मूल मुद्दा क्या होता है कि आपकी इनकम जितना बढ़ता है उसके ज्यादा महंगाई बढ़ रही है या प्रपोर्शन में है? क्योंकि एक मैं बताना चाहता हूं, विपक्षी भी इसको समझे। हम किसानों के मेले में जाकर क्या कहते हैं? किसानों के मेले में हम जाकर कहते हैं कि लाभकारी मूल्य किसान को मिलना चाहिए, उसके दाम बढ़ने चाहिए। करेक्ट है, जो प्रोड्यूस करता है उसको अधिकार का मिलना चाहिए। फिर हम दूसरी तरफ कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो नहीं, वो सस्ता चाहिए, मार्केट में सस्ती चाहिए। और अनाज में आपको पता है कि नहीं, मैं बता रहा हूं ना, सरकार 20 रुपए यानी सभी खर्चा मिलके 30 रुपए में 1 किलो चावल लेती है, तैयार होता है, और 30 रुपए का चावल राज्यों को 3 रुपए में देती है। और 2 साल फ्री में दिया था 80 करोड़ लोगों को पूरा राशन। दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं था। अब इसको खर्चा आएगी कि नहीं? 2,71,000 करोड़ रुपए खर्चा आया, वो कहां से लाएंगे? तो इनकी एक मांग होती है कि रोल बैक टैक्सेस, यानी एक तरफ उत्पादों को कीमत दो, दूसरा टैक्स मत लगाओ और लोगों को सस्ता दो। हम कुछ तो हमारे से ऑनेस्ट होना चाहिए खुद से कि हम जो बोल रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहिए, कंपैरिजन में बोलना चाहिए। अभी जैसे एक चर्चा चली और इसलिए मैंने, और एक उदाहरण है, विपक्ष दिल समझे क्या करना है। आप रूम के अंदर एक बोलते हो और रूम के बाहर आकर दूसरा ही बयान देते हैं। जहां तक मेरी ऑथेंटिक जानकारी है कि जीएसटी का सारे रेट्स पहले ही, जब जीएसटी काउंसिल पहले शुरू हुई तो रेट्स, रूल्स और एक्ट का टेक्स्ट was verified and approved unanimously. This is the best example of cooperative federalism. लेकिन जीएसटी मान्य करके बाहर आए और प्रेस के डंडे दिखे तो तुरंत ये गब्बर सिंह टैक्स हो जाता है। ये कैसे होता है?
मैं पाखंड इस शब्द को उपयोग करने वाला था, लेकिन पाखंड अभी अनपार्लियामेंट्री हो गया है, नहीं बोल रहा है ये नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। Right. If it is unparliamentary, it will not go on record. It will be automatically expired. मूल मुद्दा है, Don't worry about this. Don't worry about that. I'm telling you, if it is unparliamentary, it will not go on record. It will be automatically expired. चलिए बैठिए। Don't shout. Don't shout. अरे अभी तो थोड़ा शुरू हुआ है। मूल मुद्दा, इसलिए मैंने नया शब्द तैयार किया कि अंदर एक बाहर एक। दूसरा उदाहरण, अभी जो विश्वम जी हमारे साथी है, उनकी जानकारी होगी, वो फाइनेंस मिनिस्टर जब बोलेगी तो क्लियर करेगी। ये जो पैक्ड फूड पे 5% जीएसटी लगा है, ये भी जीएसटी काउंसिल में हुआ है, और अपने देश की जीएसटी काउंसिल को मैं बधाई देता हूं कि पूरा यूनिफॉर्मली, यूनानिमसली निर्णय हुए हैं। एक हाथ निर्णय, मैं बताता हूं, अरे एक मिनट, रिकॉर्ड है, आप देख लो कितनी बार वोटिंग हुआ, क्योंकि बहुमत से वोटिंग होने का भी और निर्णय होने की भी प्रोविजन है, ये समझ लें। अब दूसरा, तीसरा अंदर एक बाहर एक। पेट्रोल डीजल पे केंद्र सरकार ने 8 रुपए और 6 रुपए कम किए, दो बार। एक मिनट, अरे भाई, राज्यों ने वैट कितने कम किए? केवल भारतीय जनता पार्टी के रूल स्टेट्स ने कम किए, बाकी ने नहीं किए। और सुनो, महाराष्ट्र, अरे आपके आय, सभी राज्यों की आय भी बढ़ी ना। दूसरा मुद्दा, नहीं दे आता हूं, ऐसा है, ये ऐसा है, मैं महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र में जो सरकार अभी तक थी, उन्होंने पेट्रोल डीजल पर तो वैट कम नहीं किया, लेकिन शराब पर एक्साइज कम किया, ये नीति है। और इसलिए अंदर एक बाहर एक, ये लोग समझते हैं, और लोग ये विपक्ष का जो दोहरा चरित्र समझते हैं, इसीलिए मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से हर बार ज्यादा जिताते हैं, और हर बार चुनाव में ज्यादा सीटें मिल रही है। और आप ऐसे ही निगेटिव बने रहो, आप ऐसे ही निगेटिव बना रहो। और आप, विश्वम जी ने, हमारे मित्र है विनय विश्वम, एलावरम करीम, तो हाँ, विनय विश्वम नहीं, एलावरम करीम। तो एलावरम करीम ने कहा कि 25% हुआ। उनको मैं बताना चाहता हूं कि महंगाई कितनी बढ़ी। अरे आप जिस सरकार को, यूपीए को पहले टर्म में सपोर्ट करते थे, उस समय, जैसे आज एक जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि 22 महीने डबल डिजिट में लगातार 9 साल ये फूड इन्फ्लेशन मोर देन 10%, 9 साल, 10 साल में से 9 साल, और उस समय इतने दाम बढ़े, तब तो कभी आप बोले नहीं। और उसका दूसरा एक मुद्दा है कि जब प्रधानमंत्री जी को महंगाई पर पूछा उस समय, तो उन्होंने फेमसली कहा था कि पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। आपने जो 1,33,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स तैयार करके जो उस समय ऑयल के दामों में एक कमी लाने का किया, स्थिर रखने का एक प्रयास किया, उसका भुगतान एनडीए सरकार को करना पड़ा, वो भी किया हमने, ये भी एक समझ ले। मूल, अच्छा, कुछ तो
परिस्थिति होती है। अब कोविड आएगा, दुनिया को ऐसा छाएगा, ये किसने कल्पना की थी? तो कोविड में और यूक्रेन का वॉर, अब 5 लोगों को लगा था 5-6 दिन में चलेगा, लेकिन 5 महीने हो गए तो भी चल रहा है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, वहां अनाज का भी भंडार है और वहां गैस का भी भंडार है। सारे ऑयल और गैस सेक्टर के प्राइसेस दुनिया में बढ़े, हमने नहीं बढ़ाए। इट इज द फैक्टर्स बियॉन्ड एनी कंट्रीज कंट्रोल, और इसलिए ये रेट बाहर दुनिया में बढ़े हैं, सबको बढ़े हैं। केवल भारत में बढ़े होते और बाकी जगह नहीं बढ़े होते तो लोग कह सकते थे कि भाई ये आपने गलत किया। एक मिनट, अभी बहुत लोगों ने, मुझे समय भी कम लेना है और मुद्दों की बात करना है, बहुत लोगों ने रुपये के डेप्रिसिएशन पर चिंता जताई, लेकिन मैं फैक्ट्स थोड़ा बताना चाहता हूं कि डॉलर, जैसे आज वित्त मंत्री ने उत्तर में भी एक कहा कि रुपये का एप्रिसिएशन विथ इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज भी हुआ है, ये भी हमें समझना भूलना नहीं चाहिए। और एक मिनट, वही बता रहा हूं, डोंट कमेंट, एक मिनट, यू विल हैव अपॉर्चुनिटी। उसका उत्तर भी एक किसान ने दिया है, वो मैं आपको दूंगा लास्ट में। They will bring those points. लेकिन डेप्रिसिएशन भारत के रुपये का विसावी डॉलर 7.5% हुआ, जापान का 20% हुआ, यूरो का 13% हुआ। ये भी हमें समझना चाहिए, ये इट इज नॉट जस्ट एन इंडिया प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड वी आर फेयरिंग मच बेटर देन अदर कंट्रीज। दिस इज अ पॉइंट विच आई वांट टू मेक। यूपीए के जमाने में 9 साल, मैंने कहा डबल डिजिट इन्फ्लेशन रहा। अभी हमारे 8 साल में, 5 साल में 5% के नीचे रहा, 2 साल 6% के आसपास रहा, और इसी साल 7% हुआ है। ये भी हमें समझना चाहिए, और ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम फूड सिक्योरिटी। मैं 2017 के चुनाव में मणिपुर गया था, इंचार्ज था, तो मैं सभी लोगों को पूछता था, आम आदमियों को भी, कि किसको वोट देंगे, तो बोले मोदी को देंगे। मैंने कहा क्यों? तो बोले उन्होंने हमें चावल 3 रुपए में दिया है। तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि 3 रुपए में चावल, तो पहले फूड सिक्योरिटी में, एक मिनट, नहीं मैं वही बता रहा हूं, फिर ऐसा है 3 रुपए में देने का फूड सिक्योरिटी में यूपीए ने निर्णय लिया था, लेकिन पूरे देश में वो नहीं दिया था। यूपीए के जमाने में 40 करोड़ लोगों को केवल फूड सिक्योरिटी मिलती थी, हमने वो 80 करोड़ को की है। ये एक बदलाव है, ये हमें समझना चाहिए। पॉवर्टी कम हुई, पर कैपिटा डबल हो गया, पर कैपिटा इनकम है डबल, वो आंकड़े हैं, दुनिया के आंकड़े हैं, आप देख लीजिए। डॉक्टर्स जो थे 12 लाख डॉक्टर बढ़े, मेडिकल के सीटें केवल 50,000 थी, वो 80,000 से ज्यादा हुई। सोलर एनर्जी, yes, because all this, the development requires money, and money doesn't come by printing notes. It is, you have to generate resources, that is मूल मुद्दा है। और फूड ग्रेन जो 255 मिलियन टन था 2014 में, आज 316 मिलियन टन है, ये भी हमें समझना चाहिए। उपाय क्या किया सरकार ने? आरबीआई ने रेट्स बढ़ाए, मार्केट में डिमांड को और जो वोलेटिलिटी है एक तरफ, वो भी कम करने का कोशिश किया, और प्राइसेस, इन्फ्लेशन ज्यादा न बढ़े इसके लिए प्रयास किया। 9 करोड़ उज्ज्वला गैस वाले महिलाओं को 200 रुपए की सब्सिडी हर सिलेंडर पर दी है।
व्हीट एक्सपोर्ट रोका। बेटर पीडीएस के कारण लोगों के हाथ में अनाज जा रहा है जो पहले चोरी होता था। एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1 लाख करोड़ की एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी दिया है कि किसान को उसी दाम में खाद मिले। ये छोटी चीजें नहीं है, ये पैसा लगता है तो महत्वपूर्ण है ही। ड्यूटीज, स्टील के दाम बहुत बढ़े थे, घरों के कंस्ट्रक्शन के दाम बढ़े थे। स्टील के दाम कम करने के लिए भी एक्सपोर्ट का ड्यूटी भी बढ़ाया, इंपोर्ट का ड्यूटी कम किया, सब किया, और ये करके ये प्राइसेस में भी स्टेबिलिटी लाई। आखिर हमारी आज इकोनॉमी की सत्यता क्या है? आईएमएफ का जो रेगुलर रिपोर्ट आ रहा है उसने भी कहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी में इंडिया सबसे आगे है। इंडिया सबसे आगे है, 6.8%, ये उनका लेटेस्ट। जैसे रेसेशन दुनिया में, अमेरिका में आज चर्चा हो रही है। अमेरिका के कोई भी समाचार पत्र खोलो, वहां रेसेशन की चर्चा है, स्टैगफ्लेशन की चर्चा है यूरोप में। लेकिन अपनी यहां नहीं है क्योंकि हम उस रास्ते पर नहीं गए हैं, बचाया है इकोनॉमी को। फॉरेक्स, जैसे आज वित्त मंत्री ने उत्तर में कहा, आधा तो जवाब उनका उसी उत्तर में हो गया है कि फॉरेक्स भी हमारा $500 बिलियन के आसपास है ही। फिर आईटी रिटर्न 6 करोड़ हुए, 14 में 2.5 करोड़ थे। आज, अरे हाँ, बट 2.5 करोड़ थे 130 में, तो अभी 6 करोड़ हो गए, ये फर्क पड़ा है। स्पेक्ट्रम में जो आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में पुराने रेट पर दिए थे, वो कैंसिल होने के बाद नीलामी होकर 1,80,000 करोड़ आए, और अभी जो 5G स्पेक्ट्रम हो रहा है वहां भी 1,45,000 करोड़ आ रहे हैं। तो ये भारत की सरकार की सोच का फल है और जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। रोबस्ट एक्सपोर्ट हमारे बढ़े हैं, और इसलिए मैं 2 ही चीजें अंत में कहूंगा कि हमें समझना चाहिए कि महंगाई और उत्पादक को मिलने वाला प्राइसेस ऑफ एसेट्स, ह्यूमन एसेट्स आर लो इन इंडिया। मैं ऐसा मानता हूं, काम करने वाले को अधिक पैसा मिलना चाहिए, और मोदी सरकार ने एक बढ़त लेकर 10,000 रुपए से कम वेतन नहीं किसी का होगा, ये तय किया, लेकिन ये और भी बढ़ाने की जरूरत होती है। तो ये बढ़ाना है तो आपको रिसोर्सेज जनरेट करने हैं। रिसोर्सेज का सरकार के पास एक ही रास्ता होता है, टैक्सेशन। वो रीजनेबल हो, वो अन्यायकारी न हो, गरीब को कम, अमीर को ज्यादा, ये भी हमें सोचना चाहिए। और पॉवर्टी का भी मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक जगह मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भारत में विषमता बहुत बढ़ गई है। तो सिंपल चीज है, 47 के और आज के आंकड़े हमने देखे, 47 में अगर ऐसी विषमता थी, ये लोअर एंड और ये हायर एंड, अभी ये भी इधर आए हैं और ये इतना हुआ है, ये फर्क हुआ है। यानी गरीब का स्तर ऊपर आया है। गरीब का स्तर ऊपर आया है। गरीब के जीवन में फर्क आया है, और यही उद्देश्य है। और इसलिए नहीं, बैठिए ना, मेरा समाप्त हो रहा है, बैठिए। आई एम नॉट यील्डिंग, बैठिए। तो इसलिए महंगाई के संकट का सामना करने के लिए मोदी सरकार ने लगातार काम किया है और वो करती रहेगी।
जो भी महंगाई ये दुनिया में है क्योंकि हमारे हाथ में जो नहीं था वो दो संकट हमारे सामने आए हैं, लेकिन हम एक विकास के गति में जा रहे हैं, सामाजिक न्याय दे रहे हैं और आर्थिक व्यवस्थापन भी अच्छा करेंगे और कर रहे हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Mr. Javadekar. You completed your speech before time. I request all the members to take his example and complete their speech before time. Now, Dr. Singh Gohil. महोदय, That is his party time. मैं प्रतिशोध की राजनीति का भोग बने हम, पर हमारी दिक्कतें महत्व की नहीं है, महत्व है इस देश की जनता की दिक्कतों का। इसलिए मेरे नेता और लाइक माइंडेड पार्टीज ने तय किया कि हमारे पर चाहे कितनी भी दिक्कत आए, देश की जनता की दिक्कत की चर्चा हम हाउस में करेंगे और इसलिए हम यहां आए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सच को परेशान करने या जेल में डालने से ना रावण का शासन सलामत रहा था, ना कंस का रहा था, ना अंग्रेज का रहा था। आपका कहां से रहेगा? मैं महोदय, मैं महंगाई पे एक चंद लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं महंगाई पे चंद लाइनों के साथ मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। महंगाई पे, हाय रे भाजपाई महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई। हाय रे भाजपाई महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई, देशवासियों के जीवन को बना दिया दुखदाई। मैं महोदय, मैं किसी हवाबाजी में विश्वास नहीं करता हूं, ना फेंकूबाजी में विश्वास करता हूं। मैं आपको सोर्स बताऊंगा। माननीय महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इनका एक डिपार्टमेंट है प्राइस मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है। उसके आंकड़े आपको देना चाहता हूं। अभी पूर्व मंत्री रहे एक सदस्य जी बिना सोर्स बताए बात करते थे, मैं सोर्स दिखाता हूं। महंगाई का दर 2021 अप्रैल में 4.23% था। वही महंगाई सिर्फ एक साल में अप्रैल 22 ऑलमोस्ट डबल हो गया, 7.79%। ये हालत है इस देश की। इसी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मॉनिटरिंग डिवीजन ने अपने आंकड़ों में कहा है कि राइस हमारे वक्त में 1 मई 2014 26 रुपया 17 पैसे प्राइस थी, वो 14 1 मई को और 22 1 मई को 35 रुपया 85 पैसा, 37% बढ़ा दिया आपने। गेहूं 20 रुपया 5 पैसा था, आपने 28.01% कर दिया, माने 37% बढ़ा दिया। आप ये सारी चीजों पे आपने बड़ा लंबा लिस्ट है। मैं इसी आधार पे जाके आप देखेंगे तो पता चलेगा। मोदी जी कुछ वर्ड कॉइन करने में बहुत होशियार है। उन्होंने कॉइन किया टॉप, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, टॉप। और ये आम आदमी के लिए, आम नागरिक के लिए टॉप जरूरी होता है, उसकी प्राइसेस टॉप पे चढ़ा दिया आपने, ये हकीकत है। कहते थे 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब लोग कहते हैं बस कर मोदी सरकार। मैं आपको यह कहता हूं, आपके जरिए महोदय, वित्त मंत्री जी, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत शालीन है। और मैं जिस यूनिवर्सिटी की बहुत इज्जत करता हूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले, उस जेएनयू की वो पास आउट है, वहीं से उन्होंने शिक्षा ली है। जिनको कुछ लोग शासक पक्ष के जुड़े हुए कहते हैं देशद्रोहियों का अड्डा, गुंडों का अड्डा, मैं उस जेएनयू का बहुत समर्थित हूं। मैं वित्त मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि आप तो संवेदनशील है, आप जरा गुजरात के उस अखबार को 4 दिन पहले के उठा के देख लेना। एक एजुकेटेड बंदा सुसाइड करता है और एक सुसाइड नोट में लिखता है, मैं मर रहा हूं,
मैं पढ़ा लिखा, मुझे रोजगार नहीं मिला, मजदूरी करता हूं पर महंगाई इतनी है कि मैं मेरे घर परिवार का पोषण नहीं कर सकता हूं, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। रोज की कहानी। मैं दूसरी बात आपसे करता हूं, उस बोटाद डिस्ट्रिक्ट के रोजीद विलेज में महोदय एक कांड होता है महात्मा गांधी जी की भूमि, जहां नशा बंदी है, शराब बंदी है, वहां शराब बिक नहीं सकती है, वहां पे जहरीली शराब आती है, 75 लोग जान गंवा देते हैं। मैं विषय इसी के जुड़ा है, मैं कहता हूं। और उसी वक्त पे कुछ बच गए, उनकी आंखें गई, किडनी गई। वो कहता है इंटरव्यू में कि मैं मजदूर हूं, मैं शराब नहीं पीता था, महंगाई इतनी है कि मैं डबल शिफ्ट में काम करके डबल मजदूरी करता था, इतनी तनतोड़ मेहनत करता था कि रात को सोने के लिए मैं थोड़ी सी शराब ला के पीता था और जिसमें जहरीली शराब आई। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी तो अबे गए, वो वहां रोजीद नहीं गए थे, उन गरीब के आंसू पोंछने नहीं गए। वित्त मंत्री जी आप पधारो, मैं आपके साथ चलूंगा, हम दोनों जाएं और उसके घर के लोगों के आंसू देख के फिर आप स्वीकार करना कि महंगाई है कि नहीं, और हम दोनों जाए और वो परिवार कहे कि महंगाई नहीं है। मैं आपसे और इस हाउस से भी माफी मांगूंगा कि मैंने जो भाषण दिया था वो मैं विड्रॉ करता हूं और माफी मांगता हूं। हकीकत तो ये है कि लोग बहुत परेशान हैं। हमारी बात, ऑपोजिशन की बात, लोकतंत्र में सरकार को सुनना चाहिए और लोकतंत्र में ऑपोजिशन की बात मानना भी चाहिए, पर आज का दौर ऐसा नहीं है। इसलिए मैं मेरी बात नहीं, मैंने जब आज के प्रधानमंत्री जी के आप बहुत मानते हो, बहुत सुनते हो, नरेंद्र भाई ने कह दिया, भगवान ने कह दिया, इसलिए मैं कहता हूं कि जब वो वहां के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं विरोधी दल का नेता था, उस वक्त की वीडियो मैंने निकाली है, मेरे सोशल मीडिया पे लगाई है और आप चाहोगे तो सीधी आपको दे दूंगा। उसमें मोदी जी ने कहा था, महंगाई को देख के मुझे कहना पड़ रहा है, डूब मरो दिल्ली वालों, डूब मरो। महंगाई को देख के मुझे कहना पड़ता है भाइयों बहनों कि ये महंगाई को रोक नहीं सकते, वो सरकार किस काम की, ये कहने वाले आज नरेंद्र भाई मोदी जी का वीडियो सोशल मीडिया पे है। महंगाई से परेशान लोग उम्मीद करके बैठे थे कि पार्लियामेंट शुरू हो रही है, हमें कुछ रिलीफ मिलेगी, हमें कुछ राहत मिलेगी। राहत नहीं दी, आपने जीएसटी का और मार दिया, रिलीफ देने की बजाय जीएसटी और बढ़ा दिया। और किन चीजों पे बढ़ाया आपने? जो सामान्य नागरिक खाता है, आम नागरिक, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, पनीर, राइस, वेट, मुरी, जैगरी, नेचुरल हनी। 1000 से नीचे वाले कमरे में कौन रुकता है? एक गरीब रुकता है। उस होटल का 1000 के कमरे के ऊपर भी आपने जीएसटी 5% डाल दिया। अरे यहां तक कि आपने स्मशान को भी नहीं छोड़ा, स्मशान के ऊपर भी आपने जीएसटी डाल दिया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी माननीय सदस्य प्रकाश जावड़ेकर जी कहते थे कि आप ऑयल बॉन्ड लाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आंकड़े देखिए, पेट्रोलियम एनालिसिस सेल के आंकड़े देख लीजिए। आपने 27 लाख करोड़ रुपए वसूल किए और बॉन्ड में कितने भरे हैं आपने? सिर्फ 98,000 करोड़। और 27 लाख करोड़ रुपया आपने टैक्स कलेक्ट किया। किस नाम से आप बॉन्ड की दुहाई दे रहे हो? मैं महोदय जावड़ेकर साहब माननीय सदस्य श्री कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट रसोई गैस एलपीजी जिसे तय करता है सऊदी अरामको, हमारे वक्त में 2013-14 में इस सऊदी अरामको के मुताबिक 885.2 यूएस डॉलर पर मैट्रिक टन एलपीजी का प्राइस था और उस वक्त हम देते थे बोतल 400 से 415 में। आपके वक्त में मार्च 2022 में 769 यूएस डॉलर पर मैट्रिक टन एलपीजी माने सस्ता हो गया और आपने 400 से 1100 रुपया गैस का सिलेंडर कर दिया। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, जब 400 रुपया गैस का सिलेंडर था,
तब एक मंत्री वीरांगना हो जाती थी और गैस के सिलेंडर पर चढ़ बैठती थी। लोग पूछते हैं वो मंत्री जी कहां है? आए तो सही, अब तो 1100 हो गया है गैस का सिलेंडर, आए तो सही हो। मैं महोदय ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब थी उसके आखिरी 3 साल का एवरेज, जावड़ेकर जी आप देखिए उस 3 साल का एवरेज कच्चा क्रूड था 108.46 यूएस डॉलर पर बैरल, और हम कितने में देते थे? कभी 100 रुपया नहीं पहुंचने दिया। और आपकी सरकार का लास्ट 3 साल का एवरेज देखो, कच्चा क्रूड हुआ 60.6 यूएस डॉलर पर बैरल, माने आधा हो गया, पर आपने 100 के पार कर दिया। अब ये 1 सेकंड दीजिए, 1 मिनट, आधा मिनट। मैं आपसे यही कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आप स्टेट वाले थोड़ा वेट कम कीजिए, तो मोदी जी ने क्या कहा था? भाइयों बहनों, ये दिल्ली वाले पाप करते हैं और राज्यों को कहते हैं कि तुम धो डालो। हम कहां से धोएंगे? कम करना है तो तुम्हारा एक्सरसाइज करो, तुम्हारे पाप से पेट्रोल डीजल बढ़ता है, हम वैट कम नहीं करेंगे। ये मोदी जी ने खुद कहा था, वीडियो है मेरे पास, मेरे खिलाफ प्रिविलेज करना, मैं वीडियो दिखा दूंगा कि 1 पैसा कम नहीं किया था वैट का। आज आप महाराष्ट्र की दुआएं देते हो। एक आखिरी बात करके खत्म करता हूं, जब प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी थे, महंगाई के लिए डॉलर की कीमत और रुपये को साथ गिनते हुए मोदी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी की उम्र के साथ ये रुपया कंपटीशन कर रहा है। अरे वो तो प्रधानमंत्री जी अच्छे थे कि उन्होंने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने दिया। मोदी जी की 2 बर्थ डेट है और दोनों बर्थ डेट की उम्र से आगे आज रुपये की कीमत चली गई है। ये हकीकत है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो प्रधानमंत्री गिर रहे हैं, उसकी इज्जत गिर रही है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो दिल्ली की सरकार की इज्जत गिर रही है। मैं आज कहता हूं कि आपने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। दिखाओ तो सही कि कौन गिर रहा है आज के देश में, वो दिखाए तो सही। इन्हीं लफ्जों के साथ आप इजाजत दें तो 2 लाइनें जो सिर्फ मैंने दी है ये इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर, आप अगर 2 मिनट दे दे तो मैं 2 लाइनें। आपका टाइम ओवर हो चुका है, बस एक कविता की 2 पंक्तियां। हाय हाय भाजपाई महंगाई महारानी, थोड़ी सी देशवासी पे करो मेहरबानी, सारा देश तुमसे परेशान, कुछ तो कृपा करो सरकार। आई है जब से भाजपाई कठिन हो गई है देश की जिंदगानी, स्वाद गया जीवन से बेस्वाद हो गई है देशवासी की जवानी। धन्यवाद। श्री डेरेक ओब्रायन। This is the story. This is the story of a young couple. They get up. This is the story of a young couple. They get up in the morning, quickly brush their teeth. 18% GST on toothpaste. Then the man rushes in for a shower, a bath, bucket bath. Again, 18% on the soap. So while they're getting ready, someone hits on the door. The LPG man is waiting outside. Oh, give me some 1200 rupees. Then, sir, on the scooter to work, petrol prices, you know what it is, sir. While they're rushing, they quickly stop because the child has got an exam tomorrow. So pencil, eraser, all to be bought. They're also not, children are not spared. 18% on the kids. Sir, then office time, some murmura, what we call in Bengal, mudi for a snack, not spared. 5% on that, sir. Then they go to office, the man goes to one office, his wife goes to another one, they realize the neighbor's wife has to be taken to hospital, not spared 5% GST for the room. Bad day, sir. The lady calls up, tells her husband, I'm going to the bank. Bank, 18% on the checkbook. Sir, by the time they come home, they stop for the tomatoes, up by 145%. They are exhausted, they're back home, sir. And the lady and the man are quite exhausted, but the man says, Modi hai to mumkin hai.
And the lady, and what does the lady say? Lady's Hindi is not very good, so she says something in Bangla. Chire muri batasha, Modi Shah tamasha. বুঝেছেন? Chire muri batasha, GST tamasha. Sir, I can't translate that. That is not translatable. Okay. Sir, let's come to first three numbers. I have three numbers for the finance minister, and I have 6 direct points where I want her response when she responds. What are the 3 numbers, sir? Let me explain. The first number is 20. The first number is 20. Now, 10 years ago, when cess was collected by the government, of the total cess and surcharge collected, 10% was cess and surcharge. 10 years ago. Now that number has gone from 10 to 20%. That means the central government is sucking from the states. Instead of 10, 20%, that figure is 4.81 lakh crores. So my first one to the finance minister who will respond is, you are doing this, and you are doing this for all. For petroleum products, don't talk about petroleum products. 2/3 of the cess, of the total taxes, cess and surcharge, is collected by the center. So stop this argument of 5 rupiah ye, 6 rupiah ye. 2/3 is collected. Sir, that's the first response. And what is the number? 20. Second number, sir, we all know. Retail inflation. Retail inflation, 6 we say, RBI says 6 is fair, okay. Last 2 quarters, retail inflation has been 7. Trouble, retail inflation. So 20 plus 7, keep that in mind, 27. And my third number today is 29. Why 29, sir? Berojgari, unemployment. 29% of youth in India do not have jobs. 29. 1 out of 3 do not have jobs. The FM must respond. 7,22,000 people had got jobs. What is my source? Lok Sabha answer a few months ago. 22 crore applied. Berozgari, 20, the number who got was how much? You saw, sir, 7 lakh. Now that is my third number. 20, you're taking from the states. 7, the retail inflation. And 29 is the youth unemployment. In the response, I would like the finance minister to dispute all these numbers. Sir, but the interesting thing here, and it's very, very interesting, if you add the 3 numbers up, 20, 7 और 29, एक नंबर मिलता है सर, 56 inch, sir. So 56 inch is the number we can all understand, if you know what I mean. 56 inch. Right, sir? The finance minister is quoting Raghuram Rajan on the floor of parliament. The finance minister, I'm sure she hasn't been well, and I wish her a speedy recovery. I'm sure she'll come back to listen to the second part of my speech. It's good, sir, when the finance minister walks out, you know I get under their skin. Right, sir? Maybe walk out karunga na kya? Raghuram Rajan made that speech. Don't selectively quote Raghuram Rajan. After he said what he said, and that was the point of his speech, we must confront and defeat, quote, we must confront and defeat majoritarian authoritarianism, unquote. Falling rupee. Everybody knows about the falling rupee. I have one straightforward, this is my third response in the answer. Straight to the finance minister. 28 times we know the rupee has jumped up. Inflation, sir, is at 7%, right? Now listen to this. In the US, inflation is 9%. India, the inflation is 7%. If in the US the inflation is 9%, India is 7%. Undergrad economics will tell you the rupee should be appreciating to the dollar. Why the finance minister is the rupee depreciating? Because in the US, 9% is peaked out. Right, sir?
Let's come to one more. Again, a response from the finance minister. So when the opposition MPs speak, we also know how to make political points and economic points. Give us a chance to speak. Sir, here is the number, my fourth response in her response today. LPG, 2019-20. 2019-20 में LPG सब्सिडी कितना था? 24,000 करोड़. 2021-22 वो 24,000 करोड़ का सब्सिडी कितना कम हो गया सर? 2,400 नहीं, सिर्फ 240 करोड़. फाइनेंस मिनिस्टर आइए, आपका रिस्पांस में इसका जवाब दीजिए. सर, जीएसटी, first point on GST. Members are getting up here from the treasury benches, misleading the whole house, misleading the whole country. GST में ये बोला था, all the states agreed. Not at all. Supreme Court has said GST is only a recommendatory body. Let's be very, very clear about this. Nothing is binding. It's advisory. So don't make this argument. It doesn't work. Sir, my next submission to the finance minister. Sir, GST was introduced in 2016. States were assured of compensation for 5 years. States have now written saying that COVID was so bad. Yes. Have you considered the demand of the states to increase the compensation from 5 years to 8 years or 9 years or 10 years? Give us an answer on the floor of this house. These are the real issues. You can't go on Noida TV channels and divert the issues with minor. This is the real issue. Price rise. We're talking about price rise. Let me come back. Let me finish GST. So what you're really doing is 1.5 lakh crore compensation over the next 9 months. Where is the state going to generate this money? And my last point on GST is, since I had the good fortune of being a member of the select committee, my party, the All India Trinamool Congress, put me there. Now, it's a select committee and in the law, that time the revenue neutral rate was 16%. Based on that, all the GST was calculated. Now, the revenue neutral rate is down to 11%. Why? Why? Because you've taken away 250 items which were luxury items and brought it down, and you've gone and taxed toothpaste, muri, etc. So that is the problem. They have to fix this, sir. Because if you don't fix this, then I'm afraid this will be the death of federalism. घास पे? अच्छा. Sir, 4 quick points. The opposition, my party, the Trinamool, and there were others as well, we took a very clear view on GST. Idea great. August 2016, check the records in Parliament. We warned you, implementation is the key. And you made a complete hodgepodge of implementation. Next, we warned you, November 2016, 45 minutes after the Prime Minister announced demonetization, one lady, Chief Minister of Bengal, said, withdraw this draconian anti-people decision. Who did that? You didn't listen. Farm laws, you didn't listen. COVID handling, you didn't listen. Sir, come down with the arrogance through you to the Prime Minister and listen to what we have to say. Sir, we've heard a lot of talk about ye diya free, wo diya free. Itna diya free to Bengal mein itna kyun har gaya? Kyun har gaya? Main bol raha hu kyun har gaya? So my time. So, Please, honorable member, please, go on, sir. please. Sir, Please, Chowdhury honorable members, please, Sir. please. 14 महीना हो गया, लेकिन अभी भी जलान है. Please Sir, address what the to do? chair. We'll have to conclude 1 minute. Sir, why 1 minute, sir? You've taken away 3 minutes. 3 minutes. Sir, this is it.
The second largest opposition party here is speaking. You're saying I've got 1 minute to speak. Sir, what is this? It's on the board. Sir, let me make the point. I've only got 3 very short points. I must respond to them so they know why they lost. Now because they think they win everything. मैं बताता हूँ और बंगाल का जो मुख्यमंत्री है ममता दी, वो जो बोलती है keeps her word. चावल राइस फ्री, रोहू फ्री, दवाई फ्री, इलाज मुफ्त, माँ कैंटीन 5 रुपए में खाना, किसान इंश्योरेंस। किसान के 1 पॉइंट किसान में, हाँ, किसान में बंगाल का मॉडल आप लोग सीख लीजिए। किसान का इंश्योरेंस, सर प्रोटेक्ट मी Honorable members, please. किसान, नो सर, आई नीड प्रोटेक्शन। Please, honorable members. Manya Direct ji, please. It'll only delay it further. Sir, Please, sir, everyone. if I may, two MPs, Please. 2 MPs stood up in their seats in the morning. The house got adjourned. Sir, please protect me. No, sir. We'll have to conclude. Kisan, Direct. I'm giving me 2 minutes. I'll conclude. Kisan insurance. The farmer does not have to pay the insurance, and I can go on with Lakshmi Bhandar, Kanyashri Deep. Sir, I have 2 more points to make. One more point, sir. One more. Please. There's no point. Yes, sir. I made 6 clear points where I would like the finance, sir, 1 second, just where I would like the finance minister to respond. Sir, the bigger point, why have we had to wait? Please. Honorable members. Let him conclude. Please This is conclude. not on. Honorable members. I seek your please. protection. Please, ये ऐसे ही चलेगा फिर और 4 मिनट आपको चाहिए. Please, let him conclude. He is about to conclude. Please. Sir, price 6 point बोला, जवाब दो ना. Sir, the bigger issue, we've discussed price rise, hard points, we've discussed GST. Now, why did it take us 38 days to have this discussion on price rise? Sir, just 1 minute. Because we appeal to the government and genuinely appeal as a constructive opposition. First, you have to acknowledge the problem. If you're not going to come here to acknowledge the problem, how can you fix the problem? Because you will throw 25 MPs out, you will not allow a discussion, and then what happens? Parliament, what is Parliament? Parliament is a congregation of people fighting fighting for the constitution. So what they did is remove Parliament outside. Please conclude. Sir, they removed Parliament outside, and the congregation of people, we are still fighting for the constitution. Sir, I want to end. Thank you. I want to end with quoting a very important person. You'll allow me 2 small quotes. And I'm looking forward to short quotes, not Quickly. 2. Sir, because I've made 6 points for the FM, but these are 2 quotes, and it's somebody all of you respect. Here we go. 1. It's on the rupee. Quote. Rupee is not losing strength because its size has changed. It is because those sitting in Delhi are busy in corruption. Unquote. Sir, this is a quote. Please conclude. Direct ji, please conclude. I didn't. Why the fighting with me? Conclude. Sir. Please, honorable members. हमसे क्यों चल रहा? Please, honorable members. Please, I'm requesting you. Please. आप लोग भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, दोनों ही बोल रहे हैं. Please. Don't cross talk. Please. Sir, Please. I've got one. Conclude. Sir, I don't know why they're getting upset. It's somebody. Last quote. Last quote. This is July 2013. Please. Narendra Modi. Why are they getting upset? Conclude. Mr. Prime Minister, we agree with you. Now my second quote. On price rise. Quote. Common people are being affected. Let me finish, sir, without a disturbance. My last quote. Quote. Common people are being affected by rising prices, but the insensitive central government is making a mockery of the suffering of the poor. Unquote. Mr. Modi, September 2023. Please conclude. All I want to say to both these quotes, September
2013. Thank you for correcting me. He said this in September 2013. All I want to say for these two quotes is, Mr. Prime Minister, we completely agree with you. Thank you. माननीय श्री तिरुचि शिवाजी, माननीय श्री तिरुचि शिवा। Thank you, Mr. Vice Chairman, sir. Sir, I would like to start from where my friend Mr. Derek concluded his speech. In the year 2014, during the Lok Sabha elections, the then Chief Minister of Gujarat, who aspired to become the Prime Minister of India and now the Prime Minister, lambasted the then government, that it was a weak government and it reflects in a weak rupee. And he also accused that government UPA failed in all ways. Assured of, if I am right to quote, Acha Din, that is good days will come. But now the worst days are here. The country has never witnessed such a critical situation before. In the past 50 years, the unemployment has critically gone down, very much bad than ever before, all because of this government's policies. Sir, I expected the Finance Minister to be here. I think some other works might have compelled her to be out. But I want to tell her, yesterday when she was replying in the Lok Sabha, she was replying to the members of the DMK and other people who criticized the government for not having controlled the price rise and the petroleum prices. And in the course of her speech, she said that the DMK during the election campaigning gave a manifesto and it has not fulfilled its promises of reducing the petrol price and all. Sir, I would like to submit through you to this government as well as to the Finance Minister. She knows pretty well, but she spoke to the gallery. We expected something else from her. In 1 year, the DMK government headed by Mr. M.K. Stalin has fulfilled 70% of the poll promises. We have yet more 4 years to cross. And we have reduced the petrol price by 3 rupees. And we have reduced the milk price by 3 rupees. And we have done a very well. See, this government, because of these policies, I was about to come to that in the later part, but statistics very clearly say that the sex ratio of women have increased, but their anemic ratio is increasing very much. And the nutrition of the children are down to the level. Infant mortality is more. So, sensing all these things, in Tamil Nadu, sir, other than the nutrition meal scheme in the afternoon, we give also breakfast to the children in the school. That is a very progressive one. And everything that happened is only because of this government's policies. Everything. During the election, let me ask. She is challenging us in 1 year whether we have fulfilled the poll promises. Let me ask them, it is 8 years you have completed. Have you fulfilled your poll promises which you gave in 2014? You said that black money will be totally unearthed and 15 lakh cash will be deposited in every citizen's account. Have you deposited? Have you deposited? Later you yourself said. It was Jumla. Later, I'll tell you. Later, your own Home Minister, Honorable Amit Shah told it's a Jumla. Jumla means empty promise. Empty. So, political promise. Whatever did I don't know the meaning of that word. So, you gave an assurance, but you are not fulfilled. Father, you yourself said it is an electoral promise. So, you have cheated the people. You have misled them. And you said every year you will give 2 crores of employment to the youth. But now as I said in the beginning, the unemployment has soared high. And next comes the demonetization policy. And the highly flawed demonetization policy which was imposed upon the people, all of a sudden
which devastated the MSME sector, the informal economy, and the whole economy of this country. And what the Prime Minister told when people were agitated, just in 50 days, if it is not set right, you hang me. Did he not tell that? You punish me, he said. But years have rolled by. The crisis caused by the demonetization and the adverse impact on the economy and the MSME sector and the poor people still continue. So whatever you have done are only flawed. The GST, again to say, the GST has increased the basic prices. And Derek was quoting about a couple, a man and a woman getting up in the morning, getting ready to go to office, going out, what are all the expenses. Let me tell you one more thing, my dear friend. A person dies, he is no more. He is taken to the crematorium, there he has to pay 18%. 18% GST in crematorium. Honorable member. How sad? Address the chair. How sad it is. So also the petroleum prices. They cannot justify it, showing this and that reason. See, when the UPA was in power, the oil prices and the petrol prices in our country. That's a small comparison. Because we are not just evasively making comments or making accusations like the others do from that side. In 2011, the oil price was at the highest 111 rupees 89 paisa when the petrol price was only 58.5. That was in UPA. And when it demitted office, the oil prices have come down to 84.16 and the petrol was 72.26. When they took over, it was the same. The very next year, the oil prices in the global level came down to 46.17 rupee. But here, dollar, and here the petrol price was 60.49. It was not proportionate. When the oil prices come down, it should be transferred to the consumer, but it was no. Rather, the petrol price was hiked. And slowly coming like that, today, the oil prices are $121 per barrel and the petrol price is 105.41. Sir, again compare UPA 111.89 oil price, the petrol price was 58.5 and now only 121, just 10 rupees, $10 more. The petrol price is 105.41. So you are actually accumulated. In the past 3 years only, the government has earned, as per the reports or the statement given by the finance minister, 8.71 lakh crore has been earned by way of petroleum prices hiking. Whom does it affect? Not the corporates. Actually, they are benefited. Whatever you have the money, you are waiving off the corporates' loans, telling that we are augmenting the incentives. No, but you are increasing their profits. During the pandemic, the whole country was suffering. Everyone. Because of the non-planned implementation of this lockdown, what happened? The migrant workers, they died, they lost their jobs, they were starving for food. Many people were suffering, so many were left unemployed, whereas the corporates' profit increased to 22% than before. Because of your incentives. You take care of them. A minimum standard of living, you have to assure the people. That is the basic duty of a government. Minimum a standard of living. What do you say in Hindi? Roti, kapda, aur makan. Makan. But that is not. But even that is not so. Sir, I would like to say, the RBI very clearly say the consumption level has declined from 100 figures to 72 figures. People are not able to buy. The expenses people are spending for their food in the rural areas, please. Rural areas have come down very badly. They are not able to eat. Their calorie intake is coming less. I would say, sir, the indirect tax, what the low income group people is giving, that is what the high income group, a corporate, is also giving. The direct taxes income is only 54%. The rest 46% are given by the ordinary poor people. You are taxing them. You are breaking their backs. They are not able to survive. Essential commodities price go up.
The poor people, see what you call Ujjwala, what is Ujjwala? You are given stoves, but the gas price has gone up. 1,100. They are having stoves, but they cannot buy gas. Women are starving. Women are, the family heads are. I got a lot to say, sir, but I have to confine to the time which I have been limited to. This is the situation in this country. They are not bothered. They only give excuses. The fall in the depreciation of the rupee value. You cannot compare the other countries. You cannot say that person is sick, I am also sick. You have to be healthy. So the government has to take action how to bring back the rupee value to the country's needed level. It is not doing so. Whereas the forex reserves in the Reserve Bank of India has come down by 4 lakh crore rupees to shore up the Indian rupee. What more you have got? You are benefiting the corporates, punishing the poor people. This is not the right gesture of a government. Sir, she is not here, but I would like to conclude since my time is up. I think she would come to know because she used to quote from Tamil Tirukkural, Purananur and all. I would also like to quote one Tirukkural. Kodayali Sengol. Kudiyombal Nangum Udayonam Vendarku Uli means, I would say in Tamil first, தேவைப்படுவோருக்கு தேவைப்படுவதை தருவது, அடுத்தவர்கள் கருத்தை மதிப்பது, நல்லாட்சி நடத்துவது, எல்லாவற்றிற்கு மேல் மக்களை பாதுகாப்பது, இந்த நான்கும் உடையதே அரசருக்கு அழகு. Let me tell in English. Let me tell in English. You have to give the poor what they need, number one. Number two, you have to lend your ears to the views of those people who oppose you. Number three, a perfect administration, a good governance and care of the people's weal are the qualities of a real king. Do you do that? You are not taking care of the poor people. You are not lending your ears to the opposition's criticism or comments or anything which we say. However, it may be genuine. Your administration is not also good. You say minimum government, maximum governance. But now maximum government, but minimum governance. Thank you very much. थैंक यू. माननीय श्री संजय सिंह जी, आपके 2 स्पीकर्स हैं, समय उसी हिसाब से आप देख लीजिए. धन्यवाद मान्यवर, आपने महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया. जिस महंगाई से पूरा देश करा रहा है, मैं चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पे महल वाले रहते हैं. ये देश जिनके हाथ में छाले हैं मान्यवर, उन्हीं के दम पर है, उन्हीं के दम पर है. लेकिन ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो. भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करेंगे. माताएं बहनें कहती है गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो. सरकार कहती है पैसा नहीं है. किसान कहता है फसल का दाम दे दो, फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है. अरे बुजुर्ग कहते हैं हमारी रेल की तीर्थ यात्रा, उसकी रियायत क्यों कम कर दी? सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है. देश के लोग कहते हैं शिक्षा का बजट तो बढ़ा दो, सरकार कहती है 2% से ज्यादा बजट नहीं है. अरे स्वास्थ्य का बजट तो ठीक कर दो, मोदी जी सरकार कहती है पैसा नहीं है. मानवर ये पैसा गया कहां? किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास गया. मैं आपको बताता हूं मान्यवर कहां गया. 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया, 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया. और ये मेरी जानकारी नहीं है, ये मेरी जानकारी नहीं मान्यवर, इस सरकार ने बताया
पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर। इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को माफ किया। और इस सरकार को एक सनक है, इस सरकार को एक सनक है, मोदी सरकार को एक सनक है। उसको यह सनक है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मान्यवर, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। सरकार किसके लिए चल रही मान्यवर? यह सरकार किसके लिए चल रही है? इसको ध्यान से हमें सोचना पड़ेगा। जब हम इसी सदन में किसान के काले कानून का विरोध कर रहे थे, हमें सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। 1 साल के बाद ये सरकार कहती है अब हमें होश आ गया, हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम काला कानून वापस ले रहे हैं। क्यों भाई? 1 साल पहले कानून वापस ले लेते तो 750 किसानों को शहीद नहीं होना पड़ता। आज एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है मान्यवर। उसने लिखा है मम्मी से जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है, मम्मी जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है। वो कीर्ति दुबे पूछ रही है मान्यवर मोदी जी कहां है, मोदी जी कहां है? मैं उस कीर्ति दुबे को बताना चाहता हूं मोदी जी की पूरी सरकार झारखंड में विधायकों की मंडी में व्यस्त है, विधायकों की मंडी में व्यस्त है। विधायक के खरीदने में लगे मान्यवर, विधायक खरीदने में लगे। ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की गुलामी करने वाली सरकार चल रही है, जो इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम करती है। गरीब के लिए खाने के लिए पैसा नहीं। 800 दवाओं पर, कैंसर की दवा पे, किडनी की दवा पे, टीबी की दवा पे आपने दाम बढ़ा दिया। आपने अस्पताल के कमरे तक पे दाम बढ़ा दिया। आपकी सरकार डीएचएफएल के लिए काम करती है। 34,000 करोड़ रुपए बैंकों का घोटाला डीएचएफएल ने किया और 29 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है मान्यवर। इनसे हिसाब मांगना चाहिए। क्यों नहीं जाती ईडी इनके पास? क्यों नहीं जाती सीबीआई इनके पास? इनसे सवाल पूछना चाहिए मान्यवर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप खाने के लिए आपके पास, सरकार के पास पैसा नहीं, उस पर तो टैक्स बढ़ा देते हो, लेकिन गुजरात के अंदर जहरीली शराब पिलाते हो लोगों को। जहरीली शराब, 75 लोग जहरीली शराब पी के गुजरात के अंदर मर गए मान्यवर। 75 लोगों की जान चली गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जाते हैं देखने, गुजरात का मुख्यमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं जाता। देश के प्रधानमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं जाते, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उन लोगों से मिलने जाते हैं मान्यवर। मैं कहना चाहता हूं, नो पॉइंट ऑफ, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, 1 मिनट सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग, लेट मी कंप्लीट सर। सर बस खत्म कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहे हो। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है मान्यवर, ये बिल्डर्स के लिए काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं गुजरात में मान्यवर, गुजरात के अंदर, गुजरात में नवासारी एक जगह है, गुजरात में सीआर पार्टी के नाम के सांसद। नहीं सर, आई एम नॉट यील्डिंग। इसी चेयर से कहा गया जब बोलते रहो तो किसी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देंगे। नो सर, नो, आई एम नॉट यील्डिंग। अब खत्म कर रहा हूं, मेरा लास्ट पॉइंट सर। ये सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करती है सरकार। एक बिल्डर गुजरात के अंदर सीआर पाटिल के इलाके में, उसके लिए रास्ता बनाने के लिए राधा कृष्ण का मंदिर गिरा दिया इन्होंने। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज 1 सेकंड, सर ये इसी चेयर से कहा गया सर। हमारा टाइम आप देंगे सर। 240 नो सर, प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, नहीं बोला गया। नो सर, one second, point of order, 240 सर, जब बोल रहे हैं सदस्य irrelevance or repetition. The chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition, can ask the member to discontinue the speech. Sir, most of what has been said here does not relate to the topic being discussed in the council, sir. Taking a point of
point is taken. So a lot of what has been said does not pertain to the I've taken subject. your point. You made your point. You made your point. Made your point. Please sit down. बैठ जाओ सर। He's concluding. बस खत्म। Please. माननीय सर श्री- इसी Conclude चेयर से कहा गया था Conclude. एक सदस्य बोलता रहेगा तो किसी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देंगे। सर खत्म कर रहा हूँ। Conclude कर। सर मैं ये कह रहा हूँ कल तक मैं ये कह रहा हूँ ये सरकार कल तक ये दूसरे कानून था। हाँ ठीक है बैठ जाओ Conclude करिए। बैठ जाइए खत्म कर Conclude करिए। सर मेरा समय खा रहे हैं लोग सर गुजरात में एक बिल्डर की सड़क बनवाने के लिए राधा कृष्ण का मंदिर गिरा दिया इन लोगों ने। Conclude करिए। Conclude करिए। ये बिल्डर की गुलामी कर रहे हैं। Please conclude. Please conclude. Thank you. Thank you. Vijay Sai Reddy ji. Shri Vijay Sai Reddy ji. Yes, please. Please. Thank you, Vice Chairman, sir. Some of the members, honorable members of this House, quoting wholesale price index. Please, silence please in be the the house. parameter. Silence in the house, please. Honorable members, please do not look behind. Honorable members, honorable members, honorable members, please take your seat. If you do not want, Mane Derek ji, please, thank you. Honorable members, please silently. Sir, during the speech of the honorable member, there was a reference made about a member of the other house. So may please We will examine examine it and then We will examine it. Honorable Shri Vijay Sai Reddy ji, please, Shivaji. Honorable, please. Shri Reddy has already started. Please. Sanjay ji. Please, Shri Reddy ji, please commence. Please, everyone, honorable members, please commence. Please, honorable Vice members. Chairman, sir. Please, Some of the honorable members have quoted wholesale price index to be the parameter to prove the inflation, which is at 15.1%. According to me, the people do not buy the goods wholesale. It is only consumer price index is the right measure to judge the inflation, which is 7.1% in June 2022. Sir, it is undoubtedly high. It is not justifiable. 7.01% is unjustifiable, is definitely on higher side, and it is still lesser than, it is 7.0, I am not justifying 7.01%, but it is still lesser than 10.4%, which was the inflation rate during Honorable Finance Minister Chidambaram time. Sir, RBI has got the mandate to keep the inflation within the limits with a median of 4% plus or minus 2%. I am asking the government, what is government doing? See, why RBI is not able to control the limits that it has imposed, 4% plus or minus 2% is the median. Sir, why this tolerance band has been breached? The entire RBI has further said the entire year for the remaining period, also the inflation rate would be well above 6%. This is the statement of RBI, sir. What is that the government is doing in this regard? Sir, inflation, according to me, inflation is a taxation without legislation. It is a taxation without legislation. Inflation, according to me, it's my own interpretation, is violative of Article 38 of the Indian Constitution. Permit me to read it in verbatim. Quote, the state, that is the central government, shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate the inequalities in status, facilities and opportunities, unquote. So this is the responsibility of the government to control the inflation. According to me, the government of India, the present central government has failed to control the inflation. Sir, increase of price of essential commodities
adversely impacts the poor of the poorest of the poor, sir, and the marginalized sections in the society. Sir, 1 lakh rupees, 1 lakh of rupees in the year 2001 is now equivalent to that of 27,000 rupees. See, this is the value of the rupee as of now when compared to 2001. Therefore, it is the duty of the government to ensure that socio-economic security, to control the prices by controlling the prices and enhance the quality of life. Sir, the government, I advise the government, Honorable Finance Minister, to go for control of inflation, adopting the means of controlling the inflation. One, cash reserve ratio. Cash reserve ratio, which is 4.5% at present, may be raised by 50 more basis points, and accordingly the inflation also will be controlled. The next is statutory liquidity rate. The statutory liquidity ratio is maintained at 18% as of now, and it can be increased by the Reserve Bank of India in case if it is required to the extent of 40%. Sir, therefore, I request the Honorable Finance Minister to adopt these two measures and thereby control the inflation, sir. Sir, labor participation, 4 more minutes. Labor participation. Sir, the trauma of migration in 2020, COVID, low wages, lack of social security, support system have caused the less migrants to return to the urban centers. Those who have left the work and then migrated back to their respective places have not come back to the urban centers and not joined the duty. This is one of the reasons for the less purchasing capacity of the people of the country, sir. Sir, as per the National Statistical Office, the labor force participation in the quarter January to March of 2022 stood at 47.3%, which is miserably low. Sir, March alone, it fell to 39.5%, shrinking the labor force to 3.8 million, and further, female participation stood at only 9%, meager 9%, which I am Honorable Finance Minister, I would like to Finance Minister to take care of, to take cognizance of this. Sir, the coal and petrol prices, which our honorable members have raised it. Sir, the price of the coal and oil prices have increased, the supply chain disruptions, coal and oil prices have been 7 years high as of today. In the last 7 years, this is the highest. The growth rate on the production of coal by Coal India Limited and its subsidiaries shows the negative growth. Minus 0.98% is the negative. So between 2019-20 and 2021. So this is the state of affairs. Sir, in fact, today morning, honorable member from DMK, Kanimali Somuji, has raised this issue, cess and surcharge. Sir, between 2015 to 16 till today, what states ought to have got, had it not been cess and surcharge, it would have been the central gross tax revenue, and according to the finance minister, the center is distributing 41% of the gross tax revenues to the states, which is not correct. If at all central government includes the cess and surcharge also in the gross tax revenues, the real distribution of taxes to states is only approximately about 31 to 32%. And states have lost altogether 11.26 lakh crores, and Andhra Pradesh alone has lost about 46,000 crores in the last 7 years. This is the state of affairs, and the center, in other words, I can say that center is robbing the states by imposing the cess and surcharge. Sir, input costs. There is a slowdown of pace in the manufacturing sector. Broad-based slowdown in the growth across the number of measures such as factory orders, production, export, input buying and employments, as clients and businesses restricted spending amid elevated inflation. My time is over, sir. 1 more minute. Sir, chairman has to allow. Sir, please.
Sir, it is by convention. It is by convention that the interest rates on small saving schemes, which Honorable Finance Minister is aware, should be 25 to 100 basis points above the 10-year bond yield, 10-year Government of India bonds. The Government of India 10-year bonds yield has increased 140 basis points from 6.04% to 7.46%. Therefore, it is the responsibility of the government to increase the PPF rates also from 7.1% to 7.8%. And also Sukanya Samruddhi Yojana from 7.6% to 8.3%. And senior citizen saving scheme has to be, rate of interest has to be increased from 7.4% to 8.1%. You can't have two different logics for the same subject. So I request the Honorable Finance Minister to take cognizance of this. Sir, inflation is worldwide phenomena as of now. However, it is the responsibility of the government to control it. Just because there is an inflation in Germany, just because there is an inflation in UK and also in US, doesn't mean that India can justify the inflation. It is the responsibility. Our neighboring countries also, yes, there is an inflation. Sir, everything is covered. Now, as Derek ji has pointed out, everything except some exempted items, everything is covered under GST. Even Tirumala Ghat is also not spared. This I have raised several times. And Honorable Finance Minister is not. All the BJP members would go to Tirumala and then pray the God, but their God is also being taxed. Sir, with this I conclude. I am thankful to you. I request Honorable Finance Minister to take cognizance of it. Thank you. Thank you. Shri Sujit Kumar ji. Shri Sujit Kumar ji. Shri Sujit Kumar ji. Why, John? Please, please. Thank you, sir, for No crosstalk. No speak crosstalk. on price rise, a very critical issue facing our country. Sir, at the outset, I would like to acknowledge that these are difficult times not only for India but for other countries as well. I quite understand and appreciate the predicament in which the Finance Minister is, Honorable Finance Minister is. She has to manage the economy in the post-COVID scenario, and we have the Ukraine-Russia conflict, we have supply chain constraints emanating from China, so I do definitely understand the situation. Sir, I would like to quote from an all-time favorite classic of mine, A Tale of Two Cities by Charles Dickens. It was the best of times, it was the worst of times. It was the summer of hope, it was the winter of despair. Now, sir, why is there spring of hope? Please. Because, sir, I firmly believe that the India growth story is intact. I firmly believe that we are poised to better growth, higher growth, thanks to the people of this country, thanks to their hard work, their resilience and their creativity. Yesterday in the Lok Sabha, Honorable Finance Minister in a reply mentioned that there is zero probability of India having recession or stagflation, and I share her optimism. Sir, despite this slowdown, we are still the fastest growing economy amongst the large economies. One might dispute about the numbers, whether it's 7.4, 6.8, 8.2, but still, sir, our growth is much better than most other economies, including that of China. Our exports have crossed $500 billion, a record high. Our GDP, government debt to GDP ratio is in the 80s, whereas for most countries, including US, France, most of the developed countries, it's in the 3 digits. So, sir, there are many reasons for hope, and due to paucity of time, I will not have the opportunity to get into all of those regions. But, sir, I will fail in my duty as a parliamentarian if I do not highlight the concerns of crores of Indian citizens who are today crying because of the burden of inflation or burden of price rise. And I promise you, sir, I will speak only about price rise and inflation. I will not get into foreign exchange reserves and other jargons of economics. Sir, today, the wholesale WPI, wholesale price index, WPI, for June 2022 is 15.18%, which was 12.07% in June of 2021. This is an almost 30-year high.
Sir, CPI, Consumer Price Index, which impacts common citizen the most, remains at 7% for the third consecutive month, which is higher than the RBI's comfort of 6%. So for a common man, CPI, WPI have no meaning. She is only concerned about her monthly budget. And in the CPI, when the food basket is 40% of the weightage, if the CPI inflation goes up, then it is the Indian housewife's kitchen that bears the brunt of this high inflation, sir. Absolutely. Sir, I'll give some examples. Price of Banaspati oil on 31st of May this year was 26.6% higher than the same day in 2021. Price of wheat was 14.3% higher on 31st of May. I'm talking about 31st of May 2022 compared to 31st of May 2021. Same for sugar, same for mustard oil, etc. sir. Even domestic cooking coil today has crossed almost 1100 rupees. Petrol prices have gone beyond 120 rupees in most Indian cities. Sir, we all agree that price rise or inflation affects the poor and the middle class the most. Sir, I'll read out a report. I'll talk about a report from Oxfam titled Profiting from Pain that concludes that every 30 hours a billionaire is born, while nearly 1 million people are pushed into extreme poverty because of inflation. The system is such that inflation, particularly in a post-COVID scenario, makes the poor suffer and the rich Silence, gain. please. Silence. Sir, Please. Sir, today I had the opportunity to ask a supplementary question today morning during question hour on the prevalence of dubious loan apps, and I gave the example of these apps, digital loan apps having connections to China, and how there have been 1.5 lakh downloads in the state of Odisha alone. I do not have the figures for the entire nation, but this tells us how people have now started borrowing money to meet their monthly budget. I am afraid, sir, people will get into a debt trap if this continues. If the price rise continues, bulk of India's middle class and poor will get into a debt trap. Yes. Sir, this inflation is killing the dreams of our youth, particularly when their income is falling, when they do not have better job opportunities, when there are no livelihood opportunities. Honorable Member Vijay Sajati spoke about Article 38, and I agree with him. Sir, Please. Sir, Senior members हैं. though Article 38 of the Constitution is part of the directive principles of state policy and is not justifiable by the court, I think it is the bounden duty of the government to tame inflation, because in my view, and most economists agree, that this inflation is caused not by demand. It's not demand driven. It's not because of rise in wage, but it's largely because of supply constraints. And sir, here I would like to bring to the attention of the House a social media post by Department of Economic Affairs at Ministry of Finance in April 2022, and it states, and I quote, "Evidence of consumption patterns suggests that inflation in India has had less impact on lower income groups than higher income groups," unquote. Sir, can it be more bizarre and callous than this? All of us know that inflation affects the poor and the middle class. But this social media post tries to portray the picture that it's not the case, it affects the rich class. Sir, as if the existing inflation was not enough, now there is an additional burden of 5% of GST on many packaged items of food like paneer, curd, atta. Sir, I agree that this was not the decision of Government of India. Rather, this was the decision of the GST Council. But sir, and GST Council has representation from all the states, I do concede. But sir, wasn't this hike made by the GST Council on the recommendation of the group of ministers? So should the group of ministers not have recommended to the GST Council that this is not the opportune time to have a hike
on these packaged products? Honorable member, please conclude. Sir, give me 2 more minutes, sir. Sir, Honorable member Shivaji spoke about the nutritional impact on child, and this is very close to my heart, sir. So please, I ask for your indulgence. Sir, the inflation, the price rise has had a direct impact on the midday meal schemes. Sir, the schools, government schools, they get 5.42 rupees for each student from class 1 to 5 and rupees 8.10 for each student from class 6 to 1 to 5 and from 6 to 8 it's 8.10. Sir, we all know, can a meal be served at rupees 5 or rupees 8? We all know that a basic plate of dal, rice and vegetable curry will cost at least 15 rupees. So sir, what is the impact of price rise now? The quality of food served, the quality of midday meal has significantly got diluted, and our children, the children of this country are now getting served substandard food, low quality food. Sir, many times, even in this August, one more minute, sir, even in this August House, I have argued vociferously about the need to implement Kothari Commission's recommendation, which was made way back in the 60s. The need to spend at least 6% of our GDP on education. We are half of that. We are currently spending 3% of our GDP on education. But at least the least we can do, sir, is to offer good quality food, nutritious food to our children as part of the midday meal scheme. Sir, time and again, Honorable Prime Minister has appealed to citizens of this country to come forward, to make sacrifices. People willingly made sacrifices. They gave up the gas subsidy. They made sacrifices during the COVID. But sir, I think it is imperative that the government takes resolute action, particularly on the supply side, to tame inflation. Sir, the tax burden on petroleum product needs to be rolled back. Sir, MSP, we have time and again, my party Biju Janata Dal has time and again argued about the need to implement MS Swaminathan Commission on MSP, which has not been done by the government. Member, you'll have PDS has to strengthen. Sir, last time is already sir, out. 10 seconds more. PDS has to strengthen. Sir, the cartel has to be, dismantled. Competition has to be promoted. And finally, sir, we all know that we cannot have a sustainable economy. We cannot have an inclusive economy unless we take care of price rise and inflation. Thank you, sir. Thank you. उसमें कोई पॉइंट नहीं. It's not a point of order. It's not a point of order. That don't raise that. No. It's not a point. Manoj Kumar, जा. सुजीत कुमार जो कंप्लीट हो गया. मनोज जा. Sir, don't start my time. Sir, don't start my time. There is no point, sir. Please be seated. Manoj Kumar Jha ji. बैठिए बैठिए, आप आराम से बैठिए, दादा बैठिए. Sir, नहीं आप मनोज जी बोले. ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, हिंदी में ही बोलूंगा. ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, मनोज जी हिंदी ही बोलते हैं. कभी सर मेरा वक्त फिर से शुरू करिए. वैसे भी बहुत बुरा वक्त आपका चल रहा वक्त है. शुरू नहीं हुआ है. आपका वक्त शुरू नहीं हुआ. अब शुरू कीजिए. अभी तो शुरू नहीं किया. देखो टाइम. नहीं पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है. नहीं क्या क्या
पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मेरा, यहाँ पर झूम झूम के नारे लगा रहे थे कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आज चर्चा के लिए कहाँ है वो लोग? ओके, मनोज जी, नॉट यू मिस्टर शिवदासन, मनोज, आई हैव टेकन द नेम ऑफ मनोज कुमार झा, प्लीज। थैंक यू सो मच सर, वाइस चेयरमैन सर। खाके वतन तुझसे मैं शर्मिंदा हूं बहुत, महंगाई के इस मौसम में त्योहार पड़ा। माननीय उपसभापति महोदय, बहुत दिनों बाद सदन एक गंभीर विषय पे चर्चा के लिए बैठा है। इसकी गंभीरता हमारे बयान में, हमारे सरोकार में परिलक्षित होनी चाहिए। सर, एक कहानी सुनाना चाहता हूं। जैसे फिल्मों में कहते हैं ना कि ये काल्पनिक है, सर इस कहानी में कुछ भी काल्पनिक नहीं है। राइट। नहीं सर, कुछ भी काल्पनिक नहीं है, बस सुन लीजिए। सर, एक पात्र का नाम है नयन सुखलाल। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दिल्ली में काम करता है। छोटी नौकरी है, सांसदों के घर की रखवाली करता है, सिक्योरिटी गार्ड है। सर, can I have uninterrupted? Please. Let the members speak. Please don't disturb. सर, लोग देख रहे हैं और लोग ये देख रहे हैं कि महंगाई और रोजगार पे बात हो रही है और हम एक दूसरे को ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। सर बहरहाल, सर आई एम सिटिंग डाउन। No. Please, Siddhasan. Manoj Kumar Jha, do you want to speak? Please be seated. I have not taken your name. Mr. Siddhasan, I have not taken your name. I have taken the name of Mr. Manoj Kumar Jha. Please. Can I have I request all of you, पूरा देश देख रहा होगा कि महंगाई बेरोजगारी पे बात हो रही है और एक दूसरे का उपहास कर रहे हैं। आप गरीब का उपहास कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति का उपहास में। जी, मैं वो कह रहा था कि नयन सुखलाल अपनी पत्नी 2 बच्चों के साथ रहता है। सब सांसदों के घर की रखवाली करता है जैसे चौक पे होता है। 20,000 की तनख्वाह है, 10 से 12,000 पे वो साइन करता है, यानी मूल तनख्वाह 10 से 12,000 होती है। उसके 2 बच्चे हैं सर। अब सुन लीजिए, 4,000 रुपए घर का किराया दे रहा है। सर काटते जाइएगा 10 में, 1,200 रुपए सिलेंडर का हर महीना, 1 महीना तो लगेगा ही। खाने पे 50 गुना 2 गुना 30, 3,000 रुपए। स्कूल की फीस, 2 बच्चे हैं, 2,000। आने जाने का खर्चा नहीं जोड़ रहा हूं, आकस्मिक बीमारी को भी नहीं जोड़ रहा हूं, डीजल और पेट्रोल भी नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि उसके पास सिर्फ साइकिल है। सर, ये नयन सुख दिल्ली में भी है, ये कलकत्ता में भी है, बंबई में भी है, ये हमारे पटना में भी है। नयन सुख के नजरिए से महंगाई को देखिए और बेरोजगारी को देखिए, तब पता चलेगा कि हमारे सरोकार कितने संकीर्ण हैं। सर, एक विशाल पार्टी, पूरे देश में सबसे विशाल पार्टी, एक विशाल राज्य में एक विशाल बहुमत के लिए चुनाव लड़ रही थी। सर, पूरे उस प्रोसेस में कीमतें नहीं बढ़ी। पहले कहा जाता था कि बाजार कीमतें तय करता है। सर, कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि विशाल पार्टी होने के साथ साथ हृदय भी विशाल होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को रिलीफ दें। अब सर, मैं बार देख रहा हूं क्रैडल टू ग्रेव, हमारा सोशल पॉलिसी जो हमारी थी, जो हमारा संविधान कहता है, वो कहता था कि पालने से लेके कब्र तक, आपने पालने से लेके कब्र तक कोई ऐसा मसला नहीं छोड़ा है जिस पे जीएसटी ना लगी हुई हो। सर, कब्र में दाह संस्कार की लकड़ी पर तो कम से कम सुकून से आदमी जाए, दुनिया को अलविदा कहते हुए। सर, कफन का कपड़ा ओढ़ने के बाद, सर, कफन में जेब नहीं होती है सर, हम सब जानते हैं। उसकी जेब पहले ही आपने ढीली कर दी, मौत से पहले। मैं सिर्फ यह आग्रह कर रहा हूं, इस तरह के लोक सरोकार के मुद्दों पर एक चिंता सार्वजनिक होनी चाहिए, और अगर आपसे गलती हुई है तो उसको आप वापस ले लीजिए। रोल बैक करने से कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे। वैसे छोटे होने के लिए किसी भी चीज से हो सकते हैं। सर, जब इन्फ्लेशन पे मेरा एसडीडी जो था, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, मैंने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को जोड़ के दिया था। सर, मैं उस राज्य से आता हूं, आज भी मेरा 0 आवर था, एडजर्न हो गया। सर, मेरे राज्य में आपने विजुअल्स देखे होंगे अग्निपथ पे, लोगों को बड़ी चिंता हुई, मुझे भी चिंता हुई।
मेरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा भी कि हिंसा की कोई जगह नहीं, लेकिन सर हमारे यहाँ हिंसा सबसे ज्यादा क्यों हुई? आक्रोश बहुत है सर। हमारे यहाँ बच्चा सरकारी नौकरी के सपने देखता है, रेलवे, सेना, शिक्षक, सर कहीं भी कुछ है ही नहीं। हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई, हमारे राज्य को विशेष पैकेज देने की बात कही गई। सर हमारे राज्य को ना फुटबॉल बना के रख दिया गया है, उछाल के इधर उछाल के इधर। हम सिर्फ, मैंने पहले भी कहा था कि हमको आपने श्रमिक केंद्रित राज्य बना दिया है। हम सिर्फ श्रम देते रहे और आप हमको जनसाधारण ट्रेन देते रहिए ताकि हम अलग अलग राज्यों को ट्रेन से अपने श्रमिक पहुंचा सके। सर ये सरासर नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है बिहार के साथ। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, बेरोजगारी के मसले पर। मैं चूंकि महंगाई और बेरोजगारी को अलग नहीं देख सकता सर, ये संभव ही नहीं है मुझसे, और ये संभव नहीं है मेरे साथियों से भी कि दोनों को अलग अलग करके देखें, क्योंकि दोनों में ताल्लुक इतना गहरा है। सर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं छात्र, बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं। 4 साल की नौकरी पे आपने कह दिया। कमाल यह है कि वो 4 साल जिसमें से 25% वो रिटेन आप करेंगे, पता ना जाने कैसे करेंगे, उनकी 4 साल की वो नौकरी भी नहीं जोड़ी जाएगी सर। उनके पास कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई पेंशन नहीं। तो क्या हमने सोशल सिक्योरिटी के पूरे सरोकार को ध्वस्त करने का निर्णय लिया? सर रहम करना चाहिए, सरकारों का काम है, रहम करो। मैं जानता हूं आप चुनाव जीतते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप चुनाव जीतते रहिए, लेकिन साहब दिल भी जीतिए। मैं बोलिए, आपका सर मैं खत्म हो रहा है। एक शब्द महंगाई से अलग नहीं बोला है। और अगर मैं ये कहना चाहता था सर कि आप कहते हैं कि आपको मैंडेट मिला, मैं मानता हूं ना, हमें नहीं मिला, आप चुनाव जीते, लेकिन इसका मतलब क्या है सर? वो मैंडेट लाइसेंस है कि आप ब्रूटलाइज कर दें लोगों को, उनके सरोकारों को। सर कोई भी मैंडेट आखिरी नहीं होता है, कभी ना कभी उसका एक्सपायरी डेट आता है। इशू पर मैं कल लोकसभा के एक सदन में, लोकसभा के हमारे सदन में, दूसरे सदन में एक शब्द का प्रयोग किया गया, फ्री फंड में। सर इस सदन में मैंने कई दफा कहा और मुझे भाजपा के मित्रों ने बाहर कहा, अंदर कहा कि आपने सही कहा है, फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर मेरे समक्ष, मैं आपके समक्ष रखता हूं, पढ़ूंगा नहीं सर आर्टिकल 38 एंड 39। अगर उस व्यक्ति विशेष के बयान को 38, 39 के नजरिए से देखिएगा तो आप में से कोई भी उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। आप सब कहेंगे आपकी सरकार ने 2-4 जगह बैनर बदले हैं, मुफ्त की जगह निःशुल्क लिखे हैं, निःशुल्क लिखना शुरू करिए, ये गरिमा को बचाने वाला काम होगा। ये फ्री में दे रहे हैं, फ्री फंड का दे रहे हैं। सर आप महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले भी सदन में जिन्होंने अभी आपत्ति की है, उन्होंने भी, उनके तमाम दोस्तों ने भी कहा था इस शब्द का। सर 1-2 मिनट और लूंगा, क्योंकि नहीं, मेरा पूरा रिदम बिगड़ा था सर। मैं तेल, सर बस 1-2 मिनट दे दीजिए। मैंने तेल की बात नहीं की। मुझे पता है कौशिक बासु ने खुद कहा कि क्रूड ऑयल प्राइस जो इंटरनेशनल का राइज है, उससे हमारी महंगाई का कोई, ये लोकल फ्यूल प्रेशराइज से ड्रिवन है सर। और इसलिए मैं कहता हूं, एक आखिरी टिप्पणी करके, इन्फ्लेशन इन हेल्थ केयर पर सर चर्चा होनी चाहिए। इन्फ्लेशन की वजह से ओल्ड एज पीपल को, मैंने नयन सुख की आपको कहानी सुनाई, हमारे आपके मित्रों में कई नयन सुख हैं। अगर कोई आकस्मिक बीमारी आ गई, अपनी वहां भी जीएसटी लगा दिया, आदमी के आमदनी का सेविंग्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, फिर भी हम जय जयकार करने को भी तैयार हैं, बशर्ते कि आपकी नीतियों में तब्दीलियां हों। सर एक आखिरी चीज कह करके बात खत्म करूंगा। कल माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने, सर एक मिनट दे दीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से ये किताब भी सोचा था कि वित्त मंत्री मैडम को बताऊंगा, MOS हैं सर, ये है मार्क्स कैपिटल एंड द मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक रीजन। यहां तो मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक रीजन की बात हो रही है, वी हैव एंटर्ड मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक अनरीजन। और उसमें किंग जॉन से उन्होंने एक उद्धृत किया है, खत्म करता हूं सर। एंड से हियर इज नो सिन बट टू बी रिच, एंड बीइंग रिच माय वर्च्यू देन शैल बी टू से देयर इज नो वाइस बट बेगरी,
Since kings break faith upon commodity, gain he be my lord, for I worship thee. So, माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने कल कहा, और खत्म कर रहा हूं यहीं, उन्होंने कहा कि अश्योर करती हूं, मैं उनके अश्योरेंस पे भरोसा करना चाहता हूं। धन्यवाद। मैं सर धन्यवाद नहीं, अभी और बड़ा धन्यवाद कहिएगा आप। मैं भरोसा करना चाहता हूं, धन्यवाद। मतलब आप खत्म करने का धन्यवाद। राजनीतिक विरोध के बावजूद मैं सिर्फ यही कहूंगा, मिर्जा गालिब को साइड करते हुए, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ न जाना कि खुशी से मर न जाते, गैर एतबार होता। जय हिंद सर। धन्यवाद। Honorable MOS will read out that Sir, I have made the BAC minutes will be read out by the Honorable MOS. I have to make an announcement regarding the BAC. I have to inform members that a meeting of the Business Advisory Committee was held today, the 2nd of August 2022, allowed time for government legislative business. The meeting was attended by some members of the BAC and special invitees. As there was no quorum, time for the government legislative business was tentatively allotted as follows. 1. Consideration passing of the following bills after their introduction, consideration passing by Lok Sabha. That is 1. The New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill 2022, half an hour. The Energy Conservation Amendment Bill 2022, 4 hours. The committee also recommended that the House may sit beyond 6 p.m. as and when necessary for the transaction of government legislative and other business. If the House agrees the recommendations of the committee with regard to time allotment to the bills and sitting beyond 6 p.m. to transact the business before the House may be accepted. Thank you. The sense of the House. Now, Sri Ramnath Thakur ji. आदरणीय पीठाधीश महोदय, आपने अल्पकालीन महंगाई पर चर्चा करने का समय दिया। मैं अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से आपको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बधाई देना चाहता हूं कि 16 रोजों के बाद महंगाई पर चर्चा के लिए हाउस नहीं चला। सरकार को मैं बधाई देता हूं और विरोधी पक्षों को भी बधाई देता हूं कि आपस में मिल करके आज चर्चा करने का समय दिया। उपसभापति महोदय, मैं समाजवादी विचार का आदमी हूं। विरोधी पक्ष के जितने वक्ता बोले, मैं उन्हें सम्मान करता हूं और दिल में उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, लेकिन महंगाई के रोकने के लिए जो सुझाव होने चाहिए, किसी माननीय सदस्यों ने नहीं सुझाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था लोकसभा में कि जो सरकार महंगाई नहीं रोक पाती हो, नहीं घटा पाती हो, लेकिन जो दाम हैं जो निश्चित है उसको तो बांधने का काम करना चाहिए। मेरा एक सुझाव है, दाम बांधो नीति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चलाया था, उस नीति को लागू होना चाहिए। मैं चावल, दाल, तेल, सब्जी पर जीएसटी लगा। मेरा सुझाव है कि विलासिता के सामानों पर आप जीएसटी लगाइए, लेकिन जो गरीब के लिए सब्जी, दाल, तेल, आटा, इस पर आप न लगाइए। मेरा सुझाव। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं
कि एक सर्वेक्षण करावे सरकार। महंगाई की जो चर्चा हो रही है, 16 रोजों तक जो सदन नहीं चला, इस सदन का तो कुछ मैसेज जाना चाहिए बाहर। सरकार ये सर्वेक्षण करावे, जांच करावे, सीमेंट बिक्री में कमी आई कि नहीं आई, गिट्टी के बिक्री में कमी आई कि नहीं आई, बालू के बिक्री में कमी आई कि नहीं कमी आई, मजदूरों के मजदूरी में कमी आई कि नहीं आई, कपड़े की दुकान कितने बंद हुए, दवा की दुकानें कितनी बंद हुई, सैलून कितने बंद हुए, होटल कितने बंद हुए, इसका एक आकलन होना चाहिए सरकार से और यह निर्णय होना चाहिए कि महंगाई का एक कारण है। मैं सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में निःशुल्क बिना काम के अनाज दे रही है। यूक्रेन की लड़ाई हुई, वहां से जो लोग आए, नौजवान आए, सब सरकार ने उनको बुलाया। बुलाने का खर्च आप देख लीजिए। एक परिवार में अब आने वाला है दिवाली, दशहरा, छठ, परिवार के बच्चे कहते हैं कि हमको दशहरा में अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए, पत्नी कहती है कि हमको अच्छी साड़ी मिलनी चाहिए, छठ पर्व में जो सामग्रियां हैं हमको अच्छे मिलने चाहिए। क्या उस गरीब परिवार के गार्जियन सब पूर्ति कर देते हैं? नहीं करते, नहीं करते हैं। इसलिए महंगाई, गरीब की सोच रखने वाले सब मिलकर एक उपाय ढूंढना चाहिए और इससे निजात देना चाहिए। गरीबों में ऐसा मैसेज जाए कि हमारे लिए सोचने वाला कोई है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बनना चाहिए। ठाकुर जी, बनना चाहिए। ठाकुर जी आप समाप्त कीजिए। इसलिए आपका समय, मैं क्या कहा साहब? आपका समय खत्म, समाप्त हो चुका है। आप समाप्त कीजिए, आप भाषण समाप्त कीजिए। मैं आपके आदेश का पालन करता हूं और इन शब्दों के साथ कि आइए हम सब मिलके शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित के सोचने वाले लोग एकजुट हों और सरकार उसमें सहयोग करे। शोषित पर अन्याय नहीं हो, गरीब पर अन्याय नहीं हो, इसके बारे में सोचे, समझे। और मैं अपने दिल से ये कहना चाहता हूं कि दाम बढ़ना चाहिए, महंगाई आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्रीमती महुआ माझी, प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज मेरा मेडन स्पीच है
इसलिए मैं अनुरोध करूंगी, विनम्र अनुरोध कि मुझे कुछ अतिरिक्त समय मुहैया कराया जाए। मैं धरती आबा बिरसा मुंडा के उस झारखंड से आई हूँ जिस धरती के नीचे अकूत खनिज संपदा है, कोयला, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट और न जाने क्या क्या पूरे देश को सप्लाई करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस धरती के ठीक ऊपर रहने वाले लोग बहुत गरीब हैं, अत्यंत ही गरीब। आज हम अपने माननीय राष्ट्रपति को लेकर गर्वान्वित महसूस करते हैं। आज पूरा आदिवासी समाज आपकी तरफ देख रहा है, आशा से, बहुत ज़्यादा आशा से कि निश्चित रूप से उनकी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन माननीय महोदय, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इस जीएसटी और महंगाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई होगा, जिसका दुष्प्रभाव उन पर पड़ेगा, वो आदिवासी समाज ही है, जिसमें सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और इस जैसे जितने भी गरीब और आदिवासी बहुल प्रदेश हैं, वहाँ की तमाम महिलाओं पर, तमाम बच्चों पर, तमाम लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं झारखंड की बात करूं, चूंकि मैं झारखंड में महिला आयोग की अध्यक्ष रही हूं, विमेन कमीशन की चेयरपर्सन, और कई सालों तक काम करने का अवसर मिला, तो जो समस्याएं हैं उसे मैंने ग्रास रूट लेवल पर देखा है, बहुत करीब से देखा है और उसको मैंने समझने की कोशिश की है। झारखंड और उस जैसे प्रदेशों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो माइग्रेशन की समस्या है। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर कितनी बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर। पन्नालाल जैसे ट्रैफिकर्स जो अभी जेल में हैं, उन्होंने सिर्फ झारखंड से 15,000 लड़कियों की तस्करी की थी। वो लड़कियां क्यों अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर दिल्ली में, असम में, हरियाणा में और न जाने कहां, पंजाब में जाकर वो अपने घर से दूर, परिवार से दूर वहां जाकर मेहनत करती हैं 2 पैसों के लिए, क्योंकि वहां बहुत ज़्यादा गरीबी है। और उसमें अगर उस पर महंगाई की मार पड़े तो आप समझ सकते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। और वहाँ जब उनको ट्रैफिकर्स ले जाते हैं तो उनको जो काम बोल कर जाते हैं वही नहीं, बल्कि उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह का शोषण होता है। इसकी पीड़ा आप सभी जानते हैं और इसका प्रभाव हमारे देश के तमाम आदिवासी बहुल क्षेत्रों में होता है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने सारे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, तरह तरह के आदिवासी। हमारे झारखंड में 32 जनजातियाँ हैं, जो कि उसमें से प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, 7 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। उनकी जीवन शैली, वो इतने गरीब हैं, अभी तक उनकी स्थिति नहीं सुधरी है। मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो अनसेफ माइग्रेशन है उससे सिर्फ महिलाएं ही नहीं या पुरुष ही नहीं बल्कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात करते हैं, किताबें देने की बात करते हैं, हम उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र में मिड डे मील की बात करते हैं। लेकिन आपको पता है कि कितने बच्चे वहाँ जाते हैं? वो अपने माता पिता के साथ दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। उनका भविष्य अंधकार में है, उनका भविष्य कौन देखेगा? ये सारी चीज़ें गरीबी की वजह से है, महंगाई की वजह से है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक व्यक्ति अपना घर, अपना गांव छोड़कर क्यों जाता है। आपको मैं बता दूं कि हमारा पठारी इलाका है जहां पर बारिश के दिनों में सिर्फ खेती होती है, बाकी महीनों में वहां पर कोई भी आजीविका का साधन नहीं है। दुर्गम क्षेत्र हैं, वो शहर आ नहीं सकते और आना भी और रहना भी बहुत महंगा होता है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। वहाँ पर जाकर वो मजबूरी में काम करते हैं और यहाँ पर जो उनको ले जाया जाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में, जहाँ पर उनको पता नहीं होता है कि कौन उनके मालिक हैं। मानिए ये मेरा मेडन स्पीच है जी। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके मालिक कौन है। वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे ही घूमते रहते हैं। जब उनकी दुर्घटना होती है तो उनको पता नहीं होता है कि कौन उनकी देखरेख करेगा। उनके लिए कोई बीमा पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है और ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। आपको पता होगा कि वहाँ डायन प्रथा है। डायन प्रथा के पीछे की वजह भी मैंने देखी है। डायन कौन घोषित करता है? जिसमें कि महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है, उनके नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, बाल नोच दिए जाते हैं, उनको मैला पिलाया जाता है, उनको पूरे गांव में नंगा करके घुमाया जाता है। डायन करार देते हैं ओझा गुनी भुगताइन। आखिर क्यों लोग ओझा गुनी की बात सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि गरीबी की वजह से वो जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, फीस नहीं दे सकते, तो वो जाते हैं ओझा गुनी के पास झाड़ फूँक करवाने के लिए। और झाड़ फूँक करके जब कोई बीमारी ठीक नहीं होती तो तुरंत वो गांव की किसी ऐसी महिला को डायन घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि ये बीमारियों की वजह, इनकी मौत की वजह ये डायन है। और यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है
कि डायन उन लोगों को ज्यादा बोला जाता है जो कि कुपोषण की वजह से कुबड़ी हो गई हों, जिनके खाल काले पड़ गए हों, चमड़े सिकुड़ गए हों, वो विभत्स देखने में हो जाती है। ऐसी महिलाओं को डायन करार देना बहुत आसान होता है। और ऐसे लोगों को, ऐसे जहाँ पे गरीब लोग हैं, उनके यहाँ महंगाई को बढ़ाना कितना अन्याय है माननीय, ये जरा सोचने की बात है। आपको पता होगा कि बच्चे आजकल अपराधी हो रहे हैं, नक्सली गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। मिजमा जी, हमारे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज मेरा देखिए 6 साल में एक बार मुझे ये मौका मिला है। हाँ नहीं, 6 साल में एक बार नहीं, आपको और मौका मिलेगा। बात ऐसा है, आज मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी। डोंट, प्लीज डोंट, एक बार सर, प्लीज डोंट, when sir is speaking, don't cross talk, don't. आज से मेडन स्पीच है और से मेडन स्पीच का आज समय 1-2 मिनट हम तो बढ़ा देंगे, लेकिन मेडन नो डोंट वरी, वॉट एवर सर इज सेइंग यू हैव टू लिसन, इट्स नॉट रॉन्ग, डोंट इवेलुएट। तो आपको 1-2 मिनट हम दे देंगे, लेकिन आज से का 15 मिनट अगर हम करेंगे तो आज इसको फिनिश नहीं कर पाएंगे। और बड़ी पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस है, इनके स्पीकर्स है। हाँ, आप 2 मिनट में खत्म कीजिए, 2 मिनट बस। बच्चे अपराधी होते हैं, नक्सली गतिविधियों में शामिल होते हैं क्योंकि वो गरीब हैं। उनको अपनी सब्जियों को लेकर अगर वो बाजार जाएंगे तो पेट्रोल के पैसे नहीं है उनके पास, ऊपर से ये महंगाई। अब सभी समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार इतना ज़्यादा खाद्यान्न पर टैक्स पड़ा है या उसकी कीमत बढ़ी है। और कई आदिम जनजातियां हैं जो कि जवान नहीं होते, वो सिर्फ बचपन से सीधे बूढ़े हो जाते हैं। 30-40 साल के बच्चे व्यक्ति को आप देखेंगे तो लगेगा कि वो कितने बूढ़े हो गए हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में एक क्षेत्र के विकास की कहानी दूसरे क्षेत्र के विनाश की कहानी पर आधारित होती है। हमारे यहाँ से जो खनन होता है, कोयला, लोहा, बॉक्साइट और तमाम यूरेनियम वगैरह का, उसका दुष्प्रभाव वहाँ के लोगों पर पड़ता है, जिसके लिए उनको अतिरिक्त पोषक खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है। महंगाई की मार से वो नहीं ले पाते। लघु वनोपज, जिन पर आदिवासियों का अधिकार है, उसको भी वन अधिनियम के अंतर्गत लाकर उसके तरह तरह का टॉर्चर होता है, उससे भी वो नहीं ले पाते। जैसे आपको पता होगा कि खुखरी, रुगड़ा, घोंगा, इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन होते हैं, लेकिन जंगल में भी जाना उनका कई जगह प्रतिबंधित हो गया है। पोषक आहार उनके मिलता नहीं है और इसकी वजह से उनका हेल्थ दिन पर दिन डाउन होता जाता है। एक तरफ आपको मैं बता दूं कि कोयला, जहां वहां से कोयला मिलता है, लेकिन रॉयल्टी के पैसे 1,36,000 करोड़ जो बकाया है केंद्र सरकार के कोल कंपनियों की तरफ, वो नहीं देती है केंद्र सरकार। और ऊपर से डीवीसी का 8,000 करोड़ खाली वसूलने के लिए हमारी बिजली काट दी जाती है। धन्यवाद महोदय, बस थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी। नहीं, अब आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, लेट मी जस्ट रिपीट, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन एंड कॉल अटेंशन, इसमें मेडन स्पीच नहीं होता है। आप बाद में बोलिएगा, आपको बाद में मौका दिया जाएगा। अब आप खत्म, अब समाप्त कीजिए। मेडन स्पीच का मौका मिलेगा? नहीं, हाँ, बाद में मिलेगा, बाद में मिलेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं, कॉल अटेंशन में नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ प्लीज। हाँ, अब आप समाप्त कीजिए प्लीज। देखिए, एक तरफ हम जंगल काटने की बात करते हैं तो उज्ज्वला योजना के तहत आदिवासियों को जो गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया गया, वो अब कबाड़ खाने में पड़ा हुआ है। इतना महंगा हो गया पेट्रोल, गैस की कीमतें कि वो खरीद नहीं सकते। महोदय, मैं सच कह रही हूँ और सच के बारे में प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा था, टेलिंग द ट्रूथ इज ऑलवेज रिवॉल्यूशनरी। और मुझे लगता है कि सोशल रिवोल्ट इन महंगाई के कारण से ही हो सकता है। इसका दूर दूर तक असर पड़ता है और इसके परिणाम बहुत भयानक भी हो सकते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों और महाजनों के खिलाफ कई क्रांतियां हुई हैं। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, महिलाएं भी बहुत सारी थी, जिसमें सिंगी दई, कैली दई, फूल। ठीक है, धन्यवाद। मैं क्रांतियां की। द नेक्स्ट स्पीकर, मैं दूसरे स्पीकर बुला रहा हूँ। द नेक्स्ट स्पीकर इज, ब्रिटिश पीरियड में अकाल हुआ था बंगाल में, भयानक अकाल। बाद में बोल लीजिए, समय मिलेगा आपको। अमर्त्य सेन जैसे नोबेल लॉरिएट इकोनॉमिक्स ने कहा था कि वो मैन मेड अकाल था ब्रिटिश शासक के गलत नीतियों की वजह से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वही बात यहाँ दोहराई जा रही है। आज श्रीलंका की हालत है, वो हालत नेक्स्ट स्पीकर इज अब्दुल वहाब। अगर ये कीमत कम नहीं की जाएगी तो अब्दुल वहाब दिया जाए। और मुझे लगता है नॉट प्रेजेंट। वीरेंद्र प्रसाद बसिया, हमारे राज्य में जिस तरह से ऑपरेशन, आप शुरू कीजिए मिस्टर बसिया।
हम गरीबों के लिए पैसे नहीं है। Are you yielding? Chairman, sir, I am raising a point of order. My Under what rule? No, point of order. Under what rule? Procedure, regarding procedure. Regarding, we are having four members, four members in the party, but we are not at all calling. I have given so many times and requesting, my name is not calling. You come in the chamber, it will be discussed, or you show the rule. Your name is there, your name is there. Absolutely. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir, for allowing me to take part in the today's discussion, short duration discussion, rice on essential commodities, sir. Subject is very important. Last 16 days, House was the past the time without discussing any bill, any issue, as assured by the leader of the House, Parliamentary Affairs Minister, with consultation of the opposition, to the time has allotted for discuss this topic, sir. Sir, world economy to the passing through a very critical time, sir. Due to the corona, due to the Ukraine-Russian war, world economy to the passing through a very critical way, sir. The growth percentage of superpower country like USA today is declining, sir. The banking industry, China, to the facing serious threat due to the no payment paid by the builders, real estate businessmen, sir. In this critical time, due to the corona, due to the Ukraine war, inflation percentage is 7% is our country, sir. No doubt, sir, this is high, but sir, in this critical time, world is passing through that critical economic times due to the Ukraine war and due to the corona. This 7% inflation, although it is high, it is, I must compliment government, at least in this critical time, they have maintained it successfully, sir. Sir, we remember one thing, sir. One ration card under the leadership of Narendra Modi government had issued in our country, sir. One ration card is applicable in entire India, sir. Sir, it is really helpful to the migrant worker. During the corona time, we have seen suffering of migrant worker. What problem they have faced? They are working hundreds of kilometers without food, without water. But after one ration card, one nation, one ration card, after this theory introduced by, this scheme introduced by the Narendra Modi government, the migrant worker they get benefit, and any card holder, he may be from Kerala, he is moving to the Assam, he will get food in the state, sir. I must give compliments to the government, sir. Sir, ethical people, sir, government given free food, sir. This is another wonderful job done by our government, sir.
Sir, I like to say one thing, sir, because my time is very short, sir. The inflation 7% due to the... Make your last point. Sir, inflation 7% due to the food inflation and petroleum price hike, sir. Now enter world. Food inflation is declining. Not in enter every world. Food inflation is declining today, sir. And hopefully we hope very soon under the leadership of this government, inflation, food inflation in our country coming down very soon, sir. Sir, we have a no common tax structure for petroleum production. For example, for diesel, for petrol. No same price is applicable, sir, every part of India. In Delhi, rate is different. In Maharashtra, rate is different. In Kerala, rate is different. It is the only one reason, sir, we have no common tax structure, sir. I like to request Honorable Finance Minister kindly introduce a common tax structure all over India to control the petrol price, diesel price in our, and there should be common price in every part of the India, sir. Thank you. Sir, one more, sir. GST. I have one request for this house, for you, sir, to the GST Council, sir. Small tree grower in Assam and northeastern region, sir, you especially, it is known to you, sir, play very important role for socio-economical development of our region, sir. Small tree grower, they are unemployed, sir. But opening some small tree garden, they survive. They get their food, they got their house, sir. Because they are surviving through the small tree growing, sir. So I like to request GST Council kindly consider. Thank you. To withdraw GST against the seal. The next speaker is small tree grower, sir. Sir, with this work, sir, I hope, sir, government to seriously considering, especially the small tree growers of the northeastern region, government is going to withdraw the GST from the tree growers, small tree growers, sir. Thank you, thank you. Dr. Sudhanshu Trivedi. माननीय आज हम सब महंगाई के इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए यहां एकत्र हैं। विगत कई दिनों के उग्र वाक युद्ध के बाद आज यह चर्चा हो रही है और चर्चा के दौरान भी हमने देखा कि विपक्ष के कई सदस्यों का बड़ा आक्रोश, आवेग और नयन सुख की कथा सभी चीजें व्यक्त की गई। परंतु अभी कुछ देर पूर्व जो एक दृश्य सदन में दिखा था, जब ऐसा लगा था कि वो नयन को सुख देने वाला नहीं था कि जब विपक्ष की लगभग सारी सीटें खाली नजर आ रही थीं, परंतु अच्छा हुआ कि विपक्ष ने अपनी जगह पहचान ली और समय रहते हुए आंशिक उसकी भरपाई कर दी। अब मैं यह कहना चाहता हूं, विषय पे आ रहा हूं, विषय सुनने वालों के मन में विषय के प्रति कितना अगाध ये स्नेह था, ये उनके उस कार्य से दिख रहा था। अब मैं विषय पे आता हूं। विषय बहुत व्यापक है, महंगाई का विषय बहुत व्यापक है, इसलिए इसको गंभीरता से और व्यापकता से समझने की आवश्यकता है। आज यह बताया जा रहा है कि महंगाई बहुत गंभीर स्थिति में है, परंतु मैं अभी याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 का लोकसभा चुनाव एकमात्र ऐसा चुनाव था जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं था, और 2004 का लोकसभा चुनाव छोड़ दें, अन्यथा हर चुनाव में महंगाई मुद्दा होता था। आज की महंगाई की हम बात करें तो भारत में रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो अगस्त के महीने की है वो 7.01% है। अब यदि हमें महंगाई को पूरी तरह समझना है तो थोड़ा इसको व्यापक रूप से समझना होगा। मैं अपने विपक्ष के सदस्यों से कहूंगा कि वो जरा इस बात पर मुलाहिजा फरमाएंगे कि इस समय विश्व में महंगाई की दर में इटली में 7.9% है, जर्मनी में 7.5% है, कनाडा में 8.1% है, यूरोपियन यूनियन में 8.9% है, यूएन में 9. सोर्स के साथ बोलूंगा, बिल्कुल जर्मनी में, यूएस में 9.1%, ब्रिटेन में 9.4%, Why are you wasting your energies? स्पेन में 10.8%. Sit down. What is the source of your raising the issue? Right.
No, please. No, it will not go on record. You are wasting time. We have hardly 36 minutes time. And you are... Let me complete the sentence, sir. And चाइना में 2.5%. चाइना में इसलिए कम है क्योंकि उनके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो क्राइटेरिया है, जिसमें उन्होंने फूड और क्लोथिंग को ज्यादा महत्व दे रखा है, एंड द सोर्स इज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात को दर्ज किया है। अब आप आइए महंगाई की दर। आज ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि पूरे दुनिया के देशों में महंगाई की दर क्या है, जाके चेक कर लीजिए। भारत की महंगाई की दर 7% है। दुनिया में 63 देश ऐसे हैं जहां महंगाई की दर 10% से ऊपर है। इतना ही नहीं है, कुछ देशों में 50%, 100% और कुछ देशों में 200% भी महंगाई की रेट है। इसके बावजूद हमारे देश में 7% महंगाई की रेट है। महंगाई है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, परंतु अब मैं आपको और भी सोर्स के साथ बताता हूं। समस्या सिर्फ इतनी ही व्यापक नहीं है, इसकी व्यापकता पे ध्यान दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, उसमें पहली बार अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला इन ऑर्डर टू कर्टेल इन्फ्लेशन, एंड द सोर्स इज 23 नवंबर 2021 व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज। कभी बताइए आपको ज्ञात इतिहास में ध्यान हो, बहुत बड़े बड़े विद्वान ज्ञाता लोग हैं हमारे विपक्ष में, जब उन्हें याद हो कि अमेरिका ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला और उस खोलने के बाद कितना अंतर आया है। अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज 26 जुलाई 2022, वो ये कहती है कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोलने के बाद भी 40 सेंट पर गैलन ही कम हुआ है। यानी समस्या कितनी व्यापक और गहरी है, उसे समझने के लिए यह आवश्यकता। बिल्कुल साहब टू दी पॉइंट बोल रहे हैं, जब आप बात करने का प्रयास करते हैं तो समस्या कितनी व्यापक है उसको समझने का प्रयास करिए। समस्या, सब्जेक्ट है महंगाई, और महंगाई की बात मैं यह भी कह रहा हूं, हमारे विपक्ष के सबसे प्रमुख नेता ने जिस धरती से जाके ज्ञान दिया था, उस धरती पे 9.4% है ब्रिटेन में। ये बताइए वहां से जाके महंगाई की बात की थी। हम विषय पे बात कर रहे हैं, और इसलिए विषय पे बात कर रहे हैं क्योंकि आपने वहीं से जाकर महंगाई के बारे में सबसे पहले बताया। अब मैं यह भी बताता हूं कि विश्व में महंगाई की समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, हम सब ने, जी हम बिल्कुल बता रहे हैं, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। दुनिया में ही, देश में नहीं, दुनिया में भी क्या स्थिति है समझने की जरूरत है। आप हमारे मकान की मजबूती की बात कर रहे हैं तो जलजले पर भी नजर डालिए। और चाइना के अंदर भी मीडिया में यह रिपोर्ट है कि कितने बैंक जिन्होंने अपना डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट, उसका तो लोकसभा में वित्त मंत्री महोदया ने विवरण दिया है। यूनान प्रोविंस में यह भी रिपोर्ट है कि बैंकों के बाहर टैंक लगाने पड़े। यानी यह स्थिति है विश्व में चारों तरफ अर्थव्यवस्था की। और समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, आज यह कहा जा रहा है कि हम लोग मंदी की तरफ जा रहे हैं। महंगाई से बड़ा विषय सभापति महोदय मंदी का है, और इस पर फिर सोर्स के साथ बोल रहा हूं। ब्लूमबर्ग की पूरी दुनिया के भारत सहित देशों के बारे में मंदी की रिपोर्ट भी उपलब्ध है, जिसके अनुसार इस समय अमेरिका के मंदी में जाने की संभावना है 38%, यूरोपियन यूनियन की है 50%, चीन की है 20%, ऑस्ट्रेलिया की है 20%, और साउथ कोरिया और जापान की है 25%। अरे सुनिए तो, सभापति महोदय, देखिए मैं ये चाहूंगा कि सब लोग शांति से सुने तो बेहतर बात रहती है। सभी के लिए यही मेरा सूचना है। अब मैं आ रहा हूं के बारे में कमेंट मत करिए। अब ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था को मंदी में जाने की संभावना है 0%। विषय पे आ रहा हूं, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, मैं क्यों विषय बता रहा था। अरे हमारी हालत तो वो है कि समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज पलटे गिरे जा रहे हैं, हमारा कैप्टन कितनी सावधानी के साथ जहाज को लेकर आगे जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि अगल बगल के पलटते जहाजों को मत देखो, हमारे जहाज पे आते हुए हिचकोले को देखो। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो इस प्रकार की परिस्थितियों के आदी रहे हैं। विपक्ष चाहे जितनी भी कांटे बिछाता रहे और कितनी विपरीत परिस्थितियां हो, मैं उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। तो इस प्रतिकूल धारा में हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे ले जा रहे हैं। अब अगली बात आती है, डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू कम हो रही है।
डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू क्यों कम हो रही है और वास्तविकता में रुपए की स्थिति क्या है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय प्रकाश जी ने इस विषय का थोड़ा सा जिक्र किया कि चाइना की करेंसी के मुकाबले रुपया स्थिर है, येन के मुकाबले रुपया बेहतर हुआ है, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले स्थिर है और यूरो के मुकाबले थोड़ा इंप्रूव किया है। तो सिर्फ अमेरिका केंद्रित मानसिकता से थोड़ा बाहर आइए और उसके बाद भी आपको दिखेगा कि वास्तविकता क्या है। और अमेरिका में भी डॉलर के मुकाबले हमारी रुपए की वैल्यू क्यों कम हो रही है, क्योंकि अमेरिका अपने डॉलर के मूल्य बढ़ा रहा है। मैं फिर कोट कर रहा हूं, 27 जुलाई 2022 सीएनबीसी की रिलीज, वो कहता है फेडरल रिजर्व hike the interest rate by 0.7% points for second consecutive term in order to contain inflation। वो अपनी महंगाई को बचाने के लिए लगातार दूसरी बार 0.7% पॉइंट की बढ़ोतरी कर रहे हैं। इस कारण से डॉलर के मूल्य में आपको यह अंतर नजर आ रहा है। इसीलिए येन हो या यूरो हो या स्टर्लिंग हो, वो अंतर नहीं नजर आता है। अब भारत में हमने क्या किया, मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला जी जो काम कर रही हैं, हमारी स्थिति क्यों बेहतर है उसका भी मैं कारण बताना चाहता हूं। कारण यह है कि हमारे यहां महंगाई और विकास दर दोनों संतुलित इसलिए हैं कि हम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो सबसे कम है। बाकी सभी अर्थव्यवस्थाओं का डेट टू जीडीपी रेशियो 100% से ऊपर। और इतना ही नहीं, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जरूरी था कि हमारे पूरी अर्थव्यवस्था की मजबूत आधार हो, और उस मजबूत आधार के लिए द इकोनॉमिस्ट जिन्होंने कोट करते हुए भारत के बारे में लिखा है कि 5 प्रमुख कारण रहे जिसकी वजह से भारत इस परिस्थिति में भी महंगाई और रिसेशन के दौर में नहीं जा पा रहा है। पहला कारण उन्होंने बताया कि सिंगल मार्केट हमने क्रिएट की, यानी जीएसटी। दूसरा बताया गया कि एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री बट विद अ शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, और सोलर एनर्जी से लेकर हाइड्रोजन एनर्जी तक के लिए क्या हो रहा है वो हमें सबको पता है। फिर मूविंग फ्रॉम सप्लाई चेन्स अवे फ्रॉम चाइना, क्योंकि आज चीन के अंदर जो हो रहा है उस कारण से तमाम प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन पे प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया के अन्य देश प्रभावित हो रहे हैं, परंतु भारत ने उससे अपने को बचाने में सफलता हासिल की है। एंड द प्रोमिनेंट यूज ऑफ आईटी, जो हमने आईटी का यूज किया है, जनधन मोबाइल, इस कारण से भी काफी हद तक गतिशीलता बनी हुई है। एंड द हाई वेलफेयर सोसाइटी, इस विपरीत परिस्थितियों में गरीबों को किस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं चलानी चाहिए, वो उस कारण से भी हमारी स्थिति अच्छी है। और इसीलिए जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस की रैंक में हमारी रैंक बढ़ने के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि भारत अब हो सकता है कि जर्मनी और कनाडा के बाद सबसे बेहतर इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस की दृष्टि से सेकंड रैंक पर पहुंचने की संभावना है। और इस कारण से क्या है, जी आपका टाइम समाप्त हो रहा है। मुझे तो 15 मिनट बताया गया, बताया हमको 10 मिनट्स इसमें दिया। तो मैं अपने प्लीज अच्छा, अब उसके बाद भी मैं बताना चाहता हूं, मैं 2-3 मिनट और लूंगा। 2-3 मिनट नहीं है, 1 मिनट, 5 मिनट देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर सबका टाइम एक्सेप्ट बीजेपी एंड कांग्रेस ऑलमोस्ट सबका समय समाप्त हो चुका है। कुछ पार्टी ने सुबह नाम नहीं दे पाया, वो लोग अभी नाम दे रहे, तो इसको 1-1 मिनट दियो तो भी उसमें में समय लगेगा। हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने समय से पहले समाप्त कर दिया। ऐसे नहीं, मैं तो मेरा सामने है इसे। खैर, उसके बाद भी मैं कहना चाहता हूं, मैं जल्दी समाप्त करने का प्रयास करता हूं सर। उसके बाद भी हमारा फॉरेन, आप समर्थमान है, प्रयास करने की जरूरत नहीं जी। देखिए, उसके बाद भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस समय ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसके बावजूद, जबकि यह भी यथार्थ है कि कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार कर रही, राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं। जैसे नंबर 1, 80 करोड़ लोगों को अनाज देना, नंबर 2, सबको मुफ्त टीका लगवाना, नंबर 3, चाइना के सीमा के ऊपर भारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, वहां पे कॉस्ट कई गुना ज्यादा आती है सामान्य उससे। इसलिए अब मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप पूरी तरीके से एनालिसिस करना चाहें घर के अंदर भी, तो हम यह भी बताना चाहेंगे कि इस समय कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी की परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, जिसमें तेलंगाना है, उसका 9.4% है। एडेलविस सोर्स है इसका, मैं अपने विपक्षी सदस्यों के लिए बता देना चाहता हूं। और बंगाल का 8.27% है।
राजस्थान का 7.36% है। तो हम विराट दृष्टि से देखें या सूक्ष्म दृष्टि से देखें, हमें दोनों दृष्टि से यह समस्या समझ में आ रही है। परंतु मैं यह भी बताना चाहता हूं कि महंगाई की जब बात होती है सभापति महोदय, तो सिर्फ पिछली सरकार के जमाने की बातें नहीं बताई जाती। हम लोगों से कहा जाता है, आज तो यूट्यूब पे खूब अवेलेबल है लोगों के वीडियो, 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 50 साल की सबसे बुरी अर्थव्यवस्था। मुझे याद आता है सभापति महोदय, हम 2022 में हैं, ठीक 50 साल पहले 1972 में आज है रेट ऑफ ग्रोथ 8.5% और उस समय क्या थी -0.55%। और इतना ही नहीं था, याद करिए उस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी थी, 16%, 28% की रेट ऑफ इन्फ्लेशन। 91 में सोना गिरवी रखा गया, कहते हैं उससे बुरी स्थिति थी। इसलिए मेरा मानना है कि जो बातें कही जा रही हैं वो यथार्थ पे कहें। मैं समराइज करते हुए कहना चाहूंगा, महंगाई को लेकर कितनी शिद्दत है हमारे विरोधियों में, हमें ध्यान आता है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जिक्र किया गया कि 1 साल पहले जयपुर में एक रैली की थी महंगाई के लिए, मगर उस रैली में महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के चिर युवा नेता ने 10 मिनट हिंदू बनाम हिंदुत्व पर भाषण दिया था। यानी यह दर्शाता है कि दिल में क्या है और वास्तविकता में क्या है। परंतु इससे मुझे एक बात याद आई, मुझे लगा कि उनकी सोच बहुत सही थी, क्योंकि जिस जमाने में I have to call the other person. I'm sorry. बस मैं समाप्त करता हूं, बस 2 लाइनें समाप्त कर रहा हूं। जिस जमाने में याद करिए जब उनकी सरकार थी तो रेट ऑफ ग्रोथ 2% थी, जिसको मजाक बनाया जाता था हम लोगों का, कहा जाता था ये 2% हिंदू ग्रोथ रेट है, और अब 8.5% है, ये हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है। इसलिए ये अंतर है, जिनको नहीं समझ में आता था उनसे अब तक। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि तुलनात्मक दृष्टि से बहुत सारे आंकड़े थे, उसमें ना जाते हुए, हां, शक्ति सिंह जी ने कहा ईमानदारी से स्वीकार करिए कि महंगाई है। हम कहते हैं हां बिल्कुल है जनाब, मगर इस समय चमन में बाहर का नहीं फिजा का माहौल है। इसके बावजूद हमारे माली ने जिस ढंग से सींचने का प्रयास किया है, और आपने जो किया था, ये पंक्ति कहते हुए समाप्त करता हूं, महंगाई को लेकर जो थोड़ा कष्ट हो रहा है जनता का, उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मैं कह रहा हूं, सुनिए, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का। धन्यवाद। Honorable members, please सुनिए, if you are not interested, then I will call the finance minister and close the discussion. If you are not interested, if you don't have patience to hear others, and you become patient to make running commentary, I feel sorry for the same. And there is also another wrong impression. I was watching, I was there sitting, that some people are saying our maiden speech. बीजेपी में 6 लोग कह रहे हैं हमारे मेड इन स्पीच, इसमें मेड इन स्पीच होता नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, शॉर्ट नोटिस डिस्कशन में, कार अटेंशन में मेड इन स्पीच होता नहीं, बजट डिस्कशन में और लार्जर डिस्कशन जो होता है उसमें मेड इन स्पीच होता है। मेड इन माने यू हैव एंटर्ड जस्ट नाउ, हैव पेशेंस, यू हैव अनदर 5 years and all time, so enough opportunities you will get. Please keep that in mind. Madam रजनी अशोक राव पाटिल। धन्यवाद सर, बहुत दुख के साथ मैं ये मेरा गहना पहन रही हूँ। मेरा ये स्वभाव नहीं है कि मैं ये पहनूं, लेकिन जिस मध्यम वर्गीय महिलाओं को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, This is not allowed. Then I will call other member. Then I will call other member. रंजित, जिस मध्यम वर्गीय महिलाओं को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, सर हमारा अधिकार आप अधिकार नहीं है, ये अधिकार है क्या हाउस में आके? नहीं, मैं 50 करोड़ महिलाओं को जिनका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, मध्यम वर्गीय महिलाओं को, इसके लिए मैं दर्शाना चाहती हूँ, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, नहीं दिखाएंगे। किस अधिकार से आप नहीं बोलने देते? Articles inside the house is allowed. That is very clear in the rules. There are precedents. And there are number of rulings. No, you have to remove that and speak and utilize your time. You are already lost. दिखाना चाहती हूँ महिलाओं की, दिखाना नहीं, इसको दिखाना नहीं, किसने देखा वो भी भूल जाइए। लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये महंगाई है।
प्लीज ऐसा मत कर, कोई कमेंट सर, हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी ने अभी इंटरनेशनल भाषण किया और देश और प्रदेश की भाषा उन्होंने बताई, और मैं इसीलिए थोड़ा सा व्यथित होके ये गहना पहन रही थी क्योंकि मैं इस देश की मध्यम वर्गीय महिला को रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी आपके द्वारा इस देश को और इस सभागृह को कि इस देश की जो महिला है वो आक्रोशित है, वो बहुत व्यथित है और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हमें आपके बड़े बड़े आंकड़े नहीं पता होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि किस तरह से आप बोल रहे हैं कौन सी भाषा, लेकिन हमें ये मालूम है कि आप जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश सरकार कर रही है, हम उसके लिए चंद लाइनें बताना चाहते हैं। सरकार कहती है सब चंगासी, सरकार कहती है सब चंगासी, लेकिन धरातल पर है त्राही त्राही। आंकड़ों को कर देखकर अनदेखा, जनता से छुपाते सच्चाई, खुद को बड़ा बता तथ्य से झूठे उम्मीदें है बंधाई। महंगाई कर चरम सीमा पर चला दी देश में तानाशाही। गरीब का आंसू पलकों पर सूखा, सरकार का व्यवहार है रूखा रूखा। सुविधाएं मिलती बस मित्रों को, आमजन रोज रोता है भूखा। वो कहते हैं मंदी का सवाल नहीं, अभी बताया गया मंदी के लिए हमारे मित्र ने, वो कहते हैं मंदी का सवाल नहीं, पर असलियत में जनता का ख्याल नहीं। महंगाई अब बड़ी, जिंदगी है छोटी, भाजपा के राज में न मिलती गरीब को रोटी। मैं इसके साथ ही शुरू करना चाहती थी सर, और मैं मेरे मन की भावना सर, आप आज इस कुर्सी पे बैठे, मुझे बहुत मन से अच्छा लग रहा है कि आप मेरा भाषण सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मन की बात सुनने के लिए आप हैं, सही में मेरी मन की बात है ये। सर, मानसून सत्र शुरू होने के बाद लगातार सर हम चाह रहे थे कि हमारी मन की बात सरकार सुने, और हम 8, 9, 10 दिन से बार बार हम कोशिश कर रहे थे कांग्रेस पार्टी और विरोधी पार्टियों की तरफ से कि आज की तारीख में अगर कोई जरूरी बात है, महत्वपूर्ण बात है, देश के लिए बहुत ही आवश्यक बात है, वो है महंगाई। और वो महंगाई की बात, हमारी देश की बात आप लोग सुने, और जो भारत का जो सर्वोच्च सभागृह है राज्यसभा और लोकसभा, उसके माध्यम से, आपके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी और सभी सुने। जब ये महंगाई डायन खा रही है तब एक देश का दुख आप सुने, लेकिन इसकी भाषा हमारी सुनाई नहीं गई, और उल्टा जब हमारे नेता जयराम रमेश जी हो, हमारे वेणुगोपाल जी हो, हमारे विरोधी विपक्ष नेता खरगे जी हो, 267 के हर रोज नोटिस देते रहे, एक बार भी वो नोटिस एक्सेप्ट नहीं की, और सर्वोच्च सभागृह में हमारी अनुमति हमें दी नहीं गई। मैं जब यहाँ के लिए निकली संसद के अटेंड करने के लिए, हमारा बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है मराठवाड़ा में, वहां के सभी पत्रकारों ने हमें बोला कि बताइए आप जा रही है ना, हमारा जो महंगाई का मुद्दा है वो पहले उठाना। यानी मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हम कुछ बड़े हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि इतने छोटे छोटे पर्कुलेट हुआ है कि लोग बोल रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा उठाओ। इसका मतलब ये है कि महंगाई लोगों की कितना पर्कुलेट हो गई है, और इस कमरतोड़ महंगाई ने अगर सबसे ज्यादा अगर किसको उछाला है, तो सबसे बड़ा दुख अगर किसको दिया है तो महिलाओं को दिया है। इस देश की आधी आबादी जो महिला है, उनको सबसे ज्यादा परेशान किया है। सब्जियां महंगी, किताबें महंगी, स्कूल आने जाने की यातायात महंगी, गैस महंगा, किराना सामान महंगा। इतना ही नहीं तो जिस उज्ज्वला योजना का भी जिक्र हो गया था, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उज्ज्वला योजना का जो जिक्र यहाँ पे बताया गया, सीएजी की रिपोर्ट सर आप देखिए, सीएजी की रिपोर्ट में 65% जो गैस है दिया गया उज्ज्वला के तहत, वो यूज ही नहीं करती महिलाएं, क्योंकि उसका 1000 रुपए से ज्यादा ऊपर सिलेंडर चला गया है, इसलिए उज्ज्वला योजना का उपयोग ही हो नहीं रहा है। सर 1 मार्च 2014-15 में जिस एलपीजी की कीमत 410 रुपए हुई थी, 1 अगस्त 2022 में उसी एलपीजी की कीमत 1003 रुपए हो गई। जिस अप्रैल 2018 में कच्चे तेल की कीमत 150 रुपए बैरल हुई थी, उसकी लीटर की कीमत 58 रुपए 50 पैसे हुई थी। जुलाई 2022 में उसी कच्चे तेल की कीमत बैरल की 96 रुपीज 96 बैरल हो गई, लेकिन लीटर की कीमत बढ़ गई 96 रुपीज 20 पैसे हो गई।
राइजिंग फूड प्राइसेस अगर बताया जाए तो एडिबल ऑयल 18% से बढ़ गया है, मस्टर्ड ऑयल 28.66% से बढ़ गया है, रिफाइंड ऑयल 19% से बढ़ गया है, पोटैटो जिसकी माला अभी हम पहन रहे थे 20.42% से बढ़ गया है, टोमेटो 18.54% से बढ़ गया है, ब्रिंजल सबसे ज्यादा 27.72% से बढ़ गया है, लेडीज फिंगर 11%, पीज 11%, वीट 77.77% से। सर सरकार अपना खजाना भरने के लिए, सर मुझे टाइम दीजिए, अपना खजाना भरने में तो तुली है लेकिन लोगों की तो जेब खाली हो गई है। सर महंगाई के बाद जब निकली तो मुझे याद आ गया 1998 का ऑनियन का इलेक्शन। ऑनियन इलेक्शन इसलिए बोल रही हूँ कि तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इस दिल्ली में, और तब यहाँ के जो तब के मुख्यमंत्री थे साहिब सिंह वर्मा जी, तब उन्होंने ये बयान दिया था 50 रुपए किलो ऑनियन हो गया था, प्याज हो गया था, और तब उन्होंने ये बयान दिया था कि कोई गरीब वैसे भी प्याज खाता नहीं था। वैसे भी हमारे अर्थमंत्री जी ने भी एक बार ऐसे ही बयान दिया था जब प्याज और इसका विषय आया था। तो ये बयान देने के बाद में 15 साल के लिए यहाँ दिल्ली से बीजेपी गायब हो गई थी और शीला दीक्षित जी ने यहाँ पे राज किया था, अगर आपको याद है तो। सर यूपीए के कार्यकाल में एक प्रण लिया गया था सोनिया जी ने, और सोनिया जी ने यह प्रण लिया था कि यूपीए का गवर्नमेंट आया है तो हम किसी भी व्यक्ति को भूखा मर रहे सोने नहीं देंगे, और सोनिया जी ने ये प्रण के मुताबिक फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू कर दिया, और फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस देश में हमारे फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू कर दिया गया था। ये मैं बहुत अभिमान से कहना चाहती हूँ। और मनरेगा भी ऐसी स्कीम है जिसको कितना भी आप नाम रखे और कोई भी कितना भी कहे, लेकिन मनरेगा के स्कीम से आज इतना बड़ा हमारा कोविड का भी इतना बड़ा हमें महामारी से गुजर गए, लेकिन हमारे कोविड के महामारी से भी हम निकल गए, मनरेगा ने हमें बचाया। मैं आज जीएसटी की बात करूंगी। मैडम, कल मैं आपका लोकसभा का स्पीच सुनने के बाद मुझे कुछ प्रश्न मेरे सामने आ गया और मैं उसका उदाहरण मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ। आपने जब बोला आपके भाषण में तो ब्रांडेड और लेबल्ड और प्री पैकेज और लेबल्ड ये अलग है, ऐसे आपने बताया। पहले में बड़े कंपनियों के प्रोडक्ट्स प्रभावित होते हैं जिनकी कीमत अधिक होती है, इनमें खरीदार मध्यम एवं उच्च मध्यम होते हैं। दूसरा, छोटे व्यवसायों में प्रभावित करता है जिनके प्रोडक्ट्स खरीदार और निम्न आय वर्ग के लोग गरीब है। मीटिंग अटेंड करने वाली, आपने बोला कि मीटिंग अटेंड सबने किया था, मीटिंग अटेंड करने वाले पश्चिम बंगाल के मंत्री ने यह बताया था कि यह बैठक वर्चुअल थी और जिसमें मुलाकात फेस टू फेस नहीं हुई थी, न उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सलाह मशवरा की थी। पश्चिम बंगाल के मंत्री ने, वित्त मंत्री ने दावे से विपरीत यह भी कहा था कि ये मीटिंग के मौजूद कुछ सदस्यों ने फिटमेंट कमेटी के उस रिपोर्ट का विरोध किया था जिसमें जीएसटी रेट में वृद्धि की सिफारिश की गई थी। उन्होंने फिर अपोज टू दैट रेजोल्यूशन फिटमेंट कमेटी। शायद इसलिए अपना रुख बदलते हुए सरकार और वित्त मंत्री अपने सर्वसम्मति की जगह अपने आम राय ये शब्द आपने इस्तेमाल किया। गरीब एक मिनट सर, गरीब उपभोक्ता ने प्री पैकेज और लेबल वाले सामान खरीदने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सर, आपने लूज जो मटेरियल मैडम ने बोला, जो गरीब लोग हैं उन्होंने प्री पैकेज और लेबल वाला सामान नहीं खरीदना चाहिए क्या? स्वच्छता से पैक करने गया सामान खरीदने की इच्छा रखने वाले लोग मोदी सरकार को क्या सजा देना, मोदी सरकार क्या सजा देना चाहते हैं क्या? मान लेते हैं कि प्री पैकेज सामान में कुछ इनपुट टैक्स है, क्या उत्पादकों को और विक्रेताओं को प्री पैकेज और लेबल वाले सामानों को जीएसटी लगाने की मांग की गई थी क्या? आखिर क्या छोटे व्यवसायी और दुकानदार उपभोक्ता सभी स्टेक होल्डर रिवाइज्ड जीएसटी के रेट के खिलाफ असंतोष व्यक्त करते हैं क्या? सर, एक मुद्दा मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। अमूल जैसे फैक्ट्री जिसका वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इसकी स्थापना की, जिसकी इंस्पिरेशन की, अमूल हो या गोकुल है, इसकी सहकारिता संस्था, गोकुल की संस्था सहकारिता संस्था है जो किसानों ने की है, उसके ऊपर अगर आप जीएसटी के दायरे में लाओगे तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस देश में? सबसे बड़ी, सर एक मिनट सिर्फ, सबसे बड़ी बात, जब आपके बाद राज्यता है, उनका समय जा रहा है, जब सीपीआई इन्फ्लेशन 7% से अधिक है, जब WPI इन्फ्लेशन 15% से अधिक है, बेरोजगारी चरम पे है, रुपया निचले स्तर पे है,
चालू खाते का घाटा बढ़ रहा है और दुनिया भर से महंगाई के बढ़ने की आशंका है, वैसे समय टैक्स बढ़ाना ये क्रूरता है और दूसरा कुछ नहीं। सब हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये महंगाई कम करिए, लोगों को इससे बाहर निकालिए। और मैं सरकार को और वित्त मंत्री को बताना चाहती हूँ कि इस तरह से इसमें राजनीति नहीं लाते हुए हम ये बताना चाहते हैं कि लोगों के साथ और खास तौर पे महिलाओं के साथ ये जन्म से लेकर दूध से लेकर स्मशान घाट तक ये जो महंगाई बढ़ाई है इसे कम करने की आवश्यकता है। आप पूरा प्रयास करके तैयारी करके आया, 1 मिनट टाइम आपने वेस्ट किया और कह रहे हैं बाहर महंगाई बढ़ रहा है, वो पहन के आया तो महंगाई सस्ता है ज्यादा क्यों? सर मैं संवेदना देना चाहती you come prepared, utilize the time. मैं दिखाना चाहती थी सर, ये बोलते थे, लेकिन ये सही में संवेदना व्यक्त करना चाहती हूँ। नहीं तो संवेदना के लिए बहुत ये है, लोगों में जाके उनको जागरूक करना, मेहनत करके कमेंट्री मत करिए। And particular chairman says something, don't make. Raghav, you have 1 minute time, please. I will make it 2 minutes. Come on, please. What can I do? Your leader has taken more time. Okay. Okay. Next. Then it is Jose Kemani. No, no maiden. I have already told. No maiden speech in short duration discussion. Call attention. I told him 2 minutes. You said बाद में बोलेंगे. Please. राघव जी. राघव जी बोलिए. सर मेरा सौभाग्य है कि आप चेयर पर बैठे और मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है सर। मैं सदन का सबसे युवा और सबसे नया सदस्य हूं। मैं आपसे, आप इसे मेरी मेडन स्पीच माने या ना माने, आई सीक योर इंटेलिजेंस सर। मुझे 5-7 मिनट दे दीजिए, वो भी तैयारी से आई है, मैं भी तैयारी से आया हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को भी कहूंगा, अगर 5 मिनट मुझे और सुन लेंगे तो इतना सर हेवंस वोंट फॉल सर। Everybody ask for the same, please. मुझे लगता नहीं सर आपत्ति करें। मेरा सामने नाम है। I know the names before me. सर मैं आपके आश्वासन पर ही बोलूंगा, मुझे प्लीज थोड़ा समय दो। सर आज से कई साल पहले एक मूवी आई थी पीपली लाइव, उसका एक गाना था सर, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। आज इस गाने के लिरिक्स सार्थक होते नजर आ रहे हैं सर। मैं पंजाब सूबे से आता हूं, एक खेती प्रधान सूबा है सर, और पंजाब का किसान, देश का किसान महंगाई की डबल मार झेल रहा है। एक मार किसान की एज अ प्रोड्यूसर और दूसरी मार किसान की एज अ कंज्यूमर। फूड प्रोडक्शन की कॉस्ट पिछले 1 साल में सर करीब 21% बढ़ी है, यानी कि किसान की कॉस्ट बढ़ गई फूड प्रोडक्शन की, लेकिन उसकी आय, जिसका वादा था कि एमएसपी दुगनी करेंगे, आय बढ़ाएंगे, वो उस रेट पे नहीं बढ़ी, जिसके चलते आज देश का किसान एज अ प्रोड्यूसर महंगाई के बोझ चले दबता जा रहा है। दूसरा, देश का किसान एज अ कंज्यूमर भी सर, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूं, आज कहीं बाजार में कुछ भी खरीदने जाता है तो महंगाई की मार झेलता है। और मैं बताऊं आपको सर, ये शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब भारत देश की रूरल इन्फ्लेशन भारत देश की अर्बन इन्फ्लेशन से ज्यादा, यानी कि शहरों में रहना सस्ता है गांव में रहने के मुकाबले। और आप जानते हैं ये देश वो देश है सर जहां पर मैक्सिमम आबादी रूरल आबादी है। सर इन्फ्लेशन को टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन भी कहा गया, यानी कि ये वो महंगाई, ये वो कानून है जो बिना कानून के सरकार हम लोगों पे टैक्स लगाती है, ये वो माना जाता है। और सर जैसे रावण के 10 सर थे, भारत की महंगाई के 7 सर हैं। मैं सातों के सातों पर आधा मिनट बोलना चाहूंगा, आप जितना टाइम दे दें सर। पहला है ऊर्जा पर टैक्स, एनर्जी टैक्सेशन। दूसरा कारण सर्विस इन्फ्लेशन, जो नजर नहीं आती सर लेकिन महसूस होती है। तीसरा है सर जीएसटी का बोझ। चौथा है लागत बढ़ाने वाली महंगाई, यानी कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। पांचवा है सर बढ़ती महंगाई घटती कमाई, यानी कि हमारी आमदनी उस दर पे नहीं बढ़ रही जिस दर पे भारत की महंगाई बढ़ रही है। छठा पॉइंट गिरता हुआ रुपया। और 7वां पॉइंट सर कॉरपोरेट और सरकार की सांठगांठ। सर एनर्जी टैक्स जो क्रूड ऑयल पे लगता है, पेट्रोल पे लगता है, डीजल पे लगता है, ये भारत में दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा है, और जिसके चलते आज
कोयले की बात हो, पेट्रोल की बात हो, सारा बोझ कैस्केडिंग इंपैक्ट के तहत देश के आम आदमी पर डाला जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा सर कि जब भारतीय जनता पार्टी की 26 मई 2014 में सरकार बनी थी, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $108 पे बिकता था सर प्रति बैरल। वो 20 अप्रैल 2020 को $108 प्रति बैरल से घटकर $1 पर आ गया। इतना घट गया, लेकिन सर उसका जो फायदा था, लाभ था, वो देश के गरीब आदमी को नहीं सौंपा गया। और मेरे सवाल के जवाब में सदन में मुझे जवाब दिया गया सर कि 2016 से लेकर 2022 के बीच में सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल पर 78 बार और डीजल पर 76 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है सर इस सरकार। दूसरा पॉइंट सर, दो मिनट सर, दूसरा मैंने आपको सर, दूसरा मैं छोड़ रहा हूं 3 मिनट दिया है। आई एम लीविंग सम पॉइंट सर, आई एम लीविंग सम पॉइंट सर, आई विल कम टू द पॉइंट। I have given you 4 minutes time. Please. सर जीएसटी के बारे में, जीएसटी का जो राज्यसभा में वकालत सरोड़ नहीं सर, आप यू काउंट दिस एज माय मेडन स्पीच सर, दैट्स नो प्रॉब्लम सर, जस्ट लेट मी स्पीक सर, प्लीज परमिट मी सर। Please, there is no time. सर जीएसटी का Call another 14 सर, people. गिव मी फ्यू मिनट्स सर, I beseech you sir, I beseech you, I seek your indulgence sir. सर जीएसटी, जिसे गरीब शोषण टैक्स के नाम से भी आज इस देश में जाना जाता है, ये टैक्स सरकार क्यों नहीं कम करेगी? क्योंकि सर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे जीएसटी की कलेक्शन सरकार की बढ़ती है। अगर कोई चीज आज 100 रुपए की बिकती थी, वो 150 रुपए की होती है, तो 150 रुपए पे जीएसटी की दर लगती है, यानी कि सरकार का खजाना बढ़ता है। तो सरकार की मंशा कभी हो ही नहीं सकती महंगाई कम करने की। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है सर, जिसके चलते आटा दाल चावल पे तो उन्होंने लगाया सर जीएसटी, आम आदमी को और गरीब करने की कोशिश करी। लेकिन मैं जिस धरती से आता हूं सर, पंजाब से, वहां पर सर अमृतसर गुरुओं की नगरी माना जाता है, पवित्र धरती माना जाता है। वहां पर सर जितने भी सराय हैं, जितने भी अकोमोडेशन सेंटर्स हैं, उन पर भी जीएसटी लगाकर आज औरंगजेब के जजिया टैक्स वापस लाने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। Right. सर मेरा Thank you, Raghav. Next पॉइंट है is, सर, सरकार के कई George Kemani. सर, एक मिनट दे दीजिए, आई फिनिश सर, आई एम फिनिशिंग, Please don't. गिव मी सर 1 मिनट, I have given you 5 minutes आई time. एम फिनिशिंग, आई एम फिनिशिंग, Conclude it. Conclude one line. Conclude one line, please. सर जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विपक्ष में थे, तो वो कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो भारत की साख गिरती है। आज रुपया 180 के पार हो गया है सर। पुरानी सरकारों ने रुपये को सीनियर सिटीजन बनाया था, करंट सरकार ने 80 पार करके उसे मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया है। और आज सर जिसके चलते इंपोर्ट हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, You have a lot of future youngster. Follow the guidelines, and then I have given you already 5 minutes. If the finance minister has no problem listening to me, if she can spend 3-4 It is minutes, not between both of she you. can delay her speech by 3 more minutes. There I are won't- 7 speakers Sir, from heavens- BJP, Congress, Sir, 1 heavens speaker. won't fall, sir. Please, Jose Kemani. Sir, heavens won't fall, sir. Yes. Please permit me, sir. It will not fall, don't worry, please. You sit down. I know it won't. Jose Kemani. Thank you, sir. The inflation and price rise have already reached India like the smallpox. It is alarming. India is being converted into another Sri Lanka. I think it is in the making of another Sri Lanka. The people, the democratic people of India would not like to imitate them, but the patience has a limit. Starvation is knocking on the doors of the middle class and the lower class. So London Bridge is falling down is a famous nursery rhyme. But this rhyme is differently sung by the kids of Kerala. The cash crops is falling down, but the price of milk and curd is rising up and rising up. It's a fact that the people are on the street and starvation is going on. So strangely, we find, as he said, the cash crop, you take into consideration of the state of Kerala, whether it is pepper or rubber or cardamom, the price is coming down. Right, Mani. Sir, I have not come to the point at all, sir. I've been hardly I'm few sorry, if seconds, you sir. cannot come to the point, I can't help it. I have to go to the next speaker. See, try to understand. I have another 8 speakers here, and the ruling party 6 speakers, and main opposition 1 speaker. I have to
go by the strength of the parties, but still we are liberal in giving time to others. You have to understand this and bargain. Go and bargain with the people. Next time they must send you with much more strength, and so that you can have more time. One point, sir. Right, next. So whenever talking about the inflation of price or the value of the rupee, the treasury bench is saying nothing is happening. But we demand a white paper will be released on the price rise and the effects on economic breakdown. Right, Sri Vaiko. Honorable Mr. Time, sir. Yeah. Rise in the essential commodities and daily needs through price increasing the people of this country. The price of food goes by 7.56%, value vegetables goes by 17.77%, spices 7.64%, and oil and butter 9.36%. As you say in a few minutes, I am keeping so many things. The common citizens are now suffering from a price rise pandemic after the pandemic. The price hikes they affect only the low wages or salary middle class families as compared to higher wages middle class. Drivers and cab drivers are also affected their livelihood. Fishing community also suffer the most since they use diesel for their transports and trawlers. They live hand to mouth and they are exposed to the sea. Sometimes they get catch of fish. Sometimes they have to get empty-handed. And the sea, there is also the threat of exploitation. Navy. Anytime they are attacked and killed. The government is coming with the excuse that as a price of rising the price of crude oil in international market, they are increasing the price of petrol. But the union government is not bringing down the exchange duty structure and just more than 50%. Recently, the government has reduced the rate on petrol and diesel marginally. A token reduction. No doubt has brought down the price of petrol by 5 rupees. The relief is only a token relief of the common people. To add injury, union government has GST on plastic rice, meat, milk and products. I will have a cascading effect on the economy. Even the hospital charges are higher in ICU are being taxed. Union government is unfortunately not encouraging anyone. I'll take only 1 minute, sir. Only 1 minute. Because of monetary policies, that is devaluation of against US dollar due to that all imports are getting costly, including oil import bill. My demand the union government roll back the price of LPG cylinders to the level up to 2014 price. The union government should make all of their efforts to monitor and control the prices of essential commodities and daily needs of the government people. I have avoided by your comments. Very good. Thank you, Vaiko. Some of the youngsters know that Vaiko is one of the most serious speakers in the country. I have no hesitation to say it. But the parties, they are expanding increasing in the house. So I have to go by the time allotted. Do justice to others also. Thank you, Vaiko. Very senior is the way for others also to follow. Advice given by the chair. Ramendra Kumar. Thank you, Chairman, sir. 2 minutes. Prices in the commodities and found unabated. Increase in price of petrol and diesel and main reason. It is not common man, but even small businessmen like us are also suffering. The only solution is to bring the petrol and diesel under GST. My strong protest in prices LPG cylinder also. Recently, within the GST slab, it puts extra burden on the common people. The entire population has not yet recovered from the shock of the COVID-19 pandemic. So this banking questions for items like rice, wheat, flour, milk, have been brought on the GST slab. This is total uncalled for. I appeal to remove it. Strong protest against the state government of but not to
reducing excise duty on petrol and diesel. Most of the states have reduced the excise duty on petrol and diesel, and the central government had also reduced on associations, but the Andhra Pradesh government had not reduced the excise duty. This act caused serious financial burden on the people of Andhra Pradesh. They found that the amount of excise duty of Andhra Pradesh so much that it has increased further price in the state of Andhra Pradesh. The need of the hour is to contain inflation. The inflation that due to continuously raising the prices will increase, and there shall be financial burden on all the society, particularly marginal people of the society. Time and again, government is claiming that the supply side measures have been taken by the government to address inflation. Now it ensures that the supply side is maintained properly. We have planned the land allocation has been increased considerably in order to achieve the self-reliance. Sir, how we are going to reduce this? The only way to be self-reliant. This is the solution for the overall developing sector. The government has agreed that the income of the people has not been increased. No steps have taken to increase the income of the common man, at least to pay the increasing taxes. Vulnerable section of the society are suffering the high prices commodities, sir. This is a reality. We should not escape from justifications. Government should do something to reduce the burden of land. I request the Honorable Finance Minister to take steps in that direction. Thank you. As you know very well, as far as Parliament members also, many times we are discussing the price rise in the Parliament. It's the same way we are discussing, sir. The price rise is a common phenomenon now. It can be controlled not only by the government, state government has either play the role and control the price. That is why, sir, during our regime, our Minister Amma and Edapadi Palaniswamy, so many incentives given the farmers and all the raises given to control the price. But the same way, Lok Sabha finance minister raised the promises that given has been fulfilled. But the other side, BMK side is telling us to say electricity bill is going increasing, and also not cut the promise on the floor. The petrol price only petrol price diesel price not reduced. Because when they I'm telling if I given finance minister advice from the whatever the promise they made with the state government not fulfill the price is affected. Our hearing agitated under to control the electricity will not increase. Let them what price of diesel must be GST and as I'm reaching the government, sir. Also part of the child because the government could not do anything but they promised because of GST there is amazing fact I'm accepting this. Same time the BMK part council the evidence is very clear. Non-BJP states of Punjab, discharge, Tamil Nadu, West Bengal, Andhra Pradesh, Kerala, agree to import the 5% in Delhi. This is part of that would easy alternative No argument. Minister is here, capable of responding. Don't worry. Please. इससे क्या फायदा होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई 20 साल से ऑलमोस्ट में जाएगा नहीं वो दिखाएंगे नहीं फिर केवल आपका गला होगा उससे परेशानी बढ़ जाएगा महंगाई होगा परेशानी बढ़ जाएगा आप you oblige Russia mobilizing, you know. For me, I think 10 minutes. 2 minutes. Come on. Because around. This is your eyes. And my life. Sir.
much effort we conduct to talk about this one price and all. And I cannot understand why we are not talking about this one. The first part of the 12 days we are getting, we are talking Arctic and all. But this is the point we have to talk. The priorities for this one, and we are Keralites are much problem with Indian state in LDF. Both they are casting us, common people. They are not reducing Tamil Nadu. Even not even the price of what is the diesel, petrol. Kerala taking a increase reduce. But Kerala Airlines please don't look at you, but we are also responding also. So our LDF government, they would see we are in the position of Kerala people. So I am requesting our favorite Malaram at least to reduce the last increase. Kerala don't agree for this one. Yes, please. I am not wearing not this one horticulture item, but everything is increased. Please use the needful, madam. In your reply, he's not looking at me also. Please. Yeah. Okay. Please. Thank you very much. Thank you. तिवारी समय कम है, पार्टी का समय है भी थोड़ा मदद करिए। माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलता है कि आज आपकी से सुनकर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं समय का पूरा ध्यान रखूंगा। माननीय महोदय को मुझे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने तो 7 दिन तक विपक्ष का हंगामा सुनकर ये सोचा था कि निश्चित विपक्षी को साथ रहेगा जिससे आम जनता को राहत मिले और काम हो सके। लेकिन सबके सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि सारा का सारा काम पूर्णतः राजनीतिक जनता के करने का काम नहीं किया। से लोग बात करते तो आज नरेंद्र मोदी जी की प्रतिक्रिया करते इतने कोविड के बाद में यूक्रेन की लड़ाई के बाद में सारे काम होने के बाद में आज अगर देखे चारों तरफ से हमारे आसपास के देश को देखिए उनकी क्या स्थिति उनकी क्या स्थिति है, फिर यूरोप की देखें उनकी क्या स्थिति है। इन सभी के बीच में नाव को इस प्रकार के जाना और पाकिस्तान इसके आपको करनी चाहिए। सभापति महोदय, जहाँ तक सवाल है कोविड के अंदर 2 साल तक सारी एक्टिविटीज बंद हो गई, सारी रेल बंद हो गई, सारी हवाई जहाज बंद हो गई, सारे लोगों का एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाना पड़ा, उत्पादन कम हो गया। उस समय 80 करोड़ लोगों को राष्ट्र को चलकर क्या प्रकार का कल्याणकारी काम किया, अद्भुत काम किया। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद में जब अमेरिका ने यूरोप के देशों ने माननीय मोदी जी पर लगाया कि आप रूस से सस्ता मत खरीदिए, उस समय आज पाकिस्तान का बच्चा बोलता है कि भारत के प्रधानमंत्री थी उन्होंने अमेरिका को मना किया खरीद कर भारत को दिया कि बाकी छोटे लोग से पैसे नहीं बचते। ये काम किया जवाबदेही महोदय। तो इस प्रकार के काम सरकार ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं करता। गर्मी बढ़ी और गेहूं का उत्पादन कम हो गया, गाँव का उत्पादन कम हो गया और गाँव का जब एक्सपोर्ट होने लगा तो सरकार ने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाकर कोशिश की काम हो जाए। दूसरा जब बार लगातार सरकार ने पेट्रोल डीजल के कम किया तो विपक्ष सरकारों ने नहीं किया। राजस्थान सरकार है, हिंदुस्तान में सबसे अधिक महंगा डीजल है। दुर्भाग्य होते हैं कि कांग्रेस पार्टी में राजस्थान से कोई भी जीत आया आदमी नहीं। उदाहरण के वजह से
वहां से वहां चल रहा है तो बोलते नहीं। तो भारत सरकार ने क्या किया, तो राज्य सरकारों ने क्या किया, दूसरा थोड़ा सामने आया, वो आया कि जब मॉडल माननीय वित्त मंत्री महोदय ने लोकसभा में साफ साफ कहा तो राज्यों के मंत्रियों के बचत पे जीएसटी काउंसिल में जो सारा प्रस्ताव पास हुआ, वो सारा का सारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। उसके बाद में आम जनता को दिखाने के लिए राज्य सरकार ने आकर विरोध करते हैं और समर्थन करते हैं। थोड़ा तो जनता का हिस्सा नहीं है, राष्ट्रीय हिस्सा चरित्र है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय कि महंगाई की समस्या है, महंगाई की समस्या का समाधान है। सरकार ने 8 कदम उठाए, सरकार ने कदम उठाया कि दो सीट सारे उन पर समाप्त कर दी। सरकार ने प्रतिबंध लगाया कि स्टील की कीमतों को वो काम किया। सरकार ने गेहूं चीनी के एक्सपोर्ट को लिमिटेड कर दिया, वो काम सरकार ने किया। सरकार ने 8 बड़े कदम उठाए जिसके कारण आज हम कह सकते हैं पाकिस्तान डूब रहा है, लंका डूब रही है, बांग्लादेश 4-5 अरब डॉलर का मांग रहा है। हमारा चारों देश आज इस हालत में है, हम सबसे सुरक्षित हालत में है। नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ अमेरिका की इन्फ्लेशन रेट 100% तक गई और ब्रिटेन का 30% से सबसे अधिक गया, स्पेन में 9% गया, इटली में गया। सबके भारत मुझसे बचकर रहा। ये काम वर्तमान सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। वो आने वाले समय में कल्याणकारी सरकार करेगी और महंगाई पर कंट्रोल करेगी। ऐसा हो गया और इस सारों में मैं समझता हूँ महोदय मैं बैठा हूँ। धन्यवाद। बहुत अनुभवी है, पुराना वहाँ। ठीक है। और श्रीमती रंजित रंजन आपको 7 मिनट टाइम। धन्यवाद सभापति जी, आपके संग पहली बार बोल रही हूँ। प्लीज 2-3 मिनट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज बोल आप बोल मेरा सारा धन्यवाद सभापति जी। मैंने लोकसभा में भी जो बोल रहे थे क्योंकि आगे लोकसभा के भाषण को हम लोग सुन रहे थे। निर्मला जी का माने कभी रिप्लाई भी सुना और बहुत सारी बातें समझ में आई। मुझे मुंशी प्रेमचंद की एक रचना याद आ गई, गो का दान। एक बात गरीब फैमिली थी, पूरे जिंदगी भर सपना देखी रही कि अपने बच्चों को दूध और दाना खिला पाए, एक गाय को पाल के। लेकिन उसका पति बीमार है और शैया पे होता है। 5 मिनट बाद उसकी डेथ होने वाले पंडित जी आते हैं, कहते हैं कि गोदान कर दीजिए तो आपका पति स्वस्थ सुधार जाएगा। उसकी पत्नी घर से गई, 1 रुपया का लेकर आई और पंडित जी को कहा पंडित जी मेरे घर में यही है बच्चा है, उसकी जिंदगी मेरा पति दूध और दही सपने लेकर पालने के सपने देख रहा था और आज कह रहा कि स्वस्थ सुधारने के लिए का दान दे दीजिए। इसलिए बोल रही हूँ कि आज गरीब के पेट में मार जा रही है। मोदी साहब हमारे कह रहे हैं थाली बजाओ। आप सारा युग रहे हैं। आप कोविड ले रहे हैं, लेकिन आपकी ने नोट बंद 2016 से जो गलतियां की, कभी भी उसका जिक्र नहीं करना। जितने अर्थशास्त्री थे सबने कहा था जब हमारे देश की आर्थिक बिल्कुल स्टेबल थी, उस वक्त नोटबंदी नहीं कीजिए। आपके स्वर्गीय नाम इन्होंने भी कहा था कि नहीं करनी चाहिए नोटबंदी। उस दिन से आप देश की आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं पा रहे। मैं तो प्रधानमंत्री का भाषण याद कर रही थी, उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी महंगाई का मोह नहीं बोलते। प्लीज मनमोहन सिंह जी आए और महंगाई के बारे में बताए कब कम होगी। उन्होंने कहा मरो तो मरो, आपका नसीब। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्द थे।
सिंह जी के लिए उन्होंने कहा था कि आप गरीबों क्या रहे हैं, मरो तो मारो आपका नसीब। मुझे फिर याद आया कोविड का वक्त, जब करोड़ों लोग सड़कों में चल रहे थे, हजार किलोमीटर जा रहे थे, मुझे लगता मोदी साहब ने कहा तो मारो आपका नसीब, क्योंकि उस वक्त गरीब को पैसा देना था। तो आपने क्या बोला, सारे गरीब घर से बाहर निकलो, थाली बजाने का काम करो, थाली बजाने से आपके भोजन मिल जाएगा। फिर हमारी माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने कहा, जब भूखा बच्चा चीख कर भूख से बड़ा होता है तो सरकार क्यों नहीं सुनती है। जब किसान आप बड़ा होता है, आपके आग में उंगली डाल के सो जाते हो। आई विश स्मृति ईरानी जी आइए, हम लोग के साथ अगर आप बच्चे की परिवार और दर्द को समझ रहे आइए ना। आज 10,000 रुपया हो गया। गरीबों की काम करिए, अपने घर की राजनीति निकालिए प्लीज आप मंत्री। इसके बाद मैं स्वर्गीय सुषमा जी की याद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था ये संवेदनहीन सरकार है, ये बिल्कुल भी गरीबों के बारे में नहीं है, ये विश्वासघाती सरकार है। आज मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर होगी तो मुझसे निश्चित बोलती कि ये सभी सरकार है, हमारी सरकार है, विश्वासघाती सरकार है, हमारी सरकार है। मुझे डर लगता है जब मैं प्रधानमंत्री की उसको सुनती हूँ, उन्होंने कहा था कि घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चे भूख से रो होते हैं और माँ आँख में आंसू लेकर जाती है। जब आंसू की बात सीएम साहब के मुंह से तो डर लग जाता है, क्योंकि उन्होंने डाले हमारे हाथ से महिलाओं के आंसू लेकर मेरे भी करते हैं। सब्सिडी छोड़ दो, महिलाओं ने छोड़ दी, कहा गरीबों को सब्सिडी देंगे, महिला पसीज गई, हम सब ने छोड़ दी। आज क्या हुआ, आज 1600 का चुनाव कराकर 7 करोड़ लगभग लोगों को गैस दिया। आपको मालूम है गरीब के झांसे में फंसे गए लोग, चुनाव हमने योजना से निकाल लिए। कुछ क्या हुआ 1600 रुपए वो सब्सिडी जिस रेवड़ी की आज मोदी साहब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं, क्या वो नहीं थी, लेकिन वो रेवड़ी था गरीबों के लिए नहीं थी, गैस फैसिलिटीज के लिए। आप 16 रुपए से ले रहे थे कि गाड़ी का पैसा सरकार दे रही थी, किसका दे रही थी, टैक्स दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ, आज इतना लगभग 7 करोड़ घर, जिसमें 4.5 करोड़ लोग जो उजला के तहत आते हैं, एक साल में एक भी गैस नहीं करा रहे हैं। 3.5 करोड़ के ऐसे लोग हैं जो साल में एक करा रहे हैं। ये किसकी रेवड़ी को प्रधानमंत्री साहब आपने भी दी। कल मैं सुन रही थी आपके लोकसभा में भाजपा के एक सांसद बोल रहे थे, उस वक्त भी आपके 900 रुपए था, लेकिन हम अपनी रेवड़ियां गरीबों में दे रहे थे, बिल्कुल 400 रुपए कम में गैस दे रहे थे, गरीबों की मदद कर रहे थे। हम एनपीए की करोड़पतियों की मदद नहीं कर रहे थे, उनके सारे लाख करोड़ रुपए माफ नहीं कर रहे थे, हम गरीबों को दे रहे थे। आप सिर्फ रक्षा की बात कर रहे हैं। एक तरफ मोदी साहब कहते हैं रेवड़ी बांटना खतरनाक है, मैं प्रधानमंत्री साहब किसी के माध्यम से बोलूंगी, वो रेवड़ी हो, चाहे आपकी रेवड़ी हो, और रेवड़ी में ना तेल था, चीनी थी, ना गुड़ था, चीनी सब कुछ लेके क्या वो बात पे एक रेवड़ी की चलाना चाहती हूँ जियो। आप एक कह रहे हैं कि रेवड़ी नहीं चलानी चाहिए, आपने क्या किया, पूरे देश को गाँव का रेवड़ी खिलाया, बोला दे रहे हैं, आदत डल गई। उसके बाद हमें जियो का लोग और पोस्ट पेड घर बात, ये कौन सी रेवड़ी थी, कांग्रेस के लिए थी, गरीबों के लिए नहीं थी। दूसरी तरफ मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि मेरी बात यह है कि एक छोटी सी वाला व्यक्ति है, उन्होंने बोला कि निर्मला जी आकर मैं भाषण सुन रही थी कि उन्होंने बोला लगभग 1 लाख करोड़ जीएसटी समथिंग आंकड़े चलते हो सकते हैं कि
हमने जीएसटी से पाया। मंत्री साहब चाहूंगी आपके लिए बारे हैं जो लोग काम कर रहे हैं, रखे हैं, विदिन मंथ उनको ब्याज बैंक का ब्याज पे देना पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। 15 दिन के अंदर वो नहीं गारंटी लगाते हैं, लेकिन उनका जीएसटी का इनपुट आपको कितने दिन में देना था? एक साल लगाकर आप उनका नहीं देते हैं। आप उनके इनपुट से क्या सरकार पूरे देश को चेंज करा रही है क्या? तीसरी बात, मैं एक सच्ची सुनली बच्चे से आप जीएसटी लगा रहे हैं 5%, आप जीएसटी लगा रहे हैं 12 से 18%, दोनों ही जीएसटी में आम आदमी मरता है। किसी ने बोला कि 5% जीएसटी से किसको फर्क पड़ता है? जो व्यक्ति वृद्धा पेंशन 500 रुपए के लिए 8 घंटे लाइन में खड़ा होता है, महीना चलाता है, उसको 5% जीएसटी का फर्क पड़ता है। आप कहते हैं नहीं कि नहीं खुला गरीब है, खुलेगा खाता, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे पूछती हूँ क्या गरीब ठेले में लखनऊ नहीं खाता है? क्या उसका हक नहीं है कि वो खाने को खाए? उसका नहीं है खाना खाए, सब 2-3 खाना खाए। दूसरी तरफ आप ये बताइए, जो 10 से 12 रुपए की छाछ, दूध, दही, हम सब बच्चे आते हैं तो जाके उससे देते हैं। क्या आप 12 से 18 को लगा रहे हैं? क्या अमीर खाता है? क्या किसी करोड़पति का बच्चा वाली लस्सी पीता है जिसके लिए आप क्या है कि 12 से 18 करनी है? मुझे बच्चा बोल रहा था मैडम आप लोग सदन ज्यादा समय दिया। सवाल करिए। उसने बोला महंगा 10 रुपए का यूज पिए वो महंगा, स्कूल में जाए महंगा जाए कहाँ जाए? कोविड में 23 करोड़ की लिखा लेके आ गए, 98% लोग सारी आमदनी घट गई। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप हमें कह रहे थे कि रुपया मिल रहा है, जा रही है। मनमोहन सिंह जी ने आपने पूछा था, मनमोहन सिंह जी ने बोला उस वक्त भी कुछ नहीं था, लेकिन 59 से 99 हुआ, विदिन 4 में हमारे दोबारा 99 क्या कराएंगे? प्लीज Thank you very much. 2 minutes, ma'am. Sorry. 2 minutes. सर आर्थिक ही और इस सम्मेलन में ही सरकार की कार्यकुशलता छुपी हुई होती है। क्या आम आदमी को टैक्स का अधिक बोझ भी न पड़े और न महंगाई की अधिक मार पड़े और विकास का काम सरलता से चलता रहे। Running the finance department is all about balancing finances. With a capable woman finance minister on the driving seat, I feel inclined to think that India will emerge victorious in this battle of balances. सुबह ही तो आएगी सर। कहा जाता है माया कि अरे मेरे अरमानों की कीमत भी नहीं, मिट्टी का भी है बोल मगर इंसानों की कीमत नहीं। इंसानों की कीमत जब उठे सिक्कों में ली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और सर ये सुबह हमें से आएगी, ये भी मैं कहना चाहूंगी। मुश्किल ये है कि अब नियोजन को चुक रहा है सर। खाद्य वस्तु पर भी जीएसटी लगाया जा रहा है। GST compulsion basic commodities are obviously the result of the need of more money to run the government. The same applies to the fuel cess. सर हर करते अब हम हर तंगी लेके आ गए ये हम समझ में नहीं पाए सर। यहाँ मासूम बच्चों के दूध पीते बच्चों के दूध पर भी हमने टैक्स लगा दिया है। The government doesn't forget to pat its back when it collects more GST.
information on GDP ratio. But sir, when such matters come up, why does the government conveniently shift the GST council? That is my question here, sir. सवाल ये है सर कि क्या ये सरकार उस भूखे बच्चे के सामने जाकर जो भूख से पाँव रगड़ हो रहा है, क्या उसके सामने हम जाकर ये कह सकते हैं कि हमारा जो GDP रेशियो इतना है, या उस माँ के आगे जिसके बच्चे के लिए 5% एक्स्ट्रा पैसे की वजह से अगर वो दूध लाकर अपने बेटे का पेट भर रही है, पानी मिला रही है पेट भरने के लिए, क्या हम उसको माँ कैसे कह सकेंगे कोविड की वजह से हो रहा है? सर या उस पेशेंट को जो इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में जाने के लिए अगर वो अपना घर भेज रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि हम बेहतर है? सर मैं देहात महिला के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक ही मिनट दीजिए मुझे। देहातों की महिला आज नशे में उनके पूर्वजों के वजह से त्रस्त है, हैरान है सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, खुद पर GST लगाने के बजाय हम जो GST को बैक ओवर है 28% हम लगा चुके हैं, जो हायर स्लैब है सिगरेट टोबैको प्रोडक्ट्स पर हम लगाए जो राइस 52.7% for cigarettes, 2022 for BDs, 68.8%. You're taken on a Sir, I just want to say that why don't we try to come up to the recommendation of the WHO by raising it to 75% in some way. At the end, sir, I would only refer to what I was saying, that we got a drop of time here today. Very much for it. लेकिन एक छोटी सी कविता में आपकी बात आती करूँगी। किस सेशन है सर? जलते दीपक ने कहा, जलता दीपक जनता है सर। जलते दीपक ने कहा, लहराती हवा, दो पल तो जरा मेरा फसाना भी तो सुन, मेरी गिरी हुई हस्ती, तेरी बेपरवाह मस्ती, नई कहानी तो न बुन, मेरा फसाना भी तो सुन, मेरी जोर कहूँ या हौसला बल, दो पल जो है गए, मेरा फसाना सुनने में आया। सर देश के फसाना अपने आप में लिया, भले ही 2 मिनट के अंदर बोलना। थैंक यू। 4 मिनट से ज्यादा हो गया। It's 4 minutes. Thank you, sir. बदलन 2 minutes. क्या करूं? Sir, ये speeches, which are the capacity to control prices. It could have happened yesterday. The speech that our Madam Mr. yesterday was so powerful. It is not valid to COVID seasons. It was powerful. If promises large numbers could begin of the economy, our country reach in much earlier. But the fact is not like that. Everybody knows what the big government says, and what is happening in the country. Are diametrically opposite. The way is going one direction, the country's life but of God's opposite direction. Sir, yesterday in the speech in Lok Sabha, Madam F talked about robust economy. She talked one more thing. She told why to compare India with Sri Lanka or Bangladesh. Compare the USA. Yes, we can compare India with the USA. In USA, 1% of the total population controls 37% of the wealth. In India, it is 77%. Compare it.
the same way, compare the strength of the 70 in your side here. I can predict here that in a couple of weeks, sometimes, our record will become hundreds. What is happening? And she talks about the banking system and the NBA, how they reduced it. I should call it a magic. What the FM government banking is like a magic. The NBA is there, but she did haircuts. Haircuts, nothing but giving sessions after another to the good states. And in that way, they claim that they have the NPA. The whole success of the government in the economy is like that. And suppress, not time. I want to read some items only. Kindly tell us what is the price, soya oil price, sunflower oil, palm oil, salted fat, salt, potato, tomato, wheat, atta, downut oil. The prices of the here on the increase. Sir, this way I have only one the class of the finance minister. While she replied to the debates, kindly tell us what will happen to Narega, what will happen to it? The banks are reduced. Kindly regain that amongst the youth of poor people. What will happen to the health sector? What will do for the education? The promise of expressed. I got the phone. To read Price rise is a very important issue in the country. That is why the government has allowed all the members to give their view of this. You have to understand that why price rise, how price rise, what are the way the government tackling the price rise to end the problem of the common man. Number one, sir, 2020 COVID. Even countries who are saying they're locked with economic problem. Countries who have 25 crore population, they're in deep trouble. India with 40 crore people, sir. Cannot imagine, sir. We were able to feed 80 crore people in our country, sir. Number one. Number two, sir. We had a package of 55 lakh crore. And again 7 lakh crore that we could give money to the needy people, sir. That helped economic grow at that time. The second problem was the Ukraine-Russia war. Because of this, sir, they are the main suppliers of food and fuel. Superpower countries are suffering. We have the countries, sir, which are negotiating with them on fuel discount price, sir. Many countries have gone bankrupt. Many countries are asking money to the World Fund. Many countries have to recession, sir. The next country, sir, is Pakistan. Regime is dying, sir. Sri Lanka, sir, because of their Sri Lanka, because of their very bad economic management, they've gone into crisis. Still, we were able to help them, sir. I would like to thank the FM, PM on becoming the Tamil people in Sri Lanka. Have been helped so much, sir. To conclude, sir, I would like to say, sir, being a very important issue, sir, rise, which concerns everybody in the country, sir. Today, we have a stable economy. But still, sir, we are the GST and other revenue collections at record high. Since the economy is slowly developing, sir, improving, I'm sure the Honorable Finance Minister will take the necessary steps to address the increase in the price levels of the essential commodities. Thank you, sir. Thank you, Jayant Chaudhary. 2 minutes, Jayant. क्या करो? धन्यवाद। कौन सी कंडीशन है? मैं
मुझसे पहले माननीय सदस्यों ने भी बात रखी, पहले श्रद्धांजलि दूंगा माननीय स्वराज जी को, और इसमें कोई शक नहीं। याद है सभा में उनके भाषण को मैंने सुना। जिस तरीके से जमीन से जुड़ी बात, एक गृहिणी का दर्द, घर गृहस्थी की बात, मध्यम वर्ग के दर्द को, पीड़ा को वो बयान करती थी बेखूबी तरीके से। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए आज वो दायित्व हमारा है, हम कोशिश करेंगे। बाकी सरकार भी ये जो सुने, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने चलिए कि महंगाई के दर पे सभी सदस्यों ने बात रखी, लेकिन जो मूल बात है सदन में सुनी है, उसमें कुछ अलग राय रखता हूँ। हम महंगाई की बात करते हैं, तुरंत प्याज टमाटर पे आ जाते हैं। हमने क्या सीमेंट या ईट की बात की, ट्रैक्टर के भाव की बात की, पंपसेट के भाव बढ़ गए उनकी बात की। क्या किसान की लागत की हम चर्चा कर पा रहे हैं? मैं आंकड़े दूंगा। अप्रैल से जून 2020, ये जो 3 महीने हैं, अगर उसमें CPI फूड इन्फ्लेशन 8% रहा तो काफी होता है, मैं मान रहा हूँ। उसी समय में आपका WPI फार्म इनपुट इन्फ्लेशन 27.4% रहा। यहाँ मैं लिफ्ट एक्सपीरियंस बताना हूँ, अनुभव बताना चाहता हूँ। अगर आपका गलत हो, बहुत सदस्य ऐसे जानकार हैं, बता दें। 2014 में अगर 1 एकड़ के खेत पे आपके औसतन 3,000 रुपए खर्च हो रहे थे, आज 8 साल बाद 5400 रुपए खर्च होते हैं। 1 एकड़ के धान की खेती आप करेंगे, 300 रुपए का बीज आ जाता है, तो आपको 600 रुपए लग रहे हैं। आपके दवाई पे अगर 3,000 रुपए 2014 में खर्च हो रहे थे, 1 एकड़ धान की करने वाले किसान के लिए 6,000 रुपए तक वो आंकड़ा पहुंच गया। हमसे कई महंगाई की बात करें कि ठीक है, टॉप है, आपने स्कीम बनाई, 2018 में 500 करोड़ दिए। सवाल बनता है तो संसाधन का क्या प्रयोग हुआ? क्या हमने खाद्य संस्करण की इंडस्ट्री को से बढ़ावा दिया है? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या टॉप टोमेटो शुरू होता है, टमाटर के प्रोसेसिंग 12% GST वसूलना चाहते हो? क्या ये सच्चाई नहीं है कि पोटैटो को प्रोसेस के लिए अगर आप चिप्स बनाएंगे, नमकीन बनाएंगे, तो उसमें भी आप 10% GST वसूलना चाहते हो? ये भी एक कारण है कि जो फूड इन्फ्लेशन है बेकाबू हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा मंत्री को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि CPI फूड का अगर आप उसे घटा देंगे, तो ये जो चर्चाएं बेवजह होती हैं, आप पे दबाव कम होगा। आप तुलना कीजिए, जर्मनी में CPI का वेटेज फूड का क्या है? 8.5%, ब्राजील में 25.5%, चाइना में 19.9%, पाकिस्तान में 35% है, हमारे यहाँ 46%। इसलिए दूध बढ़ जाएगा, उतराई मच जाएगा, आप दबाव बन जाएगा, और फिर आप व्यवहार नहीं ले पाती। हमने दुनिया ने देखा, कॉमर्स डेलीगेशन तैयार कर रहा था, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री पीएम को ब्रीफ कर रहे थे, प्रधानमंत्री यूरोप में कह रहे थे दुनिया का पेट भरेंगे, गेहूं का निर्यात करेंगे, कुछ दिन में हमने निर्यात पर प्रतिबंध लगा। ऐसे फैसले ना हो, इसकी मेरी मांग है। मैं भी अभी कंक्लूड कर रहा हूँ। मेरी सहानुभूति है दिल्ली के साथ, वो आई है, मजबूर होकर क्राइसिस मैनेजमेंट मोड में उन्होंने काम किया, लेकिन हमें सिनेरियो प्लानिंग करनी चाहिए, भविष्य की प्लानिंग योजना हमें बनानी होगी। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आज मॉनसून एफिशिएंसी है उत्तर प्रदेश में, बिहार में जितनी औसतन बारिश नहीं हुई, 23% धान की बुआई उत्तर प्रदेश में कम हुई है। क्या वहाँ के कृषि मंत्री भी भागने के लिए मिली है? क्या आप पैसा दिया है? क्या आप पैसा लेंगी? उसका जवाब मैं जानना चाहूँ। और अंततः जो आम आदमी कहता है, उसके बाद सारी चीजों का समाधान मुझे कहा कि आप क्या जा रहे हैं, चर्चा करेंगे, वहाँ ये समाधान दे दीजिए ना। मैंने पूछा क्या समाधान है? उसने कहा सरल है, ऐसी व्यवस्था बना दो, 5 साल रहेगी इनकी, ऐसी व्यवस्था बना दो कि हर 2-3 महीने में बदलाव करा दो, सरकार डीजल और बिजली कोई भाव बढ़ने नहीं। उन्होंने कोई राजनीति किया नहीं, दिया आप स्वीकार करेंगे ना करें अलग बात है। ऐसी हो रहा है मुझ में। 2 minutes. Sorry. Yes, sir. Chairman, sir. I do understand your sentiments, but at the same time, we are a 7 party, and my name was on the list of this, but there was a communication gap
between us and the table, which resulted in the name not being there. But nevertheless, I leave it to you, and of course, you have all the inherent powers, sir, for your intelligence, sir. So with deep anguish, today I must say that when the country is going through the period of what they call in the Kal, it is not prosperity, but it is poverty and the long rise of the man, which are resonating all across the nation, sir. All very honorable experienced members across the parties, while speaking, sir, I can say the whole summary was cradle to materium. From cradle to crematorium, the kind of agony the country and more people are facing has very explicitly been described in this house, sir. So all I can that is after the debate probably अगर कुछ बचा आपके पास उनके नामा में कुछ GST का provision अंतिम यात्रा के लिए रखना चाहिए. So that is why we have a nice farewell. Sir, my question is between September 2021 and April 2022, the consumer price inflation in India has gone from 0.8 to 8.3 year-on-year, sir. Currently it stands at 7.1%. The wholesale price index was recorded, which is the highest in 30 years in May 2022 at 15.9. I will not go for a tedious recognition of prices have gone up, sir. The excuse given needs to be into again, sir. When we spoke about the sunflower oil, they said Ukraine war was the reason. I can say with full confidence, sir, it is not a Ukraine war. Ukraine also had a drought 2021 also in 2020. Russia had a export embargo for their essential commodities. But the war started in 22 of February, sir. So you cannot blame the Ukraine war for all the price which is happening in our country. And then secondly, sir, when we see the petroleum price, I will not going to go into the full split up of that, but one issue which I like to bring out the houses, the central taxes and the state taxes make part of the entire pricing of a liter of petroleum product. In that, there are various taxes on the government of India, central government, and one such tax which we notice is the agricultural cess. The agricultural cess which is 2.5 rupees per liter. So this is basically collected for agriculture infrastructure and development sector. During the course of the debate, many honorable members have pointed out that there has been a high inflation in Telangana and some other states. I would like to know through the finance minister in a reply, what is the amount spent on agriculture infrastructure? In the last 7 years, I haven't seen a single major irrigation project coming up in this country. I haven't seen any major incentives being given to the farmer. But in spite of the fact collecting, for example, in my own state of Telangana, where you say the inflation is high, Telangana, from the most backward region in the country, before it became a state, has become one of the top 5 contributors to the Indian economy in a span of 7 years. How this could be achieved, or the human utilization of river waters, which meant a lot of expenditure had been incurred. Seeing the prosperity of Telangana, which is against the spirit of structure on which the country thrives. They are trying to choke Telangana. You are trying to curbs on borrowing. You are trying to curbs on various limitations. Now this way, the development of Telangana is one area which would be affected, sir. And I would request the finance minister, that is the spirit of liberalism. Do not trade states which are saying the same, which are contributing to the country, sir. Finally, one last point. Everything was one about the Russian war, and the other was on the pandemic. But we had to see a lot of mismanagement happened even before the pandemic. It happened during demonetization.
the Honorable Finance Minister so highly of Rajan and spoke about what he said in the Sabha, sir. But I would like one last before I close, sir. Rajan also said the other day in a conference in Raipur that Sri Lanka was an example of what happens when a country's politicians try to deflect a job crisis by targeting minorities. Your failures, your mismanagement should not be taken with pandemic as a reason. These words, sir, also had a lot to do with the chair. Thank you, sir. Thank you. I was a former speaker. We have experience of time management. Dr. K. Lakshman, 5 minutes. Made in speech, but no made in, as I told you. You have bright future. At the outside, I would like to thank you for giving chance to speak on a subject price rise. First August in Parliament. Sir, I hail from Telangana, but I've been given an opportunity to get elected from Uttar Pradesh as a Rajya Sabha. I'm really to my leadership, Modi ji, and our Rajya for giving this chance. As a person Telangana is my only duty to speak on behalf of Telangana people, to see that the best of the Telangana welfare people be talk here, and I like to become the voice of the Telangana people in this August Rajya Sabha. Because I am the first Sabha member of Telangana by a ruling party, which my party has given this chance. At the same time, I would like to take my responsibility to see that how, being a member from Rajya Pradesh, how my government, under the leadership of Modi ji and Yogi ji, the Sarkar, working day and night for the development and also the empowerment of downtrodden weaker sections and poor of the society. Chairman, sir, despite the pandemic situation, our visionary leader, Narendra Modi ji, entire world facing a health crisis, would be able to retain the inflation and control prices. So I've been from my parliament from Telangana speaking about the prices. I really fail to understand, and I feel they have no moral right to speak on the prices because I would like to share some facts how Telangana people are suffering due to the increase prices. I would like to just take three examples, sir, with your due permission. As far as fuel charges are concerned, the union government reduced twice, not once, twice, and also all the BJP states also reduced the price right from 5 rupees to 15 rupees, lessening the burden of the common man to the tune of 25 rupees. I've seen in Uttar Pradesh the past 1 year, it's almost 25 rupees to 20 rupees on visit the government has. This is the concern of the government common and poor sections. Because in Telangana, our Chief Minister KCR totally said, I will not go into increase single paisa which collects the name of VAT. I'm sorry, sir. The state government collects on petrol 55% as a VAT. And 27% on diesel as a VAT. All together from 2014 to up to this 2022, this government has collected not less than 70,000 crores of rupees as a VAT. And unfortunately, central collects in the name of excise duty that 41% share goes to state again. This is the Telangana government concerned towards the poor and common man. When it comes to the land values, twice in a month and a span of 5 months, the government is land values. Not only land values, it appears to up to 50 to 60% to make money out of that, and also we have increased the stamp duty from 6% to 7%, and market land are also increased from 50 to 60%. Apart from this, public transport, where common men realize on it, 50% of
increase on this public common transport system. Sir. So choose 596 crores is a burden. It's a burden on the common man to pay this RTC. For information, the government itself is due to the RTC. Not less than a few now, 17,200 crores, out of which 12,000 you pay this government. The government should be a surplus budget state. Unfortunately, now it's in the depths of 2.5 crores. And our brother, our students rely on the bus pass for poorer section and common man. Now the bus pass are increasing 160 to 450 per month. Spoke a lot about this irrigation and towards this farmers, sir. Unfortunately, one installation project. It was a redesign. It was a 30,000 crore project. Enhanced to 120,000 crores. 80,000 crores. But now you know use. But due to the recent it is learned that hundreds of crores rupees it will take more than 1 year to get it repaired. This is the vision of our state minister where money is being wasted. Finally, I would like to just compare maybe रमन करता हूँ उत्तर प्रदेश में मैं जब चुनाव के समय में गया जो निःशुल्क राजनीति जिन्हें 80 करोड़ दिया जा रहा है 3,50,000 करोड़ खर्चा कर हर महीना 5 किलो हर महीना 5 किलो भी हमारा तेलंगाना सरकार 3 महीने से गरीब नहीं सुना इसलिए मोदी जी के अलावा हमारे मुख्य योगी जी ने ये चावल के अलावा गेहूं दाल चीनी हर महीना दिया जाता है प्रदेश के अंदर किसी के दिया ना जाता है। इसलिए आज प्रदेश हमारे जो सरकार है हमारे जो भी बीजेपी शासित राज्य है हमारे गरीब और वंचित शोषित पीड़ित दलित किसान के लिए काम करने वाला है मोदी जी इसलिए आज तेलंगाना के लोग दबाव बदलाव चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में Please, Table Office, Secretary, note that reference to chief minister by name will not record. That has been the practice. Only other of course. Telangana chief minister's name will not go on record. Now, Sri Ajit Kumar Boyan, 2 minutes. All the other parties completed. Thank you, Madam Chair. As I get about time, I will raise points only. But I think touching up some points is enough. As the government already knows everything, and basically enough hides everything. Sir, from price hike, people of my state Assam are suffering like hell, and the government moves with the same rhetoric. We cannot control price hike for these reasons. If you can give neither job nor food or relief from calamities like floods, why there is a government at all? This is my question. Sir, I cannot understand why the financial condition of the country and its financial penury is directly proportional to the meteoric rise of a selected few. The most recent data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India showed that rate of inflation in India in the month of July 2022 has been 7%, while that of food inflation has 7.75%. If we look community-wise, we will find that
the rate of inflation has been as high as 17% in case of vegetables, 9% for oil, 8.6% for fish and meats, 10.39% for fuel and light, and 9.5% clothing and footwear. Sir, it should also be noted that the rate of inflation in the country has remained over 6% for quite some time now. For instance, if you consider a period since January 2020, the average rate of inflation in India has been 6.17% for the last 30 months. Sir, why did various reputational organization on India's development index differ from our government's data? This is my question. Now we are manipulating even statistics of our development, to whom we are lying actually. Sir, what is important here is to realize that in demand constrained condition, particularly the condition arising out of the inflation, only caused by increasing costs. A series of hikes in prices, including products, and LPGs only aggravated this. Sir, 1 minute. The inflation is the result of triggered by decisions, but to control inflation, the government needs to have sufficient handles. We are calling, sir, to question if the government has sufficient handles to contain inflation. We are calling, sir, I just want to remind this House that if we do not do anything, it will be endless backward. Thank you, sir. Honorable members, this short duration question, discussion is normally upon efforts because of the importance of the subject. On the request of members, I extended by another 1 hour, making it 4 hours. Now 4 hours are over. Now there are some speakers left. The minister has to give response to all these issues raised. How the House is extended to sit beyond class. So can it will become business today. The other speakers and also the response by the Honorable Minister. Please, Shri Kumar Modi. महोदय को लेकर सरकार में काफी चर्चा हुई है, जबकि सरकार ने बार कहा है Sir, the government has reiterated. Sir, the government has reiterated repeatedly that it was a unanimous decision in the committee, in the ministers, and even in GST Council. But somehow members are saying we oppose this increase of GST. तो मैं एक सवाल जानना कि आपने विरोध किया तो वोटिंग कराई GST काउंसिल में वोटिंग का प्रावधान है। अगर आपने विरोध किया और आपकी बात का स्वीकार नहीं किया गया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने क्या वोटिंग के लिए प्रयास किया कि आपने कार्रवाई करवाई और नहीं कराई। सच्चाई है महोदय कि सर्वसम्मति से ये निर्णय दिया गया। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक राज्य के मंत्री ने यहाँ कहा कि कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, इसको इसे बताई से पारित कर दिया गया है। और सत्य महोदय मैं ये भी जानना चाहता हूँ, अगर आपका विरोध है तो आपने नोटिफाई क्यों किया? On 18 July, each and every state, including Congress, TM or CPM, they notified this increase of GST. तो आपने बंगाल में क्यों नोटिफाई किया? आप बोलते क्यों नहीं करेंगे? आपने केरल में क्यों किया? आपने तमिलनाडु में क्यों किया? आपने इंक्रीज को नोटिफाई किया। It means you are in favor of increasing of GST rate tax। और अब आप कह रहे हैं कि हमने तो साथ नहीं दिया था। महोदय बार ये कहा जा रहा कि अगर आपको आज भी लगता है, मैं तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री का ज्ञान देखा कि हम इसको नहीं करेंगे, हिम्मत को घोषणा करें जो
रूल्स किसी को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। हिम्मत तो ऐलान करें, लेकिन महोदय सभा में लागू कर लिया और यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। महोदय आगे अगर कोई गरीबों की तो ऐलान रिइंबर्स करेंगे, रिइंबर्समेंट, they will not levy any tax from the consumer, but they will reimburse the tax to the dealer, to the shopkeepers. अनाउंस करेंगे महोदय, और अभी समय है, अभी जीएसटी कौंसिल की बैठक विड्रॉ करने का मसला ला सकते हैं। इसके पहले भी जीएसटी कौंसिल की बैठक में तीन ज्यादा चीजों जो इंक्रीज हुआ उसको वापस लिया गया। आप ऐलान कीजिए जीएसटी कौंसिल की बैठक में, और अभी को वापस लेंगे। ये जीएसटी कौंसिल का फैसला है, ये केंद्र सरकार का फैसला नहीं है। केंद्र सरकार में मौजूद थी, केंद्र सरकार परिचित थी, लेकिन सर्वसम्मति से क्या वो कांग्रेस सभी लोगों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया। अब महोदय एक और बात है एक पार्टी क्या कर रहे हैं, उसको स्क्रैप कर देना चाहिए, जीएसटी को स्क्रैप कर देना चाहिए। हमारी सरकार नया जीएसटी लाएंगे, वो कहेंगे सेंट्रल रेट होना चाहिए। आप अगले मीटिंग में आज तक आपने प्रस्ताव लाया कि सिंगल रेट होगा, क्या चप्पल का भी वही टैक्स लगेगा और मर्सिडीज कार पर भी वही टैक्स लगेगा। हिम्मत है कि जीएसटी कौंसिल की बैठक में bring a resolution that no slab of taxes, but there will be only one slab of taxes। सत्य महोदय, वहाँ तो सहमति से निर्णय कर दिया, और यहाँ विरोध कर रहे हैं। इनको सत्य महोदय विरोध करने का कोई नेता नहीं कर रही है। और सत्य महोदय जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, आयाती महंगाई है। इससे देश की अर्थव्यवस्था के मैनेजमेंट के कारण पैदा हुई महंगाई नहीं है, ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। ये जो इन्फ्लेशन है, इंडिया कांग्रेस लीगेसी। मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से, अगर आजादी के 70 साल के बाद जब 85% क्रूड ऑयल अगर इम्पोर्ट पड़ रहा तो क्या 50% नहीं है? क्या खाद्य तेल, क्या पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, अगर हमारे आज 60% ऑयल अगर इम्पोर्ट करना पड़ता है, आपने प्रयास न करना पड़े। महोदय 58 नेचुरल गैस हम इम्पोर्ट करते हैं। 75 साल में आपने क्या प्रयास किया कि इम्पोर्ट नहीं करना पड़े? महोदय फर्टिलाइजर 60% फर्टिलाइजर हम इम्पोर्ट करते हैं। और जो सारी महंगाई है ये 3F के कारण है, फूड एंड फर्टिलाइजर। ये तीनों फर्टिलाइजर और ये तीनों चीजें जो हम विश्व के बाजार से आयात करते हैं। महोदय रशिया रेट एंड रेसेशन, रशिया रेट और रेसेशन, ये तीन बड़े कारण है जिसके कारण महोदय और ये स्थिति यहाँ पर और पैदा हो रही है। महोदय मेरे के लोगों ने विस्तार से जिक्र किया है। अमेरिका में इन्फ्लेशन कितना है? 400% of 400%, 2% now increased to 9.1%। कनाडा में कितना है? 8.1%। यूके में कितना इन्फ्लेशन है? 9.4 and that is going to be 11% in the coming days। महोदय और पूरे दुनिया में विरोध हो रहा है, पूरे दुनिया के अंदर आंदोलन हो रहा है। महोदय मैं सदन पर बताना चाहूंगा, इंग्लैंड के अंदर रेलवे की स्ट्राइक हो गई वेजेस को बढ़ाने के लिए। जिम्बाब्वे में नर्सेज ने स्ट्राइक कर दिया, बेल्जियम के अंदर स्ट्राइक हुई, साउथ कोरिया, स्पेन, पेरू, अफगानिस्तान, येमेन, म्यांमार, हैती। ब्रसेल्स, लेबनान, इराक, केनिया, ट्यूनीशिया, बुर्किना फासो, दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में महंगाई के विरोध में जनता सड़कों पर आ गई। लेकिन ये मोदी का कमाल है कि उन्होंने महंगाई को नियंत्रित करके रखा। आपके प्रयास के बावजूद कोई सड़कों पर नहीं आया, कोई प्रदर्शनी का पार्टी प्रदर्शन के अलावा कई जनता सड़कों पर
अभी कम कर दिया 60 मिनट दिया। तो आपने बोला कि कम कर दिया 10 मिनट बोल रहा था महोदय, इसलिए मैं चेयरमैन साहब ने 10 मिनट कहा था। महोदय मैं केवल आपसे यही कहना चाहूँगा महोदय, ये जो महंगाई है वो फर्टिलाइजर की महंगाई हो, चाहे फर्टिलाइजर का दाम राष्ट्रीय बाजार में बढ़ा, लेकिन हमने भारत के किसानों को सब्सिडी दिया, हमने 62,000 करोड़ महोदय, हमने 62,000 करोड़ की सब्सिडी दिया है, नई सब्सिडी। और सरकार ने ऐलान किया कि 2025 के बाद हम यूरिया को इम्पोर्ट नहीं करेंगे। हिम्मत सरकार की 2025 के बाद हम यूरिया का इम्पोर्ट नहीं करेंगे, जिससे 14,000 करोड़ की बचत होगी महोदय। हम जो यूरिया का इम्पोर्ट नहीं करेंगे। महोदय कितनी सब्सिडी दे रहे हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जो यूरिया है उसका प्राइस 1,450 और कितनी सब्सिडी दे रहे हैं 2,183, यानी 2,450 रुपये की यूरिया केवल 260 रुपीज में हम किसानों को दे रहे हैं। डीएपी का दाम है 4,073 और दे रहे केवल 50 रुपये में। एनपीके का दाम है 3,991 और दे रहे केवल 1,470 में। हमें का दाम 2,654 करोड़ 2,654 रुपीज है। हम दे रहे केवल 70 रुपये दे रहे हैं। महोदय अगर मोदी नहीं होते तो महोदय आज भारत में महंगाई की दर 7% है। मैं दावा करता हूँ ये 20% पर होती है, 20% की होती। महोदय समय नहीं है। मेरे लोगों ने आंकड़ा दिया यूपी के समय में क्या हुआ, इन्फ्लेशन का रेट क्या था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय भारत के अंदर इन्फ्लेशन का रेट क्या था, समय इन्फ्लेशन का रेट क्या था, और हमारा आज 7.01 पर है। और मैं विश्वास जताना चाहता हूँ महोदय, यूक्रेन से फ्लावर का एक्सपोर्ट प्रारंभ हो गया है, यूक्रेन से गेहूं का एक्सपोर्ट प्रारंभ हो गया है। ठीक है तिवारी जी ने नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने रूस से यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका की बिना परवाह किए, सैंक्शन की बिना परवाह किए रूस से केवल तेल नहीं, रूस से तेल रूस से अन्य चीजों पर मंगाकर और सस्ते दाम पर मंगाकर गरीबों को देने का काम किया। महोदय मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने होकर महंगाई को गिरने का प्रयास किया है, कराई है। आगे आने वाले दिनों में भी हम महंगाई को आगे नहीं जाने देंगे। महोदय इन्हीं शब्दों के साथ अपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन दास जी, डॉक्टर मोहन दास माननीय उपसभापति महोदय, मैं अपनी बातें चार विरामों के Under 311, sir. ये Sir, this is deep in Maharashtra. When the honorable was saying that nobody argues anything in the GST council, and Maharashtra has written an open letter saying that the GST सभापति महोदय, महंगाई की पूर्व बहस पर मैं 4 बिंदुओं पर अपनी बातें रखूंगा। क्या यह महंगाई पहली बार में आई है? क्या भारत के भाजपा शासित राज्यों और राज्यों के बीच में महंगाई एक सी है? क्या भारत का विकास सबसे प्रभावित हुआ है? और महंगाई को लेकर ये कथाकथित नेता ज्यादा समझदार हैं
देश की जनता ज्यादा समझदार है। महोदय 75 साल के शासन में पहले 27 साल कांग्रेस का शासन था और महंगाई की दर 13% से लेकर के 28% तक थी। फिर बीच में जनता पार्टी का शासन आया। महंगाई की दर ही जनता पार्टी ने 2.5% ला दिया। फिर कांग्रेस शासन आ गई और तकरीबन 15 साल कांग्रेस का सरकार रहा और महंगाई फिर बढ़ करके 10% से लेकर के 11.35% हो गई। उसके बाद अटल जी की सरकार आई और अटल जी की सरकार में महंगाई 99 में 4.67, 2000 में 4.01, 2001 में 3.75, 2002 में 4.3, 2004 में 3.77। यानी फिर भाजपा का महंगाई घट गई। फिर प्रधानमंत्री बन करके हम लोगों के बीच में आए। 2009 में 8.8% महंगाई थी। 2000 में 11.99% महंगाई थी। 2011 में 8.91 महंगाई थी। 2012 में 9.48 महंगाई थी। 2013 में 10.02% महंगाई थी। ये प्रधानमंत्री के निशानी में सही महंगाई थी। और फिर आए चाय बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री, जिन पर आज देश करता है। कबीर दास ने लिखा जाम हुआ, पंडित बयान हुए, आई आखिर पढ़े हुए गरीबों की जिंदगी में जीने वाले मोदी ने महंगाई को 2014 में 6.77, 2015 में 4.91, 2016 में 4.95, 2017 में 3.33, 2018 में 3.94, 2019 में 3.75 और 2021 में 5 कर दिया। यह माननीय मोदी का पिछले 8 सालों का कार्यकाल है। मैं अपने जीवन में सुनता था जब कांग्रेस आई है, कमर में महंगाई है, हम समझ में आता है ये आंकड़े बताते हैं सच्चाई क्या है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज आज के दिन में वर्तमान महंगाई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन महंगाई 6.7%, उत्तर प्रदेश में 6.7%, उत्तराखंड में भाजपा का शासन महंगाई 6.04%, मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन थोड़ी सी ज्यादा है, महंगाई 7.16%, बिहार में भाजपा की सरकार महंगाई है 5.97% और गैर शासित राज्यों में तेलंगाना 10.005, पुडुचेरी 10.09, राजस्थान 7.09, उड़ीसा 7.9, आंध्र प्रदेश 8.63, लक्षद्वीप 7.6, महाराष्ट्र अभी हमारी सरकार लेकर आ है 8.5। यानी देश में 7.1 महंगाई के बावजूद इस देश में जितने भारतीय है महंगाई बहुत कम है और जितने भी गैर भारतीय शासित राज्य है सब में महंगाई बहुत ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं अपने आंकड़ों से कहूंगा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, दुनिया में विकास की दर 4.8%, अरब देश में 1.6%, पूर्वी एशिया और जापान में 5.5%, लैटिन अमेरिका और कैनेडिया में 5.8%, यूके में 7%, यूएसए में 5.5%, -2.8%, इटली में 7.6%। अध्यक्ष महोदय, भारत की विकास की दर 22 मार्च 2023 के हिसाब से दुनिया में सबसे अधिक 7.9% है और यह है। और अंतिम बात, महंगाई इनको है, जनता को नहीं। कारण क्या होता है? वर्ल्ड बैंक मैंने बताया आपको। अब सुनिए पढ़िए थोड़ा बहुत लीजिए। मैंने बताया आपको वर्ल्ड बैंक, फिर भी आप ना पढ़ेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता। और मोदी जी सरकार में आए थे, प्रति व्यक्ति आए 2000 में 86,000 थी, 2016 में बढ़कर 94,000 हुई, 2017
हमारे कार्यकाल में 80% है। महंगाई 7% है। महंगाई में मान लेता हूँ 14% है। आय की इनकम पिछले 18% है। और यही कारण है हमारे देश के नागरिक इस बात को जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मंत्री है अन्नवादी से बात के लिए कहता है कैसे गरीब नागरिक को गरीबी का एहसास न हो जाने दिया जाए। दुनिया आज मोदी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रही है। कौन सा तरीका है। कोरोना में इतनी समस्या आई, इसका एक भी गरीब निकल करके सड़क पर नहीं आया। खर्चे से अनाज नहीं होते, मकान के होते जो मोदी जी ने दिया, खर्चे के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे पढ़ाई के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे इलाज के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे अनाज के होते हैं जो मोदी जी ने ना दिया। लोग अपने घरों में रख नहीं पा रहे हैं। मैं इस पूरी को राजनीतिक बहस करता हूँ, खंडन करता हूँ। करना प्रभा बोले आप बोलिए चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं दो सप्ताह से मैं देख रही हूँ कि लगातार सदन के लोग हंगामा कर रहे हैं जबकि हमारी सरकार लगातार महंगाई को चलने के लिए तैयार थी। फिर भी 2 हफ्ते हुए सदन ने चलने दिया। महंगाई का रोना रोते इनको स्पष्ट दे रहा कि सदन में कितना होता है चलने के बाद में चलने नहीं दिया। मैं अभी आपके माध्यम से मैं सदन को में होके मैं सदन का कुछ आंकड़ा कहना चाहती हूँ। अभी हमारे भाई ने रखे हैं। मैं जाती नहीं करूँगी, लेकिन ये सच बात है। ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये आंकड़ा भारत सरकार के नहीं, ये आंकड़ा वैसी बैंक के हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। कम से कम विश्वास करना ही पड़ेगा। आदरणीय मैं हमारे भारत के गौरव आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में जब प्रधानमंत्री बने उस समय महंगाई के आंकड़ा 13.2 मिली थी उनको। उतनी विषम में भी आदरणीय अटल बिहारी जी ने उन चुनौतियों को स्वीकारा और 2019 आगे गिनने के बाद वाजपेयी जी ने अपने अच्छी कार्यशैली अच्छे तरीके से उन्होंने मैं बताना नहीं चाहूंगी क्योंकि जब 98 में 13.2 महंगाई की मिली और उसके बाद 2004 में उन्होंने 3.7 पॉइंट की दर से महंगाई को छोड़ा। महोदय इनसे स्पष्ट होता है कि अटल जी की सरकार बनने से पहले देश महंगाई में जूझ रहा था। देश के लोग महंगाई से मर रहे थे। उसके बाद भी जिस तरीके से देखा अभी आंकड़े देखे कि जब 2004 के बाद आदरणीय मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने तो 3.7 से बढ़कर इन्होंने जब आदरणीय देश के लाल को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन्होंने 11% महंगाई को छोड़ा था। इससे स्पष्ट होता है कि महोदय इन 10 वर्षों में महंगाई न सिर्फ बढ़ी बल्कि इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। आदरणीय आप समझ समझिए महोदय 3.7 से और 2013 में 11% के दर से जब छोड़ा तो उसके बाद नीतियों को दर्शाता है। मैं इस सदन के माध्यम से ऐसे गरीबी जीवन यापन करने वाले देश के
2020 में हमारी सरकार ने महंगाई की दर 6.6% नहीं दी। इससे स्पष्ट हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील है। इस बात को आप सभी लोग जानते हैं, विपक्ष के साथी भी जानते हैं। अभी मैं देख रही थी आदरणीय शक्ति सिंह जी इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, बहन जी आरोप लगा रही थी। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप स्वयं जानते हैं इस बात को नेता अंतर्राष्ट्रीय विषयों जैसे यूक्रेन युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय मंदी अनेकों अन्य विषय रहे जिनका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके पश्चात भी इस महंगाई की दर से जारी नहीं हो रही है। इसलिए स्पष्ट प्रधानमंत्री जी को पुनः यहाँ से आभार व्यक्त करती हूँ। देश के नाम के लिए कितने संवेदनशील है, जिन्होंने अपने निर्धारित अर्थव्यवस्था को बरकरार रखते हुए उन्होंने मंदी में जूझ रहा। हमने कमजोर नीति के नियम के कारण श्रीलंका की स्थिति को भी देखा है। पिछले 7 वर्षों में सरकार द्वारा बनाई गई मजबूत आर्थिक नीतियों के कारण आज देश को विपरीत समय में भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व कारण मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि जब सारा मंदी से परेशान है, तब भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति बढ़ने में अनुमान लगाया गया है। और ये आंकड़ा कोई भारतीय जनता के नहीं है। मैं आज देश भी हैरान है कि भारत इस चुनौतियों से अपनी अर्थव्यवस्था बचाकर किस आगे बढ़ रहा है। 2022 में हमारी अर्थव्यवस्था 9% आगे बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। मुझे 10 मिनट दिया गया था सर। नहीं, अभी समय दिया गया है। आपको 7 मिनट आपको चलो आप समाप्त वही महोदय भी जाती के आंकड़े नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के आंकड़े हैं। मैं परंतु इस बात को कांग्रेस समझने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि उनके नेताओं द्वारा लगातार एक सवाल साझा जाता है। इसलिए तो भूल गए हैं और लगातार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उनका एक उद्देश्य रहता है, किसी न किसी प्रकार का सदन को न देना। महंगाई, जीएसटी, कभी वो लगातार देश को गुमराह करते रहते हैं, जिसका सीधा लाभ महोदय जीएसटी देश का सबसे बड़ा शेयरधारक है, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को पहुंचता है। अगर जो जीएसटी से ना होता तो मुझे लगता है कि महामारी में भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में जरूरतमंदों को राशन नहीं पहुंचता। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त कर समय कम है। लास्ट में मैं कहूंगी विपक्षियों से मैं अनुरोध करती हूँ कि आपके द्वारा समय लगाए विषयों को छोड़कर एक संवेदनशील विपक्ष की भूमिका निभाते हुए देश की प्रगति में सहयोग बहुत धन्यवाद। सरोज पांडे जी। सरोज पांडे जी बैठिए। अच्छा। I think that this last thing, Ramgopal Yadav. मुझे उम्मीद थी कि इतने झगड़ा के बाद जब महंगाई चर्चा हुई उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा, लेकिन सत्ताधारी दल की तरफ से जिन विद्वांसों ने तर्क
तर्कसंगत और अपने आंकड़ों के साथ भाषण दिया, उससे हमें ये लगता है कि इसका कोई अच्छा रिजल्ट निकालने वाला है, क्योंकि आंकड़ों से जो वादे पे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं बन सकता उसका। इस देश की जनता ने हमेशा बजट के दौरान नहीं पहले से भी आंकड़ों के मकड़ में ही जनता को फंसाया गया। बात वास्तविकता धरातल पर बिल्कुल इंडिफरेंट नहीं। इसलिए ज्यादा कहना भी नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि अगर वास्तविकता को जानना चाहते हैं, कभी सुबह 5 बजे जाइए रोड पर सड़क के किनारे जो झाड़ू लगाने वाला है उससे नीचे महंगाई का क्या दर्द होता है। यहाँ बैठे हुए ज्यादा लोग नहीं समझ सकते हैं। गरीब लोगों से जब पूछेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि महंगाई क्या चीज होती है। उन माताओं से जो अपने बच्चों को दूध नहीं दे पा रही। मैं तो एक कार्टून देख रहा कल, तो एक बच्चा कह रहा है, बच्ची कह रही है, निर्मला दीदी आपने मेरी पेंसिल और 60 का दाम बढ़ा दिया, मेरी मैगी का दाम बढ़ा दिया जीएसटी लगा के। जो भी है वो जानते हैं क्या है ये महंगाई की स्थिति। ये सही है कि महंगाई तमाम कारणों से बढ़ती है। तो मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि ये तो कम से कम स्वीकार करना चाहिए कि महंगाई बढ़ रही है। उसकी भाई ये दुनिया में ऐसा है, इसलिए हिंदुस्तान में भी ऐसा है। जस्टिफाई करना कोई औचित्य नहीं है। जब महंगाई बेतहाशा रही है तो ये मान चलिए कि कहीं भी है अर्थव्यवस्थापन में कहीं गलती है। आप उसकी वजह से बता सकते हैं। बड़े लोग टैक्स बढ़ा सकते हैं, गरीबों से हटा सकते हैं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से ये कहना चाहूंगा कि जवाब दें तो ये बढ़ाई है, कम से कम कुछ तो करने के जरूर घोषणा करें। तो मिला लोगों को, बड़े लोगों को बढ़ा दिए, तमाम लोगों को राहत दे रहे, गरीब लोग बढ़ रहे हैं, उन्हें बढ़ाइए, गरीबों का कम कीजिए। ये है और जब पन्ना चर्चा का कोई लाभ नहीं है। हमेशा आप जवाब जवाब देंगे। आपको जवाब देना आपके सुन ले दिया, जवाब मोदी जी ने पूरा दे दिया। छोड़े नहीं मतलब क्या बोले मोदी जी मोदी जी। अच्छा लोगों ने मोदी एक और राय देना चाहता हूँ आप लोग। काम नाम कल कहीं कोई बिगड़ा तो आप तो चलाएंगे क्या? चला निर्मला जी जिम्मेदार, अच्छी है मोदी जी जिम्मेदार। तो ये अपने नेता को सुरक्षित करने वाला भी काम किया। हर बार मामले में नेता हर एक मुझे कहना है, कुछ लोग पहुंच चुके हैं। एक ही प्रार्थना करनी है माननीय मंत्री जवाब दें। तो जीएसटी को बढ़ा हुआ है, लोगों का बढ़ाया आम चीज बढ़ाया, इसको कर लीजिए, बड़े लोगों को बढ़ा दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। 2 मिनट का समय है तो अपनी बात को संक्षिप्त में रखना पसंद करूंगा। और इस दल में मैं सुषमा जी की बात को महत्व कर रहा हूँ कि अभी साढ़े कई सारे लोगों ने बात को रखा और सभी लोगों ने इंटरनेशनल आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। यहाँ पर देश गरीब जनता है, आदिवासी है, जो दलित गाँव में रहता है, दिल्ली में नौकरी करता है, वो इंटरनेशनल आंकड़ों को नहीं जानता। ये मालूम होता है कि आटा के भाव कितना है, दाल का भाव कितना है, आज के तेल कितना महंगा हो गया। तो जरूरत का सवाल है, उसको चेक करके मुझे बोलते हैं। तो इन आंकड़ों के भी प्रोफेसर
जी ने बात भी रखी। आज आम आदमी और महंगाई के जाल में और सरकार के जाल में फंसा हुआ। ये हमने कहा है कि सत्ता पक्ष के जो लोग बैठे हुए थे इन लोगों ने इसी बात को कहा था। और आज मैं सामने बुला रहा हूँ आपको। केंद्रीय उपभोक्ता भंडार का बिल है। 840 रुपए का सामान खरीदा गया और उस पर 84 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लगा, जिसपे दाल है, साबुन है, मतलब सामान टीवी फ्रिज उपभोक्ता भंडार में यूज में होता है। मान लीजिए गरीब आदमी 141 का सामान खरीदेगा तो 84 रुपए का टैक्स देने का काम करेगा। श्रीमान जी मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि गरीबों की थाली से रोटी छीन के अमीरों को मलाई खिलाना बंद कर दीजिए। इससे देश का भला नहीं होने वाला। इस देश नहीं हो सकता। अगर आप दे सकते हैं देश को तो आप एजुकेशन को फ्री कर दीजिए, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो आपको फ्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल लोकसभा के अंदर सांसद ने बोला फ्री फंड का देते हैं। ये सरकार क्यों नहीं होती है? फ्री फंड का देना, फ्री कोई सरकार की उपलब्धि नहीं। आप जो उपलब्धि होती है जब आप आवाम को ताकत बना दो, महंगी से महंगी चीजें खरीद सके, इतनी ताकत बना दीजिए। आप सजेशन दीजिए, उसके लिए रोजगार अवसर कर दीजिए, ऑटोमेटिक उसको खरीदना कर देगा। इसलिए श्रीमान जी इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए। और अभी श्रीमान जी 2 मिनट हुए हैं, 2 मिनट आपका टाइम है। मैं कर रहा हूँ अपनी बात को। मैं आपके माध्यम सरकार से मेरा निवेदन है, आपसे निवेदन है कि जो आटा चावल जो रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं, गरीब आदमी और आम आदमी से अपने पूरी करके बेचा जाता है, उसको ध्यान रख करके इसको अप्लाई कर लिया जाए। जिससे जो दाल आटा जो दूध लगाया गया है मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। Thank you very much, sir. I thank all the members who joined in detailing speaking about the issue. In fact, I would like to start by saying I'm indeed happy to be able to stand up here and give the reply to this debate. And actually I've been, but for the COVID which hit me, I would have been here the first day when the debate started. And from my party and from the government, I would like to assure every member in this house that debates, particularly on topics, we have always been keen to participate and respond because strongly believe in democracy, and I have personally never been against giving life, and sometimes I do it more than what is expected of me, because I go the extra trying to answer every point raised, which sometimes can mean a longer session, sitting and hearing more of the minister's reply. But let me assure this house that debates are definitely something to respect and participate. And I'm glad today that we've had this debate, and I'm here to respond to what the members have spoken about. Many of our members seem to have heard what have spoken in the local yesterday. So on many of the points, although they have been raised here, I would not elaborate too much. Of course, in honor of the member who raised it, I will respond somewhat. But they have heard me on many of those issues in great detail, having spoken the local. So I try to keep a crisp on some of these points. Sir, I started there, and I start here as well to say that Indian economy, compared to the situation prevailing in many of our groups, and compared to the situation in many of the developed economies, is definitely much better. But that does not mean that we are running away from something, because some of the members have said inflation, and because of the import-related problems and global commodity prices, we are being impacted. These are realities, and we are here to answer and discuss on them.
saying, or nobody is denial about price rise. Even Professor Ram Gopal Verma spoken here now. Sorry, Ram Gopal Yadav. Sorry, thank you for correcting me. He said no. दरा पे जाके देखिए numbers नहीं देखेंगे दरा में क्या बोलेंगे वो भी देखेंगे हम भाग नहीं रहे और ये भी सच्चाई है कि नंबर्स के मुताबिक भी हमारे नेशन रेट का एक बैंड रहता है 4 is the median point minus 2 plus 2 is what is normally accommodated. And we are 7 with some effort. Or it can be slightly more than 7, but we have made sure that the Reserve Bank and the government put together taking enough to make sure that it is 7 or below ideally below 6, the band. So nobody is denying. And therefore when we say look at a world where some countries are experiencing inflation not seen in 35 years, 27 years. It doesn't mean that there is inflation in this country. So it becomes very ranking. That's not just about you. If the debate constantly is only attributing things, which we have not even said. So let's please both on data and on the thank you very much, Ram Gopal Yadav. Constant interaction people who are affected is giving us a position on which we are having a get from the pandemic and the recovery going on. And through targeted approach, we are reaching sections so desperately in that help. Of course, yes, we want to do a lot more. Nobody's denying that. But that doesn't mean that we won't do anything at all. And also this very impressive direction which can go on. You collect so much from the excise duty and the cesses, and you're saying that the 4% is not given any help. I'm sorry. I will doubt. I will definitely list out what a person even today we will do more. That you say you get people you give the 54 we will give. But can attribute to us that you're not doing anything to the poor. I'm sorry. And approach that you have never done anything for you always for Adanis and Ambanis. I'm sorry, I'm content to take the names here. This is absolutely politicizing debate which is so necessary for the country. So necessary for the country because all of us together, some of us in our states, some of us as members of parliament in our respective constituencies, are working to make sure that the poor's voice is heard. We are trying to reach out. Some of the schemes which don't go down to the ground. We are making sure that it's given to them. Each one of us are contributing in this recovery process. And this recovery process is not purely economic recovery, also because of the pandemic. And the health minister is also here about efforts taken for vaccination, which is so critical for the economy as well. Every investment has been keen to know about it, and we've been constantly giving data to that everybody lives in it, so that the economic recovery can happen. So I appeal to the House that we speak both on facts and on the data. It's not as if they are only throwing data at people. In fact, most of the country are accused of giving data which is not right. So I'm definitely emphasizing that having made many of our peer nations, emerging economies, or even looking at some of the advanced economies in India's position. Let's be somewhat fortunate by the fact that macroeconomic fundamentals are strong. It's all very well for us to be told, you should use some more there, but if you're denying that the macroeconomic fundamentals are not strong, I'm sorry, you're not going to be seriously. I will take you seriously. You're a member of Parliament, I honor you.
But let's talk on what's actual and not what is generated I don't know by who. So with that, I just want to highlight one of the points which is important, because we have a temptation to compare, and that's not wrong. These two compare with our neighbors, with economists which we thought are better than us. Probably they're there, and you wanted to tell us that they are better and we are not. All that is fine. But please don't forget today, the very same economies which were quoted to us, saying they're doing better, India is not, because their policies are a lot more friendly for industry. I'm sorry. I'm not rebelling in countries which are suffering. I honestly do want every one of our neighbors, some of whose names I take here, to be better off, to be able to perform well. But today's situation, the reality is, some of these countries which have been quoted to us earlier, one index or the other index, they are better than us, you're not. Look at the reality, please, honorable members. Bangladesh, about which we are periodically quoted, and we have a great relationship with Bangladesh, and I'm happy for it. And there was a time when we were quoted repeatedly, Bangladesh is doing well, you're not. But even on the parliamentary question reply on 1st August yesterday, I have given the data of what is the comparison between there. I just want to read it out. The per capita GDP at PEP in 2013, Bangladesh was 3,140 international dollar, I say it, but it was US dollar. But the same 2013, India per capita GDP PEP was 5,057. 3,143,50,057. And in 2021, sir, when they repeatedly reminded saying, no, Bangladesh is doing it. Even if they do well, very well. But I want to give you the number. In 2021, Bangladesh per capita GDP at PPP is 6,613, whereas ours is 7,334. So please don't quote with facts. And in Bangladesh today, again I'm underlining this point. I'm not quoting histories here, because repeatedly we are being told, you're next Sri Lanka. You look, you're not even here. Bangladesh, please understand the story everywhere. Bangladesh today is seeking from IMF 4.5 million because they have balance of the Indian problems. And they say when our macroeconomic fundamentals are strong, please, let's recognize that our macroeconomic fundamentals are strong. Sri Lanka, of course, is suffering for 3.5 billion by IMF. Pakistan in total is suffering in different stages for 7 million from the IMF. There are times when we have also been told in India the petrol price per litre is look at our neighbor Sri Lanka, that's far lower than you. Let's consider the wholesale rather than piecemeal saying they are no. Today's economic distress throughout the world, what it is, let's look at it holistically rather than just throwing one aspect here so that I've done my job. No, please. It's a very serious business, and all of us honestly, members of this house, will like to look at very seriously what kind of things can be done. Further, we are able to help a lot of people. Now I just open specific points by members because I want to answer them. I'm not going to get into details of the other things which come on the situation. The first speaker, Madam Karimji, had raised a few things which I think were not based on facts. I would like to correct them. He spoke about bank checks. I would like to say there is no GST on withdrawal of cash from bank. There's no GST, please. And today on very many things I will say there's no that on the GST, sir, because the more I listen, I'm worried
more I listen to issues related to GST, I have a concern that probably information is not reaching, right information is not reaching. And as a result, there's quite a lot of misconception. And I would today attempt to clear some of these misconceptions. So that was first of all, GST onward. Specifically on the checkbooks. GST has been imposed on the bank checkbooks and buy it from the printers of the checkbooks because banks try to buy it in bulk. And from them when they maintain it, because banks don't print their checkbooks, they buy it and from the printers, and the printers after all paper, after all for the machine, after all the other things that they have, and the services that they are paying GST for those inputs with which they manufacture the checks and supply to the banks. So for them, there is tax GST because they already are paying inputs for many of these items. So the stream till the consumer, because it's consumption-based tax, will have to pay tax dues at a level. So that is what is before you, Honorable Reem. So I want to be kindly take into cognizance that as regards the consumer or the bank client who takes the money, draws the money, there is no charge on him. It is a bank which purchases from the printer for whom the GST otherwise that will end up having to the printer will end up with at a lesser cost. The banks for the input tax credits will get accumulated. And I elaborate on the fact that bank when you draw cash, five free transactions from your own bank's ATM, and five from an ATM of a different bank you can draw without a charge. Free transactions, 10 in total. And in banks, I think transactions are limited 3 and not 5 because in metro cities there are difficulties and instead of 5 they give you 3. However, small, no frills, basic saving bank deposit accounts which are common small and middle class families use. They are still permitted 5 transactions even in metro cities. So 5 plus 5, 10 transactions in a month. It's totally free to withdraw it from your ATM. So let's please not be led by misinformation. And then banks may provide more if you choose to because RBI is not going to ask them to pay it at that if you want to do more. So that is about bank and withdrawal. Again, an issue which I may periodically now and a bit later also elaborate about the pre-packaged item. I hesitate to say something here. GST Council has members, ministers from every state. They are not alone when they are inside the GST Council. They sit there with their officers as well. So it's not as if it's possible for anyone to say something about some other state outside and get away with it. They are their officers, not the minister himself. The officers also know it. And as regards the latest 47th meeting that was held in Chandigarh, it's a matter of God that all states agreed to the proposal. I found it on record. And if there have been private conversations from some ministers, I recognize the private conversation, Madam Rajya, I would like to particularly tell you. Private conversations can be anything. The minutes, the recordings, all stand testimony that there was not one person who spoke against. And the
this is my word, may not trust me, but I have the responsibility as the chairperson of the GST Council to put the facts on record in this August House. Not one spoke against, and I repeat, once spoke against. So there was not even a single disagreement for the decision which they taken, and I'm glad Modi spoke about it briefly to the extent that some of the members thought the replies have been given by him. He is a very hand in the GST. He has been there before the GST Council was formed, the Empowerment Committee, empowered ministers prior to the GST through the entire framework. And I do not derive any pleasure by saying something. It's not true. You can always pull me up later. My credibility will be gone to the bins. Why would I want to do it? And if ministers who had agreed and who later do not want to stand up and say, look, I agree, I can't hold them. Why don't you want to say? No, I don't want to ask them. Let the council what is on record, and about that, if there are speculations, it's my duty to answer, and that's what I'm doing. I repeat, seven council meetings in Chandigarh, where after a three-layer process, the committee, and I will wait for the details to tell you who are the members in the committee. And post that a group of ministers, I'll tell you who were the members of the group. It's not just my patriot. I'm compatriots. Ministers all states in some others were in this group, and post that it comes to the GST Council. And why has such correction become necessary? Then now the poor's consumption of any of these are not being taxed even now. Even now they are exempted. And when in 2018, the branded people, some of them who were not registered and brand unregistered, were also given exemption. There was a brand misuse. Because they were given exemption, not so registered branded people, they're all getting the exemption. But those who were registered and had high value brands, given a choice saying if you disclaim your registration or your brand, you also become one of those brand, but not registered. Blatant misuse happened. And this from about 2019 has been worrying the GST Council every meeting to discuss, and they were amounts also looked at as to what this misuse is leading to. And in some extent, the council said we have to work out some way in which poor new to theirs without GST, but the branded, which is happening, has to be dealt with, and therefore what we've done now is continuous for the poor. They are not being taxed. The exemption continues on rice, chawal, lassi, whatever. It continues. What's now the exemption has been withdrawn is on the pre-act act. Even now, when a trader who is dealing with small customers has to sell in loose, he has to buy his product from somewhere. So when he buys in bulk, gets it back there, and then brings it to the shop, he's not paying tax even now. He can get it 25 kg, come here, our shops and sell poor without GST. So the council, and I take extreme, I take extreme pride to say that the council has applied at various levels, I mean, committee level, group of ministers level, and then the GST council level. That the country
efficient for the continues. And the misuse which was happening from branded ones, particularly those which are registered brands, had to be corrected. That's what has happened. MG also is worried that Indian diamonds so kindly. You're taxing them very less. Food products are being fired. Kareem ji. At the time when GST was brought in, elaborate discussion took place about diamonds because in this country 96% of all imported diamonds were coming, cut, polish, some jewelry, and work, get exported. 96% of all rough diamonds which are brought into this country are exported. So obviously, you don't export taxes. Any item does not bear the domestic tax. And therefore, earlier were it 3%, then they were quite a lot of demands from those, and it's a labor-intensive industry. Therefore, a lot of input tax credits were getting accumulated, and because they're selling it, no tax or some percentage of tax was benefiting. Therefore, in order that the ITC input tax credits can be sorted out, studies were done on it, and forced the council took a decision to keep the tax benefits. So that is what we were done to diamonds. It is more the industry and workers who are all there, and as a result of which, and because 90% gets exported, that rate has been fixed. Honorable Member Karim also said, since independence, if I'm able to recall his words, since independence, there's never been a tax on cereals and food products. Please correct me if I'm wrong. I'm sorry, no. I need tax defense before you. Prior to GST, the VAT rates on pulses, barley, wheat, rice, rubber, besan, paneer, curd, lassi, buttermilk, five states I have it here. Every state in some or the other has imposed a VAT. So some independent nobody taxed on cereals. No, sir. No. Since Kerala, quote example first, and I read out others later. In Kerala, pulses before GST was taxed 1%. In Kerala, atta, maida 5%. Suji, rubber 5%. Besan 5%. Taxed. So it's fine. We may probably not less than necessary information, but every state had the tax on all these items, which today have become the GST related costs. No, sir. In fact, therefore, there are some states, for instance, 5% on dal, 5.5 wheat, 5.5 rice, 5. Maharashtra had it even on lassi, curd, buttermilk, 6%. Ma'am, I'm not quoting Maharashtra to you to raise up for a border. No, you I'm saying Maharashtra price GST, tax, buttermilk, curd at 6%, madam. So paneer was 6% as well in Maharashtra. So it's very
Because she mentioned Bengali, I asked for a point of order. If you think we have a classroom sitting with students on this, we don't want to give us a chance to even express ourselves. Extremely unfortunate and this has exposed that Congress and colleague, the leader of the Congress, Derek O'Brien, stands exposed today in this house. They never wanted that in the first place. We have been saying they are running away from the debate. We are missing the Honorable FM as she has just recovered from COVID. After that, she has 5 hours. And listen to your honorable member. Made copious notes. She's addressing each member's concerns very elaborately. And despite such an very articulate response to everybody's issues, if the honorable member wants to find an extra walkout, I think it is very sad. It only shows that they are getting exposed. They are getting exposed for their failure to take effective measures. So I won't elaborate on each of the states, sir, but the matter of fact is some states or some other states or states in some item or the other, GST had a tax, had a VAT in one of these items which we feel outraged. How did the GST Council do? GST Council has not done anything. No new tax has been levied. But those who had exemption and those who were using it have now been going over exemption for you landed. So pre-tax for the poor which comes and that is being bought and lose still under exemption. With that I will not elaborate further. But there were concerns about hospital beds. I would like to highlight again. This is a misunderstanding. I would like to clear this misunderstanding. The GST Council recommended hospital room rent. No ICU. ICU is not in charge at all. It does not impact emergency services. It does not impact ICU. But if you are taking a room in a hospital, which is more than 5,000 rupees per day, it is only for that class, 5,000 and above. That for 5,000 tax levy. 5,000 and lower, there is no tax if you are taking a room where treatment being offered for you. So again, a misunderstanding which I like to be clear on. I want to tell you, sorry, this is also not right. Again, with a lot of cynicism. The council is used having charged on crematoriums. You're going to bury your dead. No! Please, in a minute, read what actually the council has said. I'm extremely proud, sir, the way in which council functions. The ministers apply a lot of their mind. The fit committee does its business. At every layer, the legal committee looks into the legality of everything. And
post that they come to the council, and even there, they come out whether it's right time, should we do it later, what is the law for tomorrow, what is the law that we haven't done it at all, everything is discussed. To suddenly make a picture of the GST council as though it is sitting mindlessly and just was about one more. No, please. They are also people coming from the ground. They belong to all parties. They know what is ground. They come back what they want. And there is no miracle wanting to earn more revenue. It is more peacefully addressing issues and addressing nevertheless. So crematorium, sir, Honorable Marine, there is no GST on funeral mortuary services. कोई इसके ऊपर टैक्स नहीं है, मगर क्योंकि वो सब एग्जेंट, मगर कोई नया टोरियम बनाना चाहता है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल मोटरवे इंसिनरेटर या कुछ और बना रहा वो टैक्स ले आता है इंस्टॉल करने के लिए. 5 huge incinerators also build with material which he pays tax. And when he comes here to build it, he's already paid the tax. How we retrieve it? And this construction of crematorium is what is taxed, and it is not as though the services you will pay, you will no. Please understand how the economics of taxation works. Yes, it is important for being conscious that we don't hurt a poor consumer. But it doesn't mean that we break the taxation chain and just the whole GST framework and all is now GST is a failure. Not at all. I actually want to highlight this, and I will do it, that after the introduction of GST, I've heard a lot of this, grist. GST is also continuous. GST council is also conscious of our souls. I will read out a little what the definition of greenies was before the GST was introduced. Very Kobrian is not here. He listed out things and said, Mr. is not here. I wanted to come. I'm ready. He is not here. I will read it out, but so Honorable Marine, I want you to be sure that the crematorium matter is not as though. Now before I just want to be sure that the point of GST decision making process is understood. I want to tell honorable members as to where in the committee. The Committee consists of top national level officers from Rajasthan, West Bengal, sorry, I will space the paper, but I will I'll get the details. Okay, that is at the Richmond committee level. After that comes the group of ministers. Who are the group of ministers in this? West Bengal, Rajasthan, Kerala, Uttar Pradesh, Goa, Bihar. Their presidents is given by the Freedom Committee. And after that it went over again to the ministers looking at rationalization of rates, looking at correction of inverted structures, such as the taxation where you higher tax when you're buying raw material, pay lower tax when you're selling the product for that also group of ministers, which is headed by the chief of Karnataka, and in that too, who are the ministers again? Punjab, Chhattisgarh, Tamil Nadu, Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala. All of them agreed. All of them agreed, sir. And agreed without any difference. So I want this to be laid as a matter of fact. The concerns about
how reduction in malnutrition and issues like that. Between 2016 and 2021, child stunting has been reduced from 38.4 to 35.5%. Child wasting 2021 to 19.3%. Underage children 35.8 to 31.1. Malnutrition in women, that is 18 and 49 years, 22.9 to 8.7. And I'm happy to say, health ministers, former health ministers here, institutional births in rural areas, which is very important for maternal health, has increased. It was 75.1 in 2005, 15, 75.1%. Today at 86.7. Also, cost of medicines, cost of people not being able to purchase. I want to say I'm very glad I closely follow Health Minister Dr. Mandaviya's Jan Aushadhi Kendras. We now and then talk about it. Price of Jan Aushadhi medicines. The price of Jan Aushadhi medicines is cheaper at least 50%, and in some cases, but 80% to 90% of the market price of branded medicine. Same branded medicine and what is available generic medicine here in Jan Aushadhi Kendra, 90% and such differences. So I want that to be appreciated. Jan Aushadhi Kendra as a mission has succeeded in reaching medicines at affordable prices, poor and needy, and that is a big success. I credit the one former and current health ministers who are here. In the last 8 years, starting from the annual turnover of 8 crores in the year 2015, highest monthly sales turnover of 100 crores has been achieved in this. And therefore this is something which I want you to take into cognizance. I want Kerala to have a lot more Jan Aushadhi Kendra so that the people in Kerala can benefit by affordable medicines. More than 3.28 persons are being treated free of cost because they want to cash pay, they can't afford it. Ayushman Bharat has given the facility of being treated free of cost. As on 7th April, giving you data, 3.28 crores persons have benefited from it, and 18 crores Ayushman have been issued. So the care of the poor is being fully kept in mind. Honorable members this is here, and many other members spoke about how Nana is really not making any sense. Spread it, we all gave up. But then today there is a problem. I just want to highlight that as of May 21st, when we announced the excise duty cut, we agreed and we announced that 200 gas cylinder up to 12 cylinders will be given to over 9 beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. We've not forgotten them. But the cost of gas, LPG, is not in our hands. If we are importing it, and if the prices are going up, obviously we'll have to make sure poor get it at a concessional rate. We are giving 100 cylinder and not for one, 12 cylinders are being given that subsidy. It must be noted that between 2014, actually in 2014, there were only 16.8 crore LPG connections. It is today 2022. 3.55 crore people benefiting from this. The
been easy target of a lot of things. Nothing has been you announced it. Prime Minister Modi said nothing. But nobody would just highlight what it is about. Actually, start from over the span of less than 5 years under UPA 2, from May 2009 to November 2013. The average price of various commodities were triple, not double. Some of them were that much. And I'm not exaggerating. Potato, onion, tomato. The increase in average price over this period, 2009, 2013, was shockingly at 160% for potato, 323% for onion, and 160% for tomato. So that's the kind of increase in price happened during UPA 2. And today that's scheme, we are able to more of vegetables go to the market, give them capacity store, and as a result of which the prices have been held reasonably. In fact, in November 2013, sir, the price of onion had touched 100 rupees a kg in some sectors. Some of them, Sam, you know, in places like Aizawl, it was already 100 or more at that time, and tomato was costing 80. I'm glad that I remembered my exchange onions in the Sabha, whether I eat or not, I worked to make sure that it was available for everybody. So it doesn't matter whether I'm an eater or not. And all of us rejoiced at a minister being saying she doesn't eat onion, so she doesn't care what we need to eat. Not just me. Prime Minister also has a concern, and that's how the top scheme succeeded. That I would like to quote that between the last month and this month, the reduction in the price. Whereas what it was between 9 and 13. In 2009, first potato was 9 rupees. Whereas now it's 2013, it was 26 rupees. Whereas what we have in July 26 only. We contained the prices. Onions were 52.98 2013. It is 25.45 today in July 29 July. Tomatoes 46 rupees in November 2013. Today it is at 44. So one of the things which we want to take into cognizance, they were questions about ground and oil, Ganeshpati. I have data. I want to read it here, but proving that we are holding the prices carefully. And in the process, I'm not sure one of the members did ask, what is happening? The area under cultivation, I think it was one member from Telangana. Area under cultivation of rice is going down. And area under cultivation of wheat, and then export going, you altered it. There is a group of ministers headed by the Honorable Home Minister, which periodically reviews the Commerce and Industry Minister, Food Consumer Affairs Minister, Leader of the House here. He's also a member of that committee of the group. We periodically review the availability of cereals, and also crop sowing area, acreage under cultivation, and pays accordingly. So it's not high and dry. Lamenting everything at it because these are essential, and we need something about it. So one section of the society, because I would want to come from and who's our ideal, from whom we derive a lot of inspiration. He says, I quote, it is our thinking and principle that these uneducated and poor people are our gods. We have to worship them. It is social and human dharma. That's what he said. And the arbitrary practice is derived from that. And as a result, you will find that let me list some of the specific actions. Poor.
data of what they're doing in farming, sir. PM Rajya already said 2014, 16.8 crores. Today it is 20.5 crores. Since we had Rajya was talking about farmers. In 2013, there was no Pradhan Samman Nidhi Yojana, but in 2022, we've already kept up 12.5 crores of plus number of farmers. 6,000 a year for each one of them. 12.5 crores plus farmers have received 6,000 each into their account per year. So we are looking at farmers and taking care of them. Jal Jeevan Mission, sir. In 2019, they were only 22.2 households, 3.2 crore households. Now getting pipe water, 9.6 crore households by the water. Taking care of the poor actually, not just throwing some money and saying, they are such money जा रहे उनके नल के द्वारा 9.6 crore. Sir, street vendors, PM Swanidhi Yojana, 2014, there was no scheme. 2022, 29 lakh plus get loans for under the PM Swanidhi so that they can do affordable loans so that they can do their own work. Otherwise they don't have to give security. Without security they get it. Ayushman Bharat has already said. Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana, 3.28 crores will free treatment. So let's I know members saying not here. He was talking about very we are in reality as to what they need and how it's reaching them. Shivaji also mentioned some of these very clear kya hai. One point on which member Rajan also speak. Ranjit also spoke about. So you've given us cylinders, but what's the use? The price of oil I've already told you, given for 12 cylinders a year, 200 rupees cylinder. But there is some important data I would like to highlight here. LP coverage, sir, is defined as ratio of the active consumer to the total households which are getting covered. That has increased from 61.9% of 2016 to 100.2% now in 2021. That's not the under having their refill made periodically. So it's not true. People are not coming for refills. Yes, the price has gone up. It is not in our hands, but still we are giving 200 rupees cylinder for people so that they don't. It may not be sufficient. You can ask me to give them free cylinder. They may deserve it, but I also have to consider how many I can afford to give and so on. So amount is reduced. Now only 42 crores is just subsidy amount. सूचना के अधिकार के तहत नियमित 40 जो आंकड़े जुटाए हैं उसके तहत 2021 में नॉन कॉर्पोरेशन 2.8 करोड़ ग्राहकों ने कराया 66.1 लाख ग्राहकों ने कराया
मैं जरूर रंजीत रंजन जी, ऑनरेबल मेंबर रंजीत रंजन जी को चेयरमैन आपके द्वारा आंसर देना चाहती हूँ। सरकार बजट के द्वारा जब संरक्षण का घोषणा दी है और ये सब रेट में अवेलेबल है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके विशेष में जाकर करिए ये सब्सिडी दिलवाए उनके अपने sometimes in this place and sometimes from my room. And even now, I sat down, yielding, hear the honorable member. I heard honorable. This is not the way I give it. That's the answer I can give. You like it, I don't like it. With your permission, I've sat down, what is this? Constantly, the minister will have to be listening. I'm listening, but when I start there is interruption, there is commentary, there is action. No, not that way. Sorry, sir. I'm willing to hear. I'm willing to sit down here. Interruptions, I yield. And after that I've given reply, and I would think you would give me that duty that forming chance. Yeah. Please. No. Sir, there's also been a lot of question about the center is collecting a lot of cess. Center is collecting a lot of cess. The point that honorable member Levy was not here, but he did raise something very interesting, saying families when they think of morning, the kind of things they do. They buy straight. When they go out, they have cylinder and come. I just want to draw his attention, sir, to domestic unique उनका ध्यान में रखते हुए प्री-GST rate. Of course, sir, I'm purposely using it. I'm also I use the money and I'm using the revenue because I've been told that the revenue is down like how many revenue. So I will not action, sir. I may not speak like clean, but also anything which has been already answered. My nature is different. I'm sorry, I'm made of different stuff. You may have to put up with it. You're made of different stuff. Sir, Derek had raised this issue about how families have a budget. I just want to say GST has not increased the burden on families. And this I'm saying because the rates on some of the items before GST was far higher. And let me list out to the 17% pre-GST. Now
as the GST. Footwear more than 1,000 rupees, 21% GST, 18%. Paint, because I heard they say we probably talk about tomatoes, onions, sariya, cement, paint, sir, and varnish which are necessary for the ordinary citizen to make his house up. 31.3% GST. It's 18% now, sir. Sugar, which आम घर में है 6% GST, now it's 5%. Sweet mixed Thai, 7%, 5%, now GST 7 under GST. Washing machine now common household thing. Everybody wants some or the other. 31% GST, 18% now. Vacuum cleaners, 31%, 18% now. Television is up to the size of 2 inches, 31.3. Now it's 18%. LPG stove, 21% GST, 18%. LED lamps, yes, Minister, propagated that we have lamps in the houses, 15% GST, 12. Kerosene, emergency use for households, which today receive electricity 8% before 5% now. So very families want to buy things. They are buying it at far lesser rate under the GST. Also, he's not here. I will not spend much time on it. But also very simplistic. I'm not exercising it. Simplistically said, US inflation is 9%, India's inflation is 7%. So actually speaking, Indian currency appreciating in value. Sir, the currency of the country does not determine one inflation there. There are so many other factors which go into the fixation of the value of currency. Here, obviously talked about a few other things. I'm not getting into it. He said program, you quoted some of these also said, many other members also said, I've been taking everything that Rajya governor as an economist said. Suppose he's given a opinion. No, I'm not referred to it. Let me be clear on that. So says one word, lot of concern and fear, lot of members. What the Senate collects, assess, and what spends. I have said as a part of the questionnaire as to how we spend money collected and assess. Till now, for instance, between 2013, 14, till 2023, 3.77 crores of cess has been collected. 3.77 crores. What actually has utilized is 3.993 lakh utilized. Meaning states have received it, started using it, spent it. 3.93. So nearly 20 lakh has been given crores given us. 3.77, 8.93. State receives the cess and when cent doesn't collect with it goes to the states promptly, sometimes much more than what collected goes to the states. This is something I would like to say. Collector says, what do we do? Not my data, RBI's data shows very clearly the total development and expenditure incurred by the government in 2014-2022 between
and 22 was 19.99 lakh crores, far higher than what is being spoken about. In contrast, only 49.2 crores spent on this development expenditure between 2004 and 14. So 10 years, 49.2 lakh, whereas between 14 and 22, 19.8 years, 19.99 lakh is what we have spent on development. So connected roads to state development which happened, that's the total we have spent. Expenditure again by government on food, fuel, fertilizer subsidies. Honorable Modi spoke about how global fertilizer prices have costed us huge amounts of importing, but not that burden on farmer, and this is where money is spent. What is the amount? 24.85 crores have been spent on fuel, fertilizer subsidies, and 26.3 crores has been spent on capital creation, whereas 10 years of the APA saw only 13.99 crores spent on subsidies of nature. So less collected, utilized. Has GST reduced the flow of resources to states? I'll very quickly data which runs in 2015 before the introduction of GST to today. Total flow of funds to the states have increased substantially. An average of 14.8%, approximately 14% during the first 5 years of GST. Despite pandemic. The pandemic has not reduced us. We've given what was expected to be given slightly more expense. Whereas the average before the introduction of GST was only 9%. So 9% GST, and after that the states have received 14.8% average growth in the states. So Norway sectors are growing, revolution is happening, GST are reaching, so states are receiving, and misconception that is not being utilized by us for the state's benefits, not right. So I come to the last point on waivers and write-offs. Members saying had raised confusion about write-offs are not waivers. Waivers are different write-offs, different been explained several times. But again, it is good to support to say, oh, written off means all waived off. They are not waived off. The bank's balance sheet gets cleaned up, but the bank's duty remains. And I can say that in the parliament I've answered questions about how much of money assets have been back to the bank. How much of native bodies have been confiscated by the and given to the banks. So banks are getting paid. So write off means that the bank's balance sheets are cleared, but the bank assumes and all the securities which are lying with them are being legally auctioned, and the money is being given back to the banks. So this last two points that I know it's quite. I quoted you and the committee was incomplete. Fitment committee states represented in the fitment committee. Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Haryana, UP, Bihar, Bengal, Tamil Nadu, and Karnataka. So all of them were in the committee. From there, GOM, in which I read the states which were after the GOM, which is headed by the Chief Minister of Karnataka. After that, the GST Council. Nowhere was the difference of opinion. The last
imposed taxation, and because of that there's a lot of no. Even those items